ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं इसके लिए हमें ना एक ट्राइपॉड और चाहिए होगा इसके लिए। हाँ जी, जूम है। अच्छा, जूम इन हूँ मैं भी, फिर ये ना तो हाँ पीछे ले जाते हैं। ठीक है, गुड इनफ और नो? ठीक है तो I think should be okay now. Ricky. अभी भी पीछे नहीं, वो फुल जूम आउट है, नहीं ये रहेगा ये जी। सॉरी, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। मैं तो कुछ ठीक कर देता हूँ। ठीक है जी, लेट्स गो। इसको पावर दे दें। विंडोज की है, इट्स जस्ट अ लैपटॉप टैबलेट। इसका यार का क्या पासवर्ड इधर? इसका पासवर्ड है लिमिटलेस 786 इंटरनेट का। यही वाला ठीक है। So let's go. We've counted it. But if people try to put trades when he's like, we tell them not to because. ठीक है, it's reason. बस सही। आखिरी इसको पावर देने। Good, we're good to go. आप लाइव दबा दें इसमें। ओके, ठीक ठाक जी आप चलें, लेट्स स्टार्ट। भाई think we should be on YouTube, Instagram, Super Areas, YouTube.
चलें बिस्मिल्लाह. Okay. Password. Okay. Yeah, this goes lesser. This is keeps gonna. This be okay. Okay, I think we're gonna start. Sorry for waiting. We have 3 places: Mississauga, Woodbridge, Malton, my home, and right now we have 2 set of streaming platforms. So to move everything, so eventually, if anybody is planning to come next Saturday, this 15 minutes won't get wasted. So sorry about that. So welcome to Limitless Wealth Enterprise, and we'll start with the saying that they say sky's the limit for ambition. It's something we don't say, but this is a good quotation we use, that we say the sky is only the beginning. So what that means is there is too much money to be made in this industry. All you have to do is control your greed. So, and I will show you how. So before I begin everything, I would like to go over the disclaimers and disclosures. I know it's a fine print, like you've signed your life away, like any bank statements, anything is written at the bottom. It's too hard to read. It's like any other. Everything is available on superareas.com. So there is nothing that is here that you can't read here, but it's all available online. Just to point out, I'm going to take this chair out. It's causing a little bit of a problem. 1 second. इसको यार निकाल लें. No problem, no problem. Because I don't think I'm going to sit for some time. I'm going to make the audio a little bit better. Let's do this. Can you? Okay. यार टिकटॉक पे एक दफ़ा ऑडियो चेक कर लेना अभी, क्योंकि मैंने अभी वो नया वाला लगाया है. एंड इंस्टाग्राम, ताकि फिर 4 घंटे हैं ऐसे ना हो के. ऑडियो ठीक है टिकटॉक? हाँ जी. Audio test, TikTok, but it's good, right? That's good, okay. So whatever you read in the previous slide about our disclaimers and disclosures, what 3 points. First of all, that we are not financial people. Like right here, this company is not an investment firm.
We don't take your money and invest anywhere. We don't take your money and promise you any returns. We don't do any of that. And we're not financial advisors. We're not an investment firm. We don't tell you invest here, invest this, buy this, sell this, none of that. So the previous screen has 10 points, really fine print, but 3 really points. Whatever you win or whatever you lose, whatever you invest into stock market is up to you. We're absolutely not responsible for any of your returns. What we are at Limitless Wealth Enterprise, we are a software consulting firm, and we basically write software. So we have written software for financial industry that predicts the market of stocks and options and cryptos and futures. So we're not a finance company, we're a software company, just to get that clear out of the way. So if you think that we promote something that will show you how to make money in stock market, but we're not going to make it for you. You're going to invest your own money or funded account or whatever. It's a long presentation, just so clear it that you're not giving us any money for investment purposes. So that needs to be out of the way. How today's presentation, with the time we are evolving. We've been doing this since July. This is our 5th month. And each Saturday we're trying to improve our presentation. So now we have come up with a structure on how the presentation is going to go. It has 2 segments. So you'll have level 1. I will go with basic interest. I know some of you are going to sit here and they say, I know everything what you have done, because I've been coming here for 5 months, right? So we have now broken the presentation into 2 different time slots. 12 to 2, I'm going to go with basic, somebody who has never ever opened a computer even, and I'll show you how to trade. And level 2 is for those people who already are joined our program, and if they have some advanced concept questions, I'll answer them. You don't have to worry about missing anything. So this is being recorded on live stream. Your audio will get recorded, not the video, because the cameras are pointed my way. So none of you guys are going to appear on anything. So, but if you ask a question, and ask me anything. So everything is Q&A. So I'll go over the basics. Raise your hand. And I don't care how big the question is, how small the question is. Don't think that your question is something that if you're going to say out loud that, hey, am I going to think any less of you? Absolutely not, right? I'm here to answer every single type of questions I can possibly answer. So our emphasis is on audience engagement. So we want to make sure that, just speak your mind, whether you think it's a scam, whether you think, and a lot of people who are tuning in through Instagram or YouTube and TikTok, my team is sitting there, they'll answer the questions there. But best way is to reach out through WhatsApp or anything like that. So what is it that we sell? Why are you here? You're here to learn about how to make money. That's the goal. Everybody wants to. You saw my advertisement on TikTok or a radio ad or a print media, Instagram, and then something attracted you, and that was, hey, what is this guy selling? What is this guy saying? And one of my video of the last week when I was flying to UAE, I did a video 35,000 feet in the air. I bought the hotspot, and that video got 250,000 views in 2 days. So 250,000 people saw it, but 1,000 of us sent us a message, hey, how can you make $100,000 a month? It's it's a number that not so easy to grasp that, hey, how can somebody show us to make $100,000 a month, right? That's the best part. No prior experience is necessary. So for you, if you have never even opened a computer, we'll teach you our program. So you don't have to worry about coming in, hey, I don't know anything about stock market. I don't know what trading is, how to start. We have a team of 8 dedicated professionals. You get stuck, we'll help you, because how we make money is through your subscription, right? So we have to make sure you earn. Otherwise, eventually, few things will happen. You're going to leave the program. You're going to say, हाँ ठीक है जी, invest किया था थोड़ा बहुत, and you're going to एक गाली मुझे दोगे, एक software को, एक computer को, चले जाओगे, right? So
That's not what we want. We want your engagement with us lifetime, right? So we want to have you as our student for the rest of your life. So about me and about us. So this company was founded 14 years ago. The original company is called Win Lifetime. Actual head office is in Mississauga, Dixie Matheson area. But for the last 12 years or so, the company was only operating with radio ads and print media. And because this software is very expensive, just to tell you, because we're a software company, you should know the things we sell is very costly. So for the last 12 years or so, when we advertised, we only expected people who had money to invest into our software. So our software starts at $25,000. So it's a piece of software, AutoCAD, if anybody's in the industrial design, Adobe Premiere, Microsoft Office, these are all software. They all cost different money, right? Some are for retail, some are for businesses. So this company, Win Lifetime, when they started, so to start selling the software for market analysis, this software cost $25,000, right? It was going fine. We do still, as of today, we do a seminar in Vegas. We go there, we sell maybe 10 licenses to a corporation. They write a $250,000 check. Everything is fine. They use it as an extra tool. So our engagement with our business to business is perfectly fine. We are doing fine for the last 12 years or so. Okay, so where do I come in? So 12 years ago, I've been trading. So I wasn't part of Win Lifetime. I've been trading. I hear this ad on the radio. So Daniel is the mentor, the founder. I hear his ad. It says, if you want to learn to trade, come and see me, and so on and so forth. So I've been trading. I've been trading for the last, up and down, left and right. You lose some, you win some. But I didn't have any right sense of direction, right? So I heard the radio ad. I went there 2 years ago. I sat through the presentation that now I give. And over there, they gave me the price. Hey, you want to start? This is the price. I signed up. Because after the 3-hour presentation, I knew what I was getting. So I signed up. So I used it for about 6 months, this software, right? And I made money. And I'm like, this is really powerful. It's helping me make the right decision. But because I didn't need a lot of time to learn the software, because I have basic understanding of everything. What a stock is, option, future, crypto, limit, puts, calls, spread, everything I knew, I was just missing this software. So somebody had told me, I went in, listened to the presentation, right on the spot, I bought it. Then, a lot of people started asking me, Rafay, can you help us learn this software? So I went back to Daniel and I said, I want to buy your franchise. I want to be able to take your software and sell it to my friends and family. It all started in this year in March. We started with 5 students, just 5, at near Zenwave Boulevard. So we have look at our first video of March 6th. We are students of 5, and it started as a joke, completely as a joke that I was just teaching friends and family. At that time, so I talked to Daniel. I said, my people, my students, my friend are not gonna be able to come up with this number, right? So he's like, hey, it is what it is. You take it or you leave it. There's no other way around it. No problem. So last year or so, the trading platform that we used, it changed, right? It changed to a new version. So now we are able to offer subscription. So I'll go into that detail later. So that's the history between my company. So this company has been around for long. We're not a fly-by overnight that, hey, we're just going to disappear tomorrow. So you can read up on it. So you can visit us, no problem. Right now we are operating with 3 locations, Malton, Woodbridge, and Mississauga. Only restriction you have, if you join us, if you don't come up with this kind of money, starting at $5,000. By the way, this is the max. There is a starting price of $5,000 Canadian. It's called the entry price. If you don't pay us this right away, you're not allowed to go there. Simple as that. You either go to Malton office, or you come to Woodbridge, or you study online.
So we have a very strict environment over there because the people, the students who are trying to approach us, they have bigger accounts. They have $30,000 account, $50,000 account. So, and they're paying us $1,000 a month just to sit there, right? So the only issue is that if you want to go to the Mississauga office, price is different, right? So that's the only thing I have to explain very at the beginning, that because I'm there, I'm teaching those students, everything is the same, material is the same, only thing is you get to see me in person or you get to see me through a camera. That is it. That's the only difference between the software and my engagement with you, right? So, 5,000. sorry, 5,000 plus HST. So Yeah. Oh, sorry. Doing the live trades as well? No, we will see. You can do live trades in front of us, but we can kind of give you a market analysis, but we're not trading for you. We're not giving you an entry-exit signal. So for example, by the time how the trade is coming, because we're seeing it live with you, right? So but you can see this worldwide. I now have over 150 students paying subscriptions in the last 3 or 4 months, connected from where? New Zealand, Australia, Alberta, Calgary, UAE, UK, Germany, France, Paris, Italy, because it's, so once we change the model into subscription model, we have a lot of interest into this. So only thing is, when you send me a message, hey, can I come and sit in your live class? You're welcome to come here to this location, or you're welcome to come to our Malton location, but you're not allowed to come to your, you are allowed, just the price is different. So just want to clear that out of the way, is you don't get any else different. Only thing is, from 9:30 to 2, you have a seat that you're paying $1,000 a month to sit on, and you just have a, if you are sitting, let's say in UAE, and you want to engage with me, you have a live stream. So there's no difference. I will still answer your questions and everything over a live stream. So that's what's about me and about the company. So what do we do at Win Lifetime or Limitless, or in UAE we have a franchise that's opening up. We have a couple in UK. They all operate different names, but the umbrella it all falls into is Win Lifetime, right? So we teach you how to trade and analyze the stock market. So anybody has zero experience? Zero? No problem. Zero, no problem. I'll go even starting at the beginning, level 1. What is trading? First of all, you have to understand what is trading. Trading is a transaction where you're buying and selling, right? So for example, it's a mouse. You buy a mouse as a business, and let's say you pay $10, right? And you can sell it to somebody $11. You bought it for 10, you sold it for, I'm gonna go even more basic if you like to go. So that's a transaction. You're a buyer, you have a product, somebody wants to buy it, you're a seller, somebody's a buyer, so it's in this day and age, you do this with different things. You do this with gold, you do this with stocks, you do this with options, futures. So you're not physically buying anything, you're just buying a value, or you're selling a value. So if you have some money, let's say you have $20,000 in your account, you go to a financial advisor and you say, you know what, I am interested in investing my money into stock market. You know what they will say? They'll give you, first of all, they make it very complicated. Oh my God, it's charts and bars and candles and dividends and diversions, and and an average user says, hey, this is not for me. Here's my money, just invest it. They just make it sound complicated. It's not. It's very easy for you to understand, and we have a challenge at our company. You can breathe, we can show you how to trade. That's all the requirement is. You just have to be alive, right? Doesn't matter the age, race, gender, doesn't matter. The IQ, I don't care. In 90 days, we'll teach you everything. In terms of, you just have to be willing to pay some attention, and you have to be willing to understand what we're trying to say, and focus and goal. And we'll give you a program, a full program to make $100,000 a month. And I'll explain you by the time I'm done my presentation, and I'll show you and I'll prove you with my stats,
with my funded accounts, how easy it is. You just have to step back, take it easy, and don't worry about it. Like we will, so it's not like we're gonna just leave you with this, hey, here's the software, go out there. No. You can come here every single day. We're open 6 to 7 days a week. 6 days at least. You can talk to us. There's a team of dedicated 8 people. Anyway, so long story short, you have $20,000, you go to financial, he says, okay, let's put your money into stock market. So you take that 20,000, you're like, he could say or she could say, what do you want to buy? You can say, hey, I know about Apple, I know about Tesla, I know about Amazon. Let's invest into those stocks. So one stock, for example, by the way, this is not an actual price. So one stock of Apple could be $200. And you can say, okay, I want to buy 20 of them. Let's say I want to buy 20 stocks. So $4,000 is what you need to start your investment, right? Today you can buy 20 for $200 in 3 months, for whatever happens to that, it's your stock. You own that company. If it goes up, you make money. If it goes down, you lose money. Simple math. So that's what the stock trading is. You are buying publicly the companies who are traded on an exchange, and then you are investing into it. What we want to do as our company is we want to bring stock trading, options trading, futures trading to every household. We're going to make it so accessible, so easy, that you can easily make a couple of $100 a day at the beginning, and then up to $100,000 a month, even more. That's just the, again, sky is just the beginning for us. So we teach you how to analyze stock market and invest your money and make good income every day. And regardless is minus 40 degrees here or plus 42 degrees in UAE. Sit home, relax. 90 minutes a day is all you need. And we give you the time zone. That is all. But only thing we ask you is discipline. Like really, discipline is the 99.9% this business is discipline. Only 0.01% is trading, to be honest. It's emotions that will kill you, greed will kill you. You have made instantly. So let's say if you're even a doctor, we're going to start a podcast with a real doctor, dentist, and he joined our program and he has quit his practice. And he's like, if I'm making $800 a day Canadian, and he's been, by the way, doing this for 10 years. He's like, I no longer want to do it. I don't want to enjoy it. Now he does this full time with us. He comes to the office, he sits, and you can hear it sometime through the live stream, his experiences. So to make $800, he has to work 8 hours, $100 an hour, an average. That's a dentist who studies his whole life to become a dentist. And it's a luxury life. But he says, I can make $800 in 90 minutes or less, just by understanding how the software is moving, how the market is. So if you can teach yourself and educate yourself, by the time end of this presentation, if you get nothing out of this, I just don't want you to become in a position where anybody can fool you. You don't have to join this program. You don't have to join any program. All of this is free on YouTube. You can study on your own. You don't have to join that. All I'm saying is, if somebody in your life says, hey, invest somewhere, you should not just blindly invest. You should know what they're talking about. When they says, hey, Bitcoin, buy it, right? Or get into trading. You should have some basic framework of, hey, nobody should make a fool of yourself, right? Simple as that. That's all we are aiming for. So one thing is, first question that comes to your mind is, why are you doing this? This is amazing. You have a great software. You're making it public. Everything is fine. You're making money. Why are you promoting it? Why are you not holding it a secret, right? It's such an amazing thing. Why are you telling us? And keep doing what you're doing. We have 4 company values. Number 1, of course, we've been in this business for 14 years. We are already making money, handsome amount of money every month we make by selling our software. We make a good amount of money using our software and trading ourselves.
So of course, these are the two. Now number 3, we believe that it's our moral responsibility to be able to help out those who are in a bit of a position where they can't change their financial life. So you can consider it charity, you can consider it whatever, but we have a moral responsibility to uplift those who are a little bit less fortunate and don't have the means. So we want to guide them. So before designing this program, we said there's a lot of scam out there. People are taking people's money and they're, not really, delivering what they're promising. So that's what we decided, hey, if we're going to teach people how to do stock trading, we're going to do it right. So we came up with this 90-day program and everything. So, and number 4, of course, you become our member. We make a lifetime residual money. So we make money as you give us a monthly subscription, right? So that is definitely part of the whole program. So where do we start? Where do we start? You start with our program with a 14-day trial. The program is completely free. You don't have to pay a single money. You don't have to pay a single dime. You will, actually I forgot point number 4 from previous segment. Point number 4 is, right now, let's say you know a trade. Let's say you know plumbing. I always give an example of plumbing. And you've earned that trade, you have earned that skill. Every single trade that you're in currently has a trade secret. Trade secret means if let's say somebody wants to buy these mice and he knows a really good supplier, right? His job to protect his business is to make sure nobody find out that supplier. If you're buying a shirt somewhere, I'm sure all of you guys are in a different businesses, right? Where you want to protect your business and not share the secret. Because when you share that secret, you create competition, right? Of course, even sometime within the same family, same siblings, one brother won't share or one sister won't share because they're ahead of the game, and if they let go of the secret, then it's a competition. Simple as that. It's opposite for trading. If a trader doesn't replicate himself or herself, they will die. Meaning, today, if I buy gold, right? Gold is trading as 1900, let's say 1900. If I don't announce it, how am I going to make money? If I don't say, hey, please buy gold, please buy gold, please buy gold. If all of you buy gold, gold price will go up. So my job as a trader is to replicate myself. So every time we take a trade, we announce it. Hey, I have taken a trade. You should look into this trade. Because when you buy it, you buy it, you buy it, all of you buy it, price goes up. And when we say, hey, it's overbought, let's sell it. So 1%, 2%, 3%, and when they sell it, price goes down, right? So this is a group effort. So that is the number 4 segment of trading, is we want to build a pool of 1 million people. Right now, if you go on our subscriber, on TikTok, we have about 16,000. On our Telegram, we have about 1,700 or so signed in. So what happens is there's a time when the market is overbought or oversold. We'll come to that technical. All we have to do is just write it. Hey guys, this is a good time to sell. Imagine we have 1 million people in that group, right? Not everybody has to buy it. Not everybody is trading gold or S&P or Nasdaq. All they have to do is like, hey, one guy has done the analysis. He thinks it's overbought. And if everybody places an order right there, the whole market comes down crashing. If everybody places an order at an oversold, market gets lifted up, right? So we want to work as a team of 1 million subscribers worldwide. So again, we keep continuing selling our $5,000 to $25,000 software. We'll keep uplifting people who are a little bit unfortunate, want to get into this business. And the reason why we promote it, easiest business to make the fastest way. This business statistically outperforms drug dealers. So drug dealers, people make a ton of money. This business outperforms that because the amount of money they have to do, we have to do less. So statistically speaking, and
there's a bit of a dark side. I like to be very transparent and clear about it. What I like to be clear about it is if 100 people will join this, 99 will fail. Clear and blunt. I have students who have joined me in March. They've lost $10,000, $12,000 and they've gone away. Why? Only thing will kill them is greed. It will not. If I interview all my students from the last 14 years or so of this company, I sit down one by one and I ask them, hey, did my software fail? Or is it you that lost the discipline? Is it you that lost the greed? Is it you that lost it? So they're going to say, yes, I overtraded. I had my target bet for the day, then when it went back in, and then I traded again. So you have to understand, anybody who's new will join, will go through all these phases. First trade you're going to put in, you're going to make $300 in 5 minutes. 5 minutes, 4 minutes, 30 seconds, 20 seconds, 1 second. You buy the time. The doctor the other day, he made $4,000 in less than 10 minutes when the market crashed and earnings came. So when you have made your first $200, because all of us, you know what happens? We are trained in our mind to work by an hour, right? Let's say somebody drives an Uber, he takes home $400 at the end of the day. For example, in Canada, that's what an average Uber driver can easily take. So you take $400 divided by 8, you have an hourly rate. Whether you're a doctor, engineer, neurosurgeon, everybody has an hourly rate in there, or a yearly or monthly. This business doesn't. So what happens is, the first trade you put in, Kasam Bhai can say, you make $800, you're up, what, 936? You're up 800, typical. What do you do? Oh my God, like, it's done. Like, what's next? You go back in. And, you know, end of the day, when sometime yesterday, for day before, today is Saturday, Thursday, I made $35,000. 35. And I was done by 11:30 or so, and he was sitting in my other class. All it takes is one mistake, and then go back and click without analysis. You can keep trading, because there is a fine line between trading and gambling. Very fine line. And trading and casino. So first of all of you guys should know, this is highly manipulated business. Meaning big governments, big banks, big institutions control this. As a retail investor, doesn't matter how much money I have, I cannot beat the system. So today's system is run by US government. If they want the market to go up, they want market to go up. If they want market to crash, they want market. None of us can make a difference. It's all done by heavy duty, big players, right? So what the plan we came up with? Let's buy and work with those big players. So if they go in whatever direction they go in, we go in. Rather than making our own decision, so we came up with this system called smart money. Smart money is wherever the big players are playing, right? So what I said was, so this is all deliberate, first of all. And number two, it is all so highly controversial in a sense that some religious communities says this is not even legitimate. You know why? Because it's gambling in a sense is all day long. This casino, I call it a casino, I'm a trader. I belong to a community that calls it definitely a casino. Why? It's open 23 hours a day. There's a highest level of addiction involved. There's a lot of, actually it's gonna more come towards this. The TV is gonna, this is just one slide, so they should see, they should see the board first. उसको सीधा कर लें पहले. Other people commenting What? for the cameras, that's why we moved it, because everyone wants to see the monitors. No, but monitor is just going to be one slide, right? So it's okay. Just stick to the, there's nothing on the monitor. Anyway, just tell them to watch the screen. Anyway, what I was saying is, if you don't treat this market with the respect and you don't have discipline, you don't have emotions, stay away from it. You're going to lose. 99 people lose in this. So you have to come in with very clear vision that I'm going to stay disciplined, right? And it's only discipline that's keeping you alive, by the way. Like, you know, you get up,
You go to you go to work, feed your kids or whatever responsibilities. Life works around discipline. Same thing here. Yes, please. So just to add on with what you are saying, I agree, it's truly based on emotions. Oh, yes. I lost $10,000 in crypto 100. while trading Yes. last month. Yeah, no. And I was completely broken. Yes. I thought that I should now keep away myself from this. I trading. understand. But I again made my mind to learn it again properly. Okay, and I'll tell you, All okay, there's two differences in losing, right? There's a lost where you lost because you didn't know, meaning you lost because you didn't know which way the market is going, right? You lost because of lack of knowledge, right? That's one way of losing. My students, if they lose by over trading. That's the one thing. They lose by greed. We have in our enterprise, we have different loss. So what will happen is our students will trade only when my system is telling them to trade, right? So losing is okay. And one thing everybody should know, there's no loss in this market, by the way. What happens is, first of all, I have to tell you how much money is moving. So just to kind of give you a rough idea, is $23 trillion. $23 trillion is the figure. First you have a million, then you have a billion, then you have a trillion. Yes? Sir, I have one question. In crypto, there's a lot of manipulation by exchanges. Same here. Because, they know how much people doing long Yes, and yes. short. They go against and they make 100%. that. It's same. 100% same. Or less manipulation in that. Or 100% same manipulation. Exchanges know it, big boys know it, they know the depth of market, they know who is sitting where, they know how many money you have, they know everything. We have no chance. But we're going to teach you how to become that 1%. Some people say there's a lot of manipulation in crypto, but the forex is less manipulation. Same, 100% same. I admit it, this business is highly manipulated in one way. You know what? People say Bitcoin is very volatile. Then I come to forex, the gold is more manipulated. Yeah, so it all depends on who is buying bigger lots. You know how it's manipulated? I'll tell you. In some parts of the world, 100,000 people trade together. And if they just buy together, market goes up. So they're market movers. So in a case, it is manipulated, right? So, but we're going to show you how to make $100,000 a month and become that 1% if you can only control your greed. You will get to 100,000, I promise. I am leading some students by discipline every single day. And now they're starting to see the results. Payouts are starting to come out. So first of all, what I was saying is 23 trillion. So nobody is a loser in this business, by the way. If you lost it, that money went to somebody's pocket. So it is just moving pockets. So all 30 of you, if you all came up with $100, that's $3,000. You log me into the TikTok because I have to reply to people. No, you can't. You have to do it as your own account and answer from question. It's one account allowed. Yeah, you have to comment from an outsider. So where we teach you is, sorry, I lost my train of thought, is just money is just moving pockets. So if everybody, all 30 of you came up with $100, you will have $3,000 on this table, right? And when we all trade, end of the day at 5 p.m., somebody will have $50 less, somebody will have 50. So it's this money that's moving pockets. There's no money, you don't create anything. I don't create anything. Like nobody, no investor, no trader creates anything. You know, Apple creates something. They create iPhone 15. We're just trading their stock. Google made something. Microsoft made something. None of us investors make anything. We're just speculating. So the word speculation comes in the market, and I'll show you it's same as any other markets. Doesn't have to be stock trading. Speculation means you're betting. See how the terminology is related to some communities where they say it's wrong? Betting, speculation. You know, instant, like open market 23 hours. So the words they use is very similar to gambling, right? So that's why you have to be very careful of when you get into this market, be careful on when to exit and when to say, hey, this is enough for me for today and let's just call it a day. And so 23 trillion.
if you have $1 billion, just say Elon Musk has 40, he bought Twitter for 40 billion. If you have $1 billion and if you spend $1,000 a day, it will take you 2,740 years to finish that money. That's how what the wealth is. So we are nothing in terms of, if you have made $400 a day and you feel like a champion or Warren Buffett, hey, just like lower your ego down. My $35,000 2 days ago is like, you know, if you go to Niagara Falls and you're driving and you see the mist and one drop is my $35,000. That's how much wealth there is to be transferred. All we want to do, become the 1%, follow the system, and then you're going to continuously grow and grow and grow and get better at it. So that's the amount of money. Our target after 90 days should be at least 100 a day. Minimum. That is the minimum. We expect a person who has never traded before, any of these markets, doesn't know anything about anything, should be making $100 a day. If you're not, we have a problem. Meaning that then I'm going to sit down with you and say, hey, can you show me your performance? What have you done? How have you not been able to make $100 a day minimum, right? So then we take you to the next step. There are, again, this presentation is 4 hours long. I'll explain you what a funded trading is. How in 2023, you don't have to invest your money. That's how powerful this system has become. Back in the day, yes, you would take out in your savings, line of credit, take out a mortgage or saving, whatever, and then invest into stock market. Nothing like that. There are people and companies out there that will pay you to trade. It's like a job. Let's say if you're good at something, they'll hire you and then they'll trade you. They'll pay you to trade 100%. So you can sit there with a single dime of zero and trade for people and make 100,000 a month. No problem, no problem, with zero investment. That's the best part about it. So now from the basic, anybody has any questions? Gigi. So like if we start any business, we need a lot of money. But in trading and forex, the funded account, you can buy 100K, 200K, 300K. Yes, I'll come back to the funded account, 100,000 plan a little bit, because some people don't know. They give money without any interest. You just need a scale. Yes. Like there's a lot of opportunity. 100%. But then if you open any other business, you will need money Yes, first. this is the cheapest way to get into a business, the cheapest way, and start making money. Let's say you have a business plan, you want to open a restaurant. You know, a restaurant in Canada at least requires $60,000, $70,000 at worst. That's like a cheapest restaurant. And then you start going into a couple $100,000 a month in terms of rent and investment, then 14, 15,000. I have opened at least 16 businesses. I've been here since 1996, by the way. My niche is software development. You can Google me. I represented Canada in 2001. I won a gold medal for Skills Canada. I won a silver medal for computer programming for Skills USA. I was very lucky when I migrated here that I knew this is a field I want to get into. And so what happens, this system, the schooling system polished me, right? And they were able to reward me for my skill. And a lot of guys out there are within the same field. Canada has blessed them a lot, right? So what I'm trying to say is I have done at least 16, 18 businesses, imported rice from back home, imported clothing from back home. My last failed venture was I opened $1 million sportsplex, fat sportsplex in front of York University, cost us $1 million. Glenn McGraw came for opening. His endorsement was $34,000. You know, the carpets, the machines. I opened February 2019, and then the COVID hit. My company was too new to be able to get the rent subsidy, too new to be able to get anything, and we lost it. What I'm trying to say is, it's not a bad business. We have a Placius, 2 branches. Yes, we are doing fine. Then I tried clothing business. Then I try, because as a software, you make money, you want to invest into something. So, and I still do trading and make money, but sometimes you have ideas, sometimes you have relatives who want to get into, they have their dreams, but you have the money.
and then you trust it, and then you're like, so one thing I've learned, only do something you know. So I've kind of given up on trying to fulfill other people's dreams. So I'm like, okay, you want to get into making money? I'll show you how to do trading, right? So I got into this a little bit more aggressively in the last 6 months because they see, hey, you have the money. Can you help me open a meat shop? I'm like, who's going to work there? Not me. But he loses an interest because he's like, man, this is too much hard work. I lose the money and then I'm holding the bag, right? So for the last 15 or 16 partners, nothing against them, I came out in the losing side because I had the money and they had so-called the experience, right? So I'm not going to get into that debate, but what I'm trying to say is when you start a business, any business in Canada costs money. This business you can start with as low as $300. And you can do it for free for the first 14 days. I want you to be able to download the software for free, take our program for free. You don't like it, quit it. It's okay. You will just lose 14 days. I have some members sitting here. When we opened this office, first they came, they bought, like Asim is sitting, he took the $5,000 US plan, right? So what I'm trying to say is we have different packages, and it's up to you to change if you want to learn this skill. As long as you are disciplined, we will give you every possible support to help your goal. Right? For example, if we say only drive at 60 kilometers an hour, right? Don't drive at 50, don't drive at 61, just drive at 60, right? So we will give you everything in the morning. I scream my lungs out. You should see me in the morning. We have one person, yesterday was Friday, 9:29, he made $200, 9:31, he made another $200. You know what I went to his laptop? Like, Khuda ke liye band kar do, right? So $400. So I was coming back to that point. All of us know per hour, per day. In this business, there's no such thing. This casino is open 23 hours. You will get instant shaitan instinct. Hey, let's go back in. Let's make another $100. Let's make another $200. And you will give it back, right? That's the problem. Didi. So, sir, is it a casino? It's 100%. But there's a difference though. In a casino and in gambling, you have everything is random. If you've gone to Casino Niagara, you see roulette, right? You take a ball, you throw it, it will land randomly. Poker cards will come random. Everything will, this is manipulated, but it has a structure. You can predict the direction. You can do an analysis. If this happened, this condition met, this condition met, this condition met, this should be the result. So this is not a casino. It's operated like a casino, but this is math. This is one. That's where my skills came in, and I'm like, I know I'm good at software. Let's write some software to analyze math. What a software is, right? So if you're seeing this screen, somebody wrote the software to present this image on the screen, right? So same idea. So it is operated like a casino. The terms are like a gambling, but it's 100% not a casino if you follow the math. So if you, for example, I'll show you something all day. If you bet in this direction and the price goes in that direction, you make money. If you bet in this direction, you make money. And the beauty of this market, the 100% beauty, doesn't matter the market goes up, you make money. Market goes down, you make money. 1 minute ago, you could be saying, hey, gold price is going up. If it goes up, you make money. Next 30 seconds, the gold price could be shooting down and you make money. So that's the beauty of this. All you have to do is predict the future. That's why the word is called futures. It's speculation. Speculation word comes from gambling. You're speculating. You're betting. Betting price to go up. So the main difference between two big markets in the world, there is stocks, there's futures. Stocks is something you own. I own a stock of Apple. I own a stock of options and stocks, I'll put that in one category. Futures market is only predicting the future. If you predict the future, they'll give you from $1.25 to $10,000 or more per bet.
there's a symbol called MES. There's even a cheaper one, but MES it stands for micro S&P. If you bet in the right direction, they'll give you $1.25. If you say price should go up and it does go up, you'll make money. If the price goes down, so this is like having a video game. You have so much life in your account. You have $1,000 in futures market. So that's the main difference, just to clear it for beginners. Stock is something you own, right? Future is something you just predict. Simple as that. There is a lot of technicalities in it, but I won't go into it. But for example, if you own a stock of Apple and you bought it at 200, even if it goes down to $1 and you have lost 199, you still own the stock. Future, no. If you start predicting in the wrong direction, you can only go down as much as your account balance. If your account balance is $1 million, no problem, keep letting it. But we don't encourage anything. We will tell you how to predict, and if the prediction goes wrong, how to cut it quickly, in and out. So we'll teach you all of that. So basically that's how our program is. The way it starts is you have a 14-day trial. We give you, so our program has been running for 12 years. So 12 years will compress it for you in 12 hours. So in 14 days, we expect you to watch our 12-hour videos. Some you can skip if you have a lot of knowledge like I did. Some you should listen. How market works, how the news works, and we have a very organized framework. Meaning, in a sense, we start with a market called S&P 500. So this is the number you will hear a lot from me. S&P 500. S&P is doing this, S&P is doing that, market is doing this. We don't talk about gold, we don't talk about crypto, we don't talk about Nasdaq. Sometimes you'll hear me say Nasdaq. Everything else we don't talk. You know why? Because we want to teach you every single inch of this business, and there's no better market to teach you than S&P 500. It covers news, it covers volatility, it covers employment data, it comes everything to do with finance, it covers. So it's a very structured market. For those who don't know what S&P stands for, it stands for, it's called Standard and Poor's 500. So that's the US index. So to again break down what the word index is, let's say you have $20,000 and you go to the bank and you say, you know what, I'm interested in stock trading, I want to buy Apple. They're like, okay, give us, Apple is $200. You say, what about, she or he advisor could say, hey, you should invest into Microsoft or Google or Apple. You're like, hey, I only have 20 grand. I can't split my amount into one share or two shares. So US system, the financial system came up with a word called index. They took top 500 companies and they made an index. And they came up with one price. For example, price of that, I think, is trading around 4,500. The futures value is a little bit different. So instead of you buying 100 companies or 20 companies, they will put your money into an index fund, right? So you buy. So now you will own 5 stocks of one index. So if Apple goes up, index goes up. Apple goes down. So 500 companies are working together like a scale. Didi. Sir, if we buy like SP 500, so we are like we have necessity to buy all 500. No, you don't have to. One index will cover everything. So, but you don't control anything. You just control one index fund. So, like in Nasdaq, there's 100 companies, right? correct? SP 500, there's 500. Yes. So if I buy SP 500, yes. So I am stakeholder of all. No. You only own one particular index value. Nobody is issuing you any shares of a micro, because 5,000 divided by 500, they're not going to issue a little certificate of individual. They'll just give you an index fund, like allotment. Now again, S&P has cash and S&P has future. We deal with futures. Why futures? That's my next slide. Like, coming back, is why futures cheapest way to get into stock trading with a lot of money.
You can get into futures market by as low as $15 with a funded account. $15. If you have to do a cash, you asked me 10 years ago, I would say, hey, you at least should take $5,000, $10,000 and get into stock trading business and think this is your starting price. I say if you spend about $1,000 these days, 3 months of our subscription is $339 times 3. You start with a funded account, you can start making $100 a day. So that's so-called the investment question. How much money do I need? You don't need any money. You just need to know how to trade. You literally don't need any money. You don't need to have a broker account these days. We'll still can teach you, because I have, again, investors who want to now not trade on other people's money. So we will cater to everybody. You are a position trader, area trader, day trader, long-term, 6 months, 1 year, our software works beautiful. Number 2, our software works for every single market. Whether you like gold, S&P, Nasdaq, Russell, Dow Jones, crypto, forex, Indian market, FDAX, German market, I don't care. As long as our software can see the data, I'll predict it for you. So that's the beauty of the system. Some people say, hey, I only do stocks. They're a bit arrogant about it. I'm not married to one single stock. I'm married to dollar signs. I see, hey, if gold is going to give me money today, I go into gold. If S&P is going to give me money, go inside and look at my monitor. My first TikTok video, it was shot completely out of randomness. He just walked in, he's just shot the video. It has almost 500,000 views. It shows you my desk space. I have 6 monitors looking at 7 or more markets any given time. You don't have to do it that advanced. Again, my level and my skill is 12 years. But you can get there faster. We have the tool. You don't need anything. All you need in terms of hardware is a Windows computer with 16 GB RAM. That is it, nothing else. You don't need, even at the beginning, don't even need a monitor. We used to write in our WhatsApp, hey, get a monitor. Why you see a monitor here? It's to display the graph a little bit easier. That's it. You don't need it in that sense. So now from here, if you have any basic questions, I can answer. No, Gigi, sir. Officer, you said earlier that after 3 months expect to make $100. Is that $100 on the basis of risk factor, investment, or on the basis of experience? And then you can just proceed further. See, first you have to learn to make in the first month. Don't focus on money, at least for the first month. First month, your focus should be that whatever software is telling you to do, right? You think about it this way. I know it may be a bit funny for ladies. At Daniel's office we have a joke कि इतनी जल्दी ना करें. कुछ लोगों को इतनी जल्दी होती है, वो हम कहते हैं पता नहीं पैदा हो किस तरह हो गए कि 9 महीने वेट करना था. वो जल्दी इतनी थी कि तो जल्दी नहीं करनी. So जल्दी mean के first month don't look at the price. Don't look at I'm making $100, $200. Understand trade analysis. Understand. So that we have a 90-day program, right? So what we expect after day 90, that you should be able to comfortably look at the software and look at, hey, trade is coming or not. Can I take a divergent trade now or no? So every single trade that you will take, again, it may get a little bit more advanced, but we'll come back to you. I break it into 4 coordinates. Every single trade, you should know your entry price. You should know your average price. This is level 2, by the way. Never, a new student should never do level. You should know how much profit you're gonna make, and you should know how much loss you're gonna take. Every trade, whether it's a trend trade, diversion trade, gap trade, candle trade, I don't care. We teach you all of. But every trade, make an analysis. So what you're coming back to your question was, am I gonna be able to money? You know what the problem would be between you and I? Begging you to stop. That would be the conversation. You will send me a screenshot. I've made my first day $800, and you know the conversation I'll say, please go slow and stop. If you're really hot mein kharish ho rahi hai,
there's an option called sim. Switch into simulation mode, meaning that you still can trade, but it's paper money, right? It's not your money, right? So there is, because what happens is when you're done $400 by 9:35, you just sit there. You're like, oh my God, I've never seen money that fast in my account. How can this happen? This is not true. How did this happen? And you now start thinking, I'm Elon Musk, right? And then you put in a trade. So I come up with two analogies in this business. Treat this market, this business with utmost respect, right? This is like playing with fire. You know, fire gives you benefit, gives you warmth, keeps you warm. It can burn your house down. My second cousin lost his wife over this. 23 hours, divorce, up 5,000, can't stop trading. If you are that kind of person, for example, some people can't stop drinking. Simple as that, right? Some people can't stop going to a casino. If you find yourself that impulsive, I would urge not to join this. Please. This requires, again, 99% discipline, 1% trading. I should call this course a psychology course or a human behavior course. This is not a trading course. Trading is easy. Trading is, my software is going to tell you this is the best price to enter. You're going to enter, you're going to make $100. ठीक है राना जी? ट्रेंड ट्रेड में $200 ऐसे बनता है, ट्रेल के साथ फौरन बनता है, फिर क्या होता है 9:35 पे अगले मिड बैंड का वेट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, आप पहले दिन आई थी, आपने कहा था 100 बहुत है, 100 हो जाए हमारी जिंदगी के मसले हल हो जाएंगे. हमारे यही ऐसा टारगेट हम पूछते हैं. वो कहते हैं बस यार किसी तरह 100 बनवा दो, क्योंकि 100 जी जी I'm the one who came कि 100 बनना चाहिए था, लेकिन maximum Yeah. is enough, and now like I'm making 200 more than 200 a day alhamdulillah, but I'm still thinking. यस क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 100 बनाना बहुत आसान हो जाता है. साइकोलॉजी पे काम करना है, ह्यूमन बिहेवियर पे काम करना है. ट्रेडिंग खुद टेक केयर कर लेगी अपनी, ट्रेडिंग का मसला नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर हियर. जी जी बिल्कुल. Sir, जैसे right now I am working somewhere else, like I drive bus. Yes. So मेरे पास slot होता है 9:30 to 2 o'clock. टू ओपन स्लॉट ये slot, ये मेरी split break होती है बीच में. सर 9:30 से 11 o'clock गोल्डन टाइम है. तो सर मतलब ऐसे पॉसिबल है कि जैसे मतलब मैं कई बार मोबाइल पे भी देख सकता हूँ? अगर सर हर चीज पॉसिबल, हर सारा हो सकता है. थोड़ा सा आपको एक छोटी सी टैबलेट चाहिए, क्योंकि साथ चाहिए होगी. हॉटस्पॉट कर लें, बहुत पॉसिबल. ये गोल्डन टाइम है. यहाँ न्यूयॉर्क की मार्केट इतनी तेज चलती है कि स्प्लिट सेकंड में काम हो जाता है, स्प्लिट सेकंड में. ऑन फ्राइडे मॉर्निंग आई मेड $20,000. हम एक वर्ड कहते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, फ्राइडे को 11 बजे के बाद ट्रेड करना गुनाह है. मीनिंग कि मार्केट चलती रहती है, मार्केट 23 घंटे कैसीनो खुला है. अगेन यू विल हियर से मी दिस वर्ड, बट आई एम वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट अबाउट इट. आई डोंट शुगर कोट इट एंड से ए नो ऐसा नहीं है. भाई जो रियलिटी है वो भी तो बता दो ना. आप अगर डन हो गए हो बाय 11 o'clock, डोंट गेट इन, especially on Fridays, because you go to Wall Street. If you really want to invest into this thing, take a trip to New York, go to Wall Street and see the people who are managing this $23 trillion, right? So you will see that what their behavior is. 11-12 बजे फ्राइडे को कोट शर्ट ब्लैक पहने हुए हैं, सारे उधर एयरपोर्ट पे जाके कैसीनो जा रहे हैं. किधर? लास वेगस. एक कैसीनो से कमा लिए हैं, अब दूसरे में ज़ाया करने जा रहे हैं. ऐसा ही बिहेवियर है. पूरा हफ्ता उन्होंने कमाए हैं, अब उन्होंने खर्चने भी तो हैं. कोई कैसीनो जा रहा है, कोई किधर. सो दैट्स अ कल्चर and we don't want to get into it, right? That if you see big movies, Big Short, all of that, that's how the thing is. It's a ruthless building. ऐसा दिखाए. हमने उसमें 1% बनना है. Take your target, shut off your computer, go for a walk. Whether your target is 100, 200, 500, 1,000, whatever your target is. So the average scale level. Okay, average I'll explain you in the second part of the conversation. So all you have to do is just work on controlling your discipline. My software will say, hey, this is 99.9, it's overbought, sell from here, you sold it, you made $500. फिर क्या करना है? बंद करें कंप्यूटर, घर जाएं, या घर में ही है तो बाहर जाएं. तो like, because you can trade this business anywhere in the world. I have to apologize to my listeners.
if you're a resident of Pakistan, you cannot trade this market. You cannot use my software because India is okay because certain geopolitical issues, 12 or so countries are banned. So if you are a resident of Pakistan, I will not probably be answering your question. You need a foreign ID to do this. You have to understand that, number one, right? So anywhere in the world, just need a Windows computer, desktop or laptop, and you are able to make a consistent income. You can operate from Yes. Pakistan by the ID, or like, I mean, 100% you can you operate. cannot open your ID, like, You cannot open your account, even a funded account from a Pakistani ID. That's just the way it is, and I don't have any control of it, right? So इसमें और कोई question हो आपका हो, doesn't matter. So I'll go answer it कि इसमें investment कितनी चाहिए, क्या है, क्या option है, कितना, जी पूछो. ये जो funded account जो आपने बताया, हाँ जी, बैठे बैठे, it's okay, no problem. हाँ ठीक. Funded account, how it works is there are a lot of companies in the world that look at how your performance is. So think about funded account as getting a job. Simple. So if I have a computer store, you know how to fix computers, but before I hire you, I want to see if you can do something. So I'm going to give you a computer to fix, so-called an exam, right? But I want you to pay me for it. Because if you destroy this, I lose the money, right? So I'm going to give you for $15, I'll say, please, आपका नाम क्या, sorry? Sayyid? Ahmed? Sayyid? Amir. Okay. Okay, Amir Saab, can you fix this computer? But before you try to sit in my exam, please pay me $15. And if you pass an exam, I'll hire you. And our deal would be that I'll keep bringing you computers to fix. If you fix certain, so same thing in trading. If you can become a good trader, there are a lot of companies out there who will pay you to trade. Now there's an exam, there's a threshold. I'll explain that in part 2. But so the funded account works. But before you get to the funded account, first couple of months, learn the software. That hey, it is you have opened your eyes in this new universe. Your day 1 out of 90. You know, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको पहले तो नहीं पता ना कि उसको आपने पहले दिन ही तो नहीं केला खिला देना, right? So you have to make sure baby food, slowly grow it and then go from there. So we'll teach you everything. If you have a question, I don't have an answer, I'll find an answer for you. Hey, you need a broker assistant, you don't know how to open a chart, you don't know how this is working, that is working. So we're not going to leave you alone. Because you know where we make money directly from you is through your subscription, right? So if you are a member with us, because if you leave, okay, we've lost a client, but we don't want you to leave for the rest of your life. There are options where you can, like I explained. like in simple words, they give you money. Yes. And they take Some portion from your profit. Exactly. 10%. Like contractor, like a contractor, right? So that's how funded account works. और कोई question? Technical questions. हाँ जी पूछ, हाँ पूछ लें अभी क्या टाइम है 1:30 बजे, लेट्स से कि हाफ एन आवर इसको चलाते हैं और बेसिक आपका कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल बेसिक. आपने जो बोलना है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है कि खुद नहीं दिमाग नहीं आपने देखें हमारा सॉफ्टवेयर विल टेल यू एंट्रीज एंड एग्जिट सो देयर्स you just have to get good at understanding it and then eventually because all the decisions you're making we're not making for you. I'm sitting in a live stream explaining कि जी line overbought हो रही है इस line को देखें इस line को देखें but after a while you should understand what a trend trade is, what an overbought is, how funded accounts work, what a threshold is. So terms, again I wasn't born with this by the way. I got an interest in this. I started learning. The more you will teach yourself, invest into yourself and learn. Because again, casinos open 23 hours. You don't have to do it. You can do it on sim and just keep testing. Okay, every time this line comes, I'm supposed to do this. Every time. You are going to make your own decisions. So that's why coming back to the disclaimer is we're not taking your money for investment. We are basically teaching you how to make those decisions, how to assist. We're not responsible. If you made $500, I don't care. If you made $30,000, I don't care. If you lose 30, I still don't care. But that would mean that you're not following the system.
Again, 99% the software will do the job, and you just have to understand how the software works and then make the decision. So it will tell you if you were to do a bad trade, meaning you did a good trade and trade went against you. Because there's no trader in the world who has a 100% hit ratio. Of course, I lose a trade too. So we'll teach you how to do an average on a trade. How, at what point you say, you know, आज का इतना लॉस हो गया छोड़ दो. ये नहीं है कि आपने एवरी डे 500 इस तरह हम बैठे तो हम तो यहाँ पर SEC वाले मेरे डोर पे आ जाएं कि भाई ये क्या बता रहे हो. So what happens is, let's say you took a trade, right? And for example, it's called the trend trade, and this was the price. So we will show you that if the value goes to minus $150, close your trade. Don't let it sit there 150, 300, 500, 10,000 account khatam, because that will shatter your confidence. That will shatter your discipline. And then two things will happen, certain. One thing for sure. You will never touch this business again. And you go talk to 10 people, they'll say, trading is not for you. Trading is not for you. Not saying the word that you didn't follow the system. You're just going to say industry bad hai, Rafay ji bad hai, Daniel bad hai, crypto bad hai, forex bad hai, broker bad hai. Forgot everything that we told you to close the trade. Our basic was, when a stop loss hits at 150, close your trade, right? So you forgot about this, but everywhere you sat, you're like, nahi ji, trading aapke liye nahi hai, ye to aise. So we're going to change that mindset for you too, right? That if you follow consistently, just work with two things. Every day we're going to teach you, set your target. So when I say after 90 days, you should have $100 a day target. So 21 days of trading, you should make at least $2,100. So now coming back to the fee, how much does this cost? You're going to say, wow, this is great. It's amazing. What's the cost? What's the catch? How much are we going to invest with you to learn this system? So what is the profit ratios of the trade, the winning ratio? 100% if you follow the system. Meaning, winning ratio is that if you start with did he? Can you mention about the contact details? Yeah. So, Can I so if you can WhatsApp me at 647-228-0694, 647-228-0694. So I'll write it if they want to read on the screen. 647-228-0694. And the area country code is +1. So send me a WhatsApp message. This WhatsApp is read by 4 different individuals. You can't get a hold of me. Sam will reply. Sam is not there. Nikita will reply. Nikita is not there. Atta will reply. Yeah. So I'll write you. It's right here. So superareas.com. So Can you please highlight how many symbols we can trade? that I'll come back after 2. Like the type of trades. It's a basic- Yeah. So sorry, how many markets? Yeah, exactly. 268. Yeah, exactly. So 268, because some people you hang out with say, I trade gold, I trade forex. All of this so-called lingo you will learn maybe first week. What is a pip? What is a tick? What is a commission? What is a broker? What is a threshold? What is a funded account? What is a Ninja? What is Meta? What is interactive broker? What is a trade copier? What is, this and that? Trust me, that's the easy part. Difficult part is when you saw $200, you didn't close a trade. That's where you just have to work on that. So I have a student from UK. He has sent me a course on neurology, to be honest. It's a free course you can take online. Take that course as well. It teaches you how to control your emotions, Like whole day, he's seen me in the other office. I just sit. Again, I've practiced this for last 12 years. My hand doesn't go near my mouse, to be honest. सर प्रॉफिट बुक करना फिर भी इजी होता है. Loss को बुक करके बाहर आ जाना मेरे लिए इजी है, मगर लॉस बुक करना इतना डिफिकल्ट. मैं आपको बताऊं, उसका आसान काम क्या है. हमारा सॉफ्ट बंदा पर्सनल ले जाता है, राइवल गुस्से बना लेता उसको. Chapter 4.
our PDF, there's a chapter called revenge trading. When you have lost 500, like I was speaking to somebody on Friday, and he's like, I need help. I'm holding my losses way too long. Way too long. You know what I say? You broke my first rule of, it's called SL, stop loss. When I told you there's $150, you know, there's a student sitting right here, his name is Bilal right here. Before we started this, just sit there, I'm just giving you an example. He used to sit here in this corner. He came one day and he's like, Rafay bhai, I lost $187. You know what I said? You broke the rule, because my rule says that you should automatically get out. So one day somebody gives me a number, I can just look at it. It means you didn't put a stop loss, right? So what happens humanly is we teach you that before you enter your trade, think of a stop loss. Simple. कि अगर इधर गई price तो मुझे trade से निकाल दे, right? So this number in a trend trade is just not possible. If you are in we have 7 different type of trades. If you're in a trend trade, the trend is going up or trend is going down, and you tell me you lost more than 150, I will come back screaming at you that, hey, because what happens is you're watching this fall, minus 200, minus 300. You know, by minus 900, you were thinking, oh my God, I should have exited minus 150, right? Then you're thinking, okay, at the beginning, your account is $50,000 because it's SIM, right? It goes down to minus 8,000 and it comes back up. And you thought, oh my God, it's so easy. You don't have 50,000 in your live account. You jump in with $1,000. And after, you're like, oh my God, why did it draw? I was holding, but you forgot that it came back from minus $8,000, right? But in a real account, you only have minus 2,000 and you're like, how come I lost it all? So when you are seeing that thing in red, यार कैंसर हो जाए ना, बाजू कटवा लेना चाहिए, मरना नहीं चाहिए. लाइक यानी कि जिंदा तो रहो ना, आपका अकाउंट खाली हो गया तो क्या ट्रेड करोगे, फिर पैसे करोगे, इधर से बारो करोगे, उधर करोगे. तो 6 माह इस इंडस्ट्री में नहीं आओगे. एक गाली मुझे, एक डैनियल को, एक सॉफ्टवेयर को, एक इंडस्ट्री को, 4 गालियां पड़ती हैं एवरेज में. इसको हम ये कहते हैं कि ए भी खराब है, ए भी खराब है, बंदा भी खराब है, ट्रेडिंग भी खराब है. आई डोंट वांट दैट, यू नो. सो व्हाट वी वांट इज, यार, ट्रेड्स कैन गो रॉन्ग. आप बताइएगा, अगर 10 ट्रेड ट्रेंड लगे, 8 सही जाते हैं, कई दफ़ा पहले 3 खराब हो जाते हैं, स्पेशली न्यूज़ में, ठीक है, वॉलेटिलिटी है. अगर 8 सही लगे हैं, $1,000 कमा लिया, 800 तो आपके पास है ना, राइट? सो ये खाली टाइप ऑफ ट्रेड बता रहा हूँ. सो आई एम नॉट, दीज आर नॉट प्लांटेड पीपल हियर, बाय द वे. आई डिडंट प्लांट एनी ऑफ दीज हियर that hey, if I ask you a question, you're going to answer that, right? So because what I want you to do is this: take the 14-day program for free, test it out, like, you know, honestly, brutally. That really looks like you're doing some math, so just write. No, this is my phone. Write WhatsApp on top. Okay. +1 647 228 0694. WhatsApp. So we were going to teach you again. You have to work on one thing. If you, like, I have a client who does yoga just to calm his breathing down. So just calm your nerves down, right? 'Cause like it will make your job easier. Go with a clear mind, clear brain, be focused. You know your trade. I'm going to take a trend trade. I'm going to take a divergent trade. I'm going to do this. I'm going to do that. Just be ready. So easy, okay? No distractions, by the way. I'll give you a live example. He's probably listening right now. He is a position trader. What a position trader does is, first of all, I'll tell you what type of trading we do. So the trading that we do only requires 90 minutes of work to be able to be successful, or 90, or even maybe if you're doing a little bit excessively, 4 hours. So that's the maximum, by the way, anybody should be trading in a day. So he's a position trader, and at one point he was down minus $7,000 S&P, right? And he has a maybe 6 to 7 months old baby, and it's an open environment. Laptop is sitting, P&L is sitting, and he accidentally sat down his kid, and his kid took a hand,
trade closed. Done. That's it. $7,000 is just gone. Right? So you have to make sure you can't take this thing very easy. Like you know, I've been in a trade and I've looked at it, I've seen my position, I was negative, I could, you know, so you have to make sure that this requires your full attention. That again, playing with fire can burn you down, but can give you warmth too, right? So, and the second analogy is, this is like a doctor, you're a doctor, you're doing heart surgery, right? But there's two problems with this. Your heart is your own and you're alive. Simple as that. Like, so imagine if you go through a heart surgery. First of all, somebody else is operating on you. So you cannot like lose focus or attention. Take it easy. It's not something that requires that much, but at least understand what you're doing. I'm going to take a trade. I'm going to enter. So calm your breathing. Make sure you don't have a lot of distraction. Make sure. I had a guy, he was fighting with somebody, doing a trade, lost the trade. So again, you will lose your whole momentum. So just take it easy and be alone. At least try to be, like, you can still be connected with us. You can ask me live questions when you're in a trade. Hey, Rafay, I'm thinking of going overbought. You know what I will reply? Wait for this. Because I'm 25 seconds ahead of you, but you can see the live charts through the live streaming. You're sitting in UAE or UK or Ajman or anywhere, and you can say, what is the price I should enter at? You know what I'll say? Look at the trend line. This is the price. So that's the benefit of my program or our program, is you become part of us. You become part of the family. And I will check up on you. Sam will check them. Hey, you were part of our program. How was your trial? How was your 1 month? How was your 2 months? Are you making money? What is it that's causing you? Are you losing your confidence? Do you need extra assistance? We started a new coaching program, one-on-one. Now you can sit down with somebody because, okay, everybody's learning speed is different, right? Some people catch up quickly. Some people need to write down, right? Some people, so I'm not expecting, but that's our average. 90 days, $100 a month should be, because now I'll come back to the costing of how much it costs. So if you hear our ad on any South Asian radio ad, Win Lifetime, Daniel does the ad, our program, the most expensive program, is $25,000. That, we call it an elite thing. Next program, next software is $15,000. That's called the VIP. Next is $5,000. That's the basic, 5 to 7. So in that case, just have some restrictions. If you buy our software, there's no monthly fee, except you can come to Win Lifetime. You have to pay $1,000 a month after to sit in the class. If you want to sit online, you have to pay $300 a month. Right. So 5,000 gets you this, 15,000, 25,000. This is the Win Lifetime program. That's just the way it is. When I took over the franchise, I said, you know, Daniel, I'm going to write it differently because there's now NinjaTrader 8. By the way, the program we use is called NinjaTrader. So you should know a few things. You're a trader. You're going to be trading with us, starting to learn, just to learn, S&P 500 futures. You're going to use NinjaTrader as a program to learn. There's Meta, there's XNS, Bitcoins, Binance, there's OctaFX, lots. So you're a trader, you're going to trade using NinjaTrader with S&P 500 futures. The software or algorithm is called super areas, right? So if you can search up, so this is the software we call it, super areas. And the fifth, the exchange is Chicago Mercantile. Once you learn S&P, I don't care. So this is like a GPS software. Once you learn, you can do gold, crypto, currencies, forex, indices, Nasdaq, Russell, Dow, Indian currencies, Pakistani currencies. As long as it can work with Ninja, you can work. Simple as that. Exchange is Chicago what? Chicago Mercantile Exchange, CME. If you're doing, let's say, I think silver is on New York, I think CBOT is, so they are on different, Nasdaq is on a different exchange, I think still on a CME. So this is the program.
It's running fine. NinjaTrader is basically a platform. Platform, that's the, And S&P 500 futures is instrument. it's the instrument, And correct. Chicago Metal is an exchange. Exchange, the exchange. So somebody asks you, hey, what do you do? You can't just say, do Bitcoin. They're going to look at you like that's all you know. You have to know, hey, I trade NinjaTrader or MetaTrader or Plus Trader or OctaFX or XNS or Binance. So that's the platform. You should know what instrument do you trade, stocks, options, crypto, forex, what type of market do you trade. Now within the market, what do you trade? S&P, Nasdaq, Russell, Dow. So these things you should know how the value works. So does your software work on MT4? Not yet. That's a very good question. 6 months. By July of 2024, if we bring this to Meta, we'll capture 90% of the market because the rest of the world is on Meta. So the way we usually trade is like we see the chart on TradingView and we trade on a TD. 100% right. So You it's see the like- chart on Ninja and you trade on Interactive Broker or TD. But Ninja has an option to connect TD. You can look into it, no problem. So is it possible that we look the charts here? Yes, yes. And then we trade on Meta? 100%, 100%. I have people watching crypto here doing it on Binance. You just have to see the difference. The difference is spread difference. Whether you're doing cash or futures, as long as the instrument is the same. For example, some people do SPY, a very real S&P, cash, but they look at the future. So you see the direction in one way and you do your actual execution on a different way, right? So when I met him, I'm like, this is okay, but you know who's going to join this program for the last 12 years? So the way it works right now is you hear the ad, you go, you listen to. So he runs that part of the business now. This is called the lifetime license business. He doesn't want to deal with subscription model, right? So he advertises on radio, print media. You go listen to the presentation, you sign up, you start the program. It's identical program. And when I met him, I'm like, I have a lot of students because I've been in who don't have that kind of money. Simple. In order to come up with 5,000, आप यही फीस थी ना जब शुरू में आप आई थी, जब हमारे पास option नहीं था. I had no option because it was we were the last 12 years or so we were working with Ninja 6 and 7. There was no option for us to subscribe to give you this software. आपने भी full time buy किया, right? So few of these students in March who bought it full time. Ninja around July or so, July of this year, when we saw Ninja 8.1, we now decided that we're gonna move into a subscription model. If you've been, I've been old enough, I'm 44 starting tomorrow, November 19 is my birthday. I will do early birthday. So November 19, I've been really old enough to know a lot from cassette player all the way up to like live streaming and everything. I think I'm the luckiest person to be born in the world. I've seen it all, right? In terms of like cassette gachiyan te bhi likhde rahe ne, te ithe on tablet te bhi likhde hain. So I've seen it all, right? So 8.1, Microsoft Office, if anybody remember, used to cost $500, right? Microsoft Office 97, 95, and piracy was high, right? People like, yaar, copy bana de, CD di, Windows di, kar de ye, crack kar de ho, kyunki cost was high. Here, if we advertise, this takes a lot of work. For me to sell you this takes a lot of work. Like we have to fly to Vegas, corporate meeting, 10 licenses, क्योंकि $250,000 the deal होने चल रही है. So I have to spend with the client 2 days in convincing, pampering, hey, please, yaar, ले लो. It's a different thing. थोड़ा जे कम, every बहुत ज़्यादा है retail investor रास्ते. 8.1 came and I saw an opportunity and I said, you know what, let's move it to cloud. You know, Microsoft Office today costs $4 a month. Nobody pirates. They're like, यार सब्सक्रिप्शन ले लो, नेटफ्लिक्स दी ले लो. पहले कि रॉजर केबल किन्ने सी 150 महीने दी. अज असी 100 सर्विसेज दे देने. $15 IPTV दे, $20 नेटफ्लिक्स दे, $20 HBO दे, $20 Crave दे. So that's just the way it is, right? We would not pay Rogers $150, but we'll pay Netflix. Okay, one show belongs to HBO, one show belongs to Netflix. So we're paying a lot in subscription. So this is the era of subscription. So we said, all right, I'm going to run the business model of subscription because that's what I'm good at.
We came up with one number. We said, you know what? I'm going to charge you $10 a day. That is it. That includes everything. That includes my software. That includes my live stream. That includes my guides. That includes my signals, my groups. I'm not going to charge you anything extra. So that works out to $300 plus HST, $339. I have about 6 or 8 TikTok messages of people who teach courses online and they're yelling at me. They're like, यार तुसी ट्रकिंग की तरह साडी इंडस्ट्री भी खराब कर रहे हो क्योंकि ਅਸੀਂ 1500 ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 2000 ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 339 ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ but here is why I'm different. Number one, we believe there are a lot of guys who are teaching, no disrespect to them, but they're only teaching theory how to do this, theory how to analyze, theory on trading view, theory on this. We believe we a little have an edge to deliver software. We can give you something that actually, ready-made solution, right? So normally, a normal trader, by the way, before our program or right now, both of you are, the questions you're asking, I'm sure you know. What do? You go on TV, TradingView. You pick S&P 500, you start analyzing it. I read here, I studied this, I listened to this mentor, I have subscription to this group. I think maybe spending a couple of $100 a month altogether, and you do your own analysis. Bitcoin, crypto, forex, whatever, right? Then you put your trade in. What we said, most of the traders are wasting time analyzing. So 16 gigs of RAM, iCore 7, we took all the possible 20 different things you have to do, and we gave it to the computer. So nothing here I invented, I have to be. And the example that I give is Tesla. Tesla did not make a car, by the way. Henry Ford made the car in 1900s. What Tesla did is he just puts indicators, GPS, tracking, doing this, doing that, automation, so AI. So Elon Musk made the car, that was a car, and so many people had already made the car. Same idea. We didn't invent anything that's not on TradingView. We said whatever work you do, you look at trend, you look at RSI, you look at Bollinger Band, you look at MACDs, you look at value area, you look at resistance support levels, you look at night session. What else do you do? Do you look at higher highs, higher lows, lower highs? You look at the percentage. Why don't I just give it to you? And you just wait for the entry. My trader says, my God, we're not used to that. Because we are used to doing it hard way. 2023, just sit back. I'm going to open the chart for you. And you'll be able to hey, this is my entry. Everything is done for you. Every single thing is done for you. And you're going to say, what the hell, man? Why was I wasting? And you're going to say, how come this didn't exist before? We have an answer to that. Just because you don't know something it exists, it doesn't mean it doesn't exist. There is probably 10 times better software that I don't know of. Maybe in New York somebody has it. If I get introduced to it, I will know. So the software will only predict the technicals. Everything. Technicals, Yeah. not fundamentals. Fundamentals in what sense? What are you The news are coming. We'll teach you, right? It's all part of the package. It's all part of the $10 a day program. How to read the news, where to go to Forex Factory, which impact to read, how to read it. So again, we cover every single base because a lot of mentors and groups out there, they'll give you coaching, they'll give you signal. One guy is giving you coaching, one guy is giving you signal, one guy is giving you indicator, one guy is giving you videos, one guy is giving you live signal. We're going to give you everything. Gigi. So like you say don't trade news, right? Yes. Like you have experience, if you go to Forex Factory, Yes. you see this news is coming, Yes. you do your homework, like the see data is coming, But here's the problem. So do you have experience, do you trade news or not? Zero. I'll tell you why. 4 days ago, did you see S&P shot up 93 points in the history of my, if I've seen a spike, 60 points. If you were with the news, the ratio is 50-50. That's what I look at the news.
either you're gonna go or you're gonna burn. There is no, like, if the CPI data, this is what I call it manipulation. Do you think before that thing gets posted there, big boys have no idea? How does the spike come? Like, if you can judge, कैसे आ गई जी spike? किसको पता था कि 1 लाख ऑर्डर इस साइड पे डालना है? So there's a lot of people, so-called insiders, they already know it. We as a retail investor get it known the last. So better to stay away. Because you will only happen to, I have it live, he was on funded account, he was 2 or 3 days away to pass it. He lost it on that CPI data. Just don't trade the news. So we'll tell you what trading the news means. News means today interest rate announcement will come. And it is scheduled at 2 p.m. Chapter 1, first video. Don't trade. Don't trade the news, please. Meaning that at that time, make sure the mouse is off. Like you can't even accidentally click, right? So for like SP 500, so only see US news or like US, so filter it down to just US. People who trade gold, they look at different news. Really, gold doesn't have news. Oil has news, OPEC, and gas has news, right? So like for Nasdaq or S&P 500, so USD news is fine. So again, CPI, PPI, employment, interest rate, 5 different, and FOMC speeches, right? So we came up with this rule of $10 a day. Now, what we want is this. First 14 days is free. We will send you 2 videos on how to download Ninja. I have basic. Let me see if I have the cue cards, what I printed for everybody. Right here. You know, I went, because I have to understand, you have to understand, I used to work in a computer service industry where I had to teach people how to put CDs in a CD-ROM. You know how difficult that is to tell an old lady across the ocean what a CD-ROM is? How to right-click Windows? How to go into properties? Update Windows modem drivers? Because I know the psychology, I know people how they like to learn. This is how I traded. Click here. Download this. I went as basic as, it's upside down by the way, sorry. Please type in your name, right? Please type in. So I will teach you like you are a newborn. You just have to willingly to learn, right? I'll teach you by screenshotting everything, right? So same idea. We'll send you 2 videos for 14 days. Download it, install it, test it. Once you're done, then after 14 days, we sometimes make an exception. Exception is, you know what? I had an emergency. I couldn't finish your free program. Can you please, this is case by case scenario. This doesn't happen every time. Can you please add me another free 7 days? And we have made that exception. So it's not a hard and set rule. You show me an interest, I'll show an interest. You show me, hey, I have seen you log in 0 times. You ask me for an extension because everything is recorded through IPs. We're not going to give you an extension, meaning that you have kind of taken it for the, hey, let's just test these, how these guys are. So anyway, so 14 days is free. Your first subscription comes in at $339 Canadian or 300 USD. If you are outside of Canada, the price is USD, by the way. So 300 USD, we expect by the time you're in month number 2 or 3, this fee of 339 or 300 should be coming out from this business. Please, I hate that if you're doing an Uber or you are a CEO of Walmart, I don't care. This fee should not be coming from your other business, your other industry. I would be a bad teacher if I couldn't make you $300 a month, right? At a worst case scenario, right? So 300 तो यार $10 तो कासिम भाई बन जाती हैं, माइक्रो में बन जाते हैं, right? तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आपकी 339 की फीस यानी कि आपके किसी और बिजनेस से आए, राइट? बिकॉज व्हाट विल हैपन इज इवेंचुअली यू विल गेट टायर्ड. आप कहेंगे जी ठीक है जी मैंने 339 दिए, 3 माह की फीस लगा ली, चलो कुछ छोड़ दिया.
every single other job again is very, very hard. In order to make money, I have done every type of possible job in the world. You know, when people have made $100 or $200 in the first 5 minutes, let's say 200 USD, your P&L is showing, right? And they don't quit. I say, just उससे पूछो जो Walmart में खड़ा है. 8 घंटे Walmart में आप खड़े हो ना, तो आपको 200 USD नहीं मिलते पूरे दिन के बाद. और आपको पता है कि Walmart बहुत हाई उस तरह कस्टमर सर्विस है, लोग आपसे बदतमीजी करते हैं. रिस्पेक्टेबल उस सेंस में नहीं है क्योंकि कल्चर ऐसा है, राइट? There's a lot of construction job you No, but construction still nobody's bothering you. Anybody, you are a customer service, whether you are standing at a bell booth or Roger बदतमीजी करते हैं. मैं सिर्फ ये कहता हूँ मुझे बता दो कि $200 अर्न करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है. यहाँ पर I drive bus for the city of God, and I know that. You know, to be honest, when I came to Canada, worst area to used to be live was Scarborough. It's unfortunately has become the next Brampton, right? So it is unfortunate. That's every single thing you hear of is it happens to be in Brampton. It's just unfortunate, but it's okay. Exactly. So what I'm saying is the time against that 200. Again, your mind is saying I don't deserve it. So in psychology, this is called an imposter syndrome. Go Google it up. What that means is I'm not deserving. How did I make this $200? What did I do? I just clicked and I made $200. I don't deserve it. So you start self-doubt. So build some confidence कि नहीं यार मैं ले सकता हूँ 200 मैंने अच्छा ट्रेड किया है लेकिन इसके बाद बंद कर दें. ये टारगेट है छोड़ दें सिम पे आ जाएं. So again work on your human psychology, human behavior, greed, discipline. Trading will take care of itself. आज ट्रेड ना समझ आया 2 माह बाद समझ आ जाएगा. डाइवर्जेंट कैसे लेते हैं वो टेक्निकल डिटेल्स हैं. वर्क करें ह्यूमन बिहेवियर पे, राइट? सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. यू कीप पेइंग अस $300 प्लस HST or 300 US. We keep giving you the service. There's no lifetime commitment. You decide you don't want to be part of it and you can trade on your own. No problem. There's no hard feelings. It's okay. You decide you don't want to go after 14 days. And that's it, right? So let's take a break, guys. It's 2 o'clock. We have coffee, we have Timbits, and then we'll resume in 15-20 minutes. Like then I'll do more advanced level talking. Sorry. चाय वगैरह ले लें. मैं लेता हूँ, मेरा अपना मटका भरा हुआ है. हाँ जी. सर मतलब मैं क्रिप्टो ट्रेड करते मैंने कहना मेरे फोन पे भी करी. ठीक है बिल्कुल ठीक है. मैंने क्रिप्टो ट्रेड करते ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. ਮੈਂ ਸਟਾਕਸ ਤੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ठीक है. ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਰਾਈਟ ਬਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀਕ ਸੀਗੇ. यार कैमरे नहीं ठीक. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे. या मेरे बेसिक्स वीक सी. सो दिस इज व्हाट दे हैव सोल्ड मी. ओके दैट्स फाइन. सो ਇਹਦਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ. ਸਿੰਪਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਾ ਲਓ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਇਨ ਬੇਸ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ. So analyze here, trade there, no problem. देखिए एप्पल टू एप्पल कंपेयर हो जाएगा ना कि मेरा सॉफ्टवेयर की कह रहा है तो अड्डा की कह रहे हैं. नो प्रॉब्लम. बट मैं तो बेहतर कहना जा रहे हैं दो लॉस्ट मनी. हाँ बट मैं बड़ी नहीं लेकिन देखो इधरों स्टार्ट करो, इधरों स्टार्ट करो. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मैं थोड़े को पैसे नहीं ले रहा, कोई मैं तो दस नहीं रहा. हाँ ठीक है ठीक है. अच्छा ये आईकोर 5 भी है, 5 और 7. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੋ नहीं पहले स्टार्ट नहीं लेकिन हये ना करो. मैं हये भी कहना कि मेंबरशिप ना लाओ,
14 दिन मेरे सॉफ्टवेयर ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ what it is, how it works, what it gives back, up and down, and then go from there. ਸੋ ਸਰ ਆਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 100% ਜੀ 100% ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਇੱਥੇ 골ਡ ਪਾ ਲਓ, 골ਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਾ ਲਓ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਡੇਟਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋ, ਉਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਣਗੇ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਹਾਂ नो प्रॉब्लम वो कर देना फिर इरेज कर दो। मैं ठीक है। अच्छा लाइव माइक है देखना, माइक लाइव है हाँ। वो लोग पूछी जा रहे हैं लेकिन रिस्पांस ठीक है This side, on this side. ठीक है जी सर, on the क्या right चल side of the- बैठे हाँ जी हाँ। जैसे मूडी अकल वालों की कैसे समझना आसान है। सर पहले 14 दिन में लिखा था, 14 14 दिन वाला मैंने किया, ठीक है फिर मैं तकरीबन 1 महीने मेरा पूरा हो रहा है। ठीक है। मैंने सैम का भी दिमाग है। अच्छा आप लाइव स्ट्रीम मेरे से कनेक्ट करते हैं? नहीं मैंने भी अच्छा आप कह रहे थे शायद हाँ नहीं लेकिन मैं लाइव स्ट्रीम तो कर रहा था हाँ। आप लाइव स्ट्रीम में सुबह 9:30 बजे मेरे साथ आए, हम मैं आपके चार्ट खुले, मेरे चार्ट खुले, बिल्कुल बिलाल भी है, सैम भी है, मैं हूँ, साथ आ जाए, बैठ जाएं। इस आवर्स में हम पैसे भी नहीं लेते, आपके साथ बैठ के कर देंगे कि क्या चीज़ समझ नहीं आ रही वो मसला नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाएगी। हाँ नो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम, मैं आपको गाइड कर देंगे क्योंकि मेरा नंबर आपके साथ कनेक्टेड लाइव है, सो वी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। इसी के जरिए सुपर एरिया के हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल लाइव सेशन में आए ना, लाइव सेशन में आपको बताऊंगा कि भाई मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि हम मॉर्निंग में ही आपको बता देते हैं कि किसकी डायरेक्शन क्या है। 9:30 बजे 9:30 बजे स्टार्ट होती है। हाँ 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 मंडे टू फ्राइडे हाँ जी। तो उसको हैबिट बनाएं 9:30 to 11 सुनने की। हाँ जी हाँ जी नहीं मैं तो 2 बजे तक बैठा होगा। हम कर लेते हैं हाँ तो वो जो आपका जो फंडेड प्रोग्राम है उसके लिए मैं उसके पास हाँ अगला सैम से सेटअप करवा दूंगा। मुझे कब करनी चाहिए मुझे नहीं पहले इस वीक में देख लेना कि आपको थोड़ा समझ जाए। बिल्कुल नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा क्वेश्चन हाँ जी, बट ये 9:30 to 11 ये जो फ्री ट्रायल में भी 9:30 हाँ जी हाँ जी आपको सब अच्छा नहीं तो 9:30 to 11 ही बैठना होता है। नहीं देखिए ट्रेडिंग की दुनिया खुली है 23 घंटे। हाँ जो आप करते हो जो हम करते हैं 9:30 to 1, 9:30 to 2, 9:30 to 11 डेली आता है, डेली हमारा प्रोग्राम चल रहा है। जैसे मेरी जॉब चल रही है हाँ जी हैव यू सीन पीपल जो इनकी और भी जॉब तो जनरली फिर शुरू में 14 दिन तो आप कॉन्सेप्ट समझे, राइट, टू अंडरस्टैंड हाउ। हाँ यस 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 तो लाइव स्ट्रीम आप अपनी लैपटॉप पे खोल के हेडफोन्स लगा लें, सुन लें, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन पहले वो 12 घंटे की वीडियो सुनना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी हाँ हाँ लेकिन उसके बाद ये आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल ये चार्ट है, हाँ नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है, ठीक है ये चार्ट है। मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त मार्केट ओवरसोल्ड है, तो अपना चार्ट देख लें। ट्रेड आपने ही लगाना है लेकिन ये ओवरसोल्ड है, ये ट्रेंड लाइन है, तो मैं आपके साथ बैठा हूँ कोचिंग के लिए, तो नो प्रॉब्लम। जी सर हाँ जी बोल साहब सर आगे हाँ जी मैंने कि भाई ने मुझे कल किया मैं साइड आप बैठी वीडियो ठीक है ठीक है काफी से छक्के लगे। ठीक है कोई एक दफ़ा फिर एक दफ़ा फिर देखें मैं आपसे पूछूं सर मैं ये कोर्स टीच करता हूँ, मेरी स्क्रीनशॉट के साथ सवाल करने तो मैं हाँ सवाल करो करें तो मैं सारों के सामने से ही करूंगा सवाल करें वो सर इंस्टीट्यूट है हमारे सामने नो प्रॉब्लम। ये मैं सारों के सामने भी हाँ जी करूंगा हाँ जी अभी थोड़ी देर मैं आपको टीच 12 ईयर के इंस्टीट्यूट हाँ नो प्रॉब्लम और यहाँ 12 मिनट के इंस्टीट्यूट है या कोई बात नहीं उसको सर अब कैसे लेके चलेंगे ये बात थोड़ी नहीं लेकिन देखिए आज आपका डे 1 है, देखिए आज आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी तो कुछ है ना। हाँ 12 घंटे आप उसको 3-4 रिपीट पे देखो, ठीक है। फिर मेरे साथ आपके साथ लाइव सेशन में आप पूछो राफे भाई मुझे ट्रेंड ट्रेड बता दो, मैं आपके साथ लाइव बताऊंगा यार ऐसे ट्रेंड ट्रेड होता है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है। आप मुझे ओवरबॉट ओवरसोल्ड, कासम भाई तो मेरे बगैर ट्रेड कर रहे हैं, बड़े अच्छा हुआ हम लगा
कैसे? ठीक ठाक चाय शाय लें यार। लेकिन मैं सिर्फ आपको appreciate कर नो प्रॉब्लम। सर जो कर रहे हैं ना वो उसका लेवल नहीं हमारे गोल ये था कि सारों से डिफरेंट करना है और अच्छा करना है। there is no comparison to be honest अल्लाह ताला नजर बस अल्लाह that's what I told you और सर आप एक बात पे यकीन नहीं करेंगे, हाँ जी आप नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए आपके लिए भी मान नो है। नो मैं 3 महीने आपके लिए सिर्फ ये पाकिस्तान से आया हूँ, आप ये लाइव क्लोज करके रजिस्टर कर रहे हो, मैं वापस जा अल्लाह खैर और मैंने वहाँ से ट्रेड कर कोई बात नहीं सर। अब पाकिस्तान ये जो है ना मैं कनाडा छोड़ गया सर, मैं तो 1 साल हो गया, मैंने पासपोर्ट की सिटीजनशिप ले ली, तो वापस आके मैंने इस पे देखा, मैं आया हूँ ठीक है। यहाँ मैं बिग भी मेरे कजन के पास हूँ, मैंने यहाँ पे कोर्स करना है, ये 2-3 महीने यहाँ रह के समझना है, कोई बात कोई बैकग्राउंड वहीं से ट्रेड करना इंशाल्लाह। एंट्री इन्होंने बहुत लेट लिया that's my only और मुझे नहीं उससे पहले हम वो सब लाइफ टाइम वाला कर रहे थे। नहीं उससे पहले मैं भी शायद दुबई जाके भी ट्रेड कर नहीं हमें 3 साल हो गए ना हाँ, हमें पहले आना कोई बात चाहिए। लेकिन सर छक्के लग रहे हैं डैनियल साहब की वजह से, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कोई बात हाथ पकड़ ले कैसे सही चलिए देखें थोड़ा सा अगेन जो अब 90 डेज है ना उसको पूरा 90s दें। हम 90 के बाद बात करेंगे कि अब क्या रह गया। सर 7-8 दोस्त गणना में जोड़ते हैं, उन्होंने कहा जी भाई साहब आप 3 महीने जब आपके बने हमें बताएं, हम इस प्रेजेंट पे हम भी कर लेंगे बगैर, मैं क्या नहीं पहले 90 डेज देने पड़ेंगे दिस इज व्हाट आई डिड और मुझे अब ट्रेड्स का 100% क्लियर है कि कहां से लेंगे क्या करना है, लेकिन 90 डेज के बगैर सिर्फ मरेंगे ग्रेड में। अब हाँ मैंने कहा पे हमारे क्या हुआ है वो मुझे क्या हुआ है जब मेरा 300 बन जाता है ना फिर मैं करता हूँ यार अभी तो 11 बजे एक और लेते हैं क्योंकि 2 बजे वाला सेशन आना है। जब तक आप लैपटॉप बंद नहीं करेंगे ना, मैंने जिस दिन लैपटॉप बंद कर दिया मैंने उसी दिन बचाए हैं, जिस दिन मैंने लैपटॉप बंद नहीं किया ना मुझे लगता रहता है कि यार ले लो दैट इज द इशू। पता नहीं राफेल साहब की वो इनोसेंस है क्या एक वीडियो दिखानी थी। Basically what happens is for some reason I think I don't know maybe the software lagging or something like that. I would do a trade right and I lose $12. It doesn't recognize the $12.50 for some reason. Like if I let's say make a trade right here. Okay, you have to make sure limit order. Don't hit close button. Okay, what happens is when you hit this button, right? This close button, right? Yeah. This is what it sends a signal to the exchange that this trader wants to close the trade. From here to the Chicago Mercantile Exchange, maybe 15 servers. क्योंकि देखो बात आपको ना concept समझाना चाहिए. You were right here, you hit close, right? It went to your local internet. It has 4, maybe 10 hops to go to CME. Okay. At CME, you hit 45, 10, 25, right? By the time you click and the traffic came back, Chicago got the order of 45, 10, 75. You're like, यार ये क्या हुआ? So मैं ये कहता हूँ कि हर पॉइंट पे वो आपका टिक खा जाते हैं। उसका आसान तरीका ये डॉम है ना, आपकी येलो प्राइस ये है, आप कहते हो मैंने लिखना यार लिमिट पे सेल करो LMT। तो अगर प्राइस है 45, 10, 75 और 25, it will then execute 100%. So don't hit close button or market button. Go with limit order because in between you will lose this $12, $25, $37. I've had this in Nasdaq. I've seen plus 500. By the time I hit close, I see plus 100 because Nasdaq moves like. So what I'm saying is, try practice closing the trade with limit order. Okay. Yeah. But then like this is what happens with me. If let's say I'm it's saying 37.50, right? Sorry. Let's say $50. Yeah, $50 on God. I close it. It doesn't give me. No, it won't. It'll deduct for $12.50. Yeah, exactly. Yeah, so hit exactly limit order. So don't hit close. Don't hit close. Don't. So no. Just right here. Just click the limit order. If you're in short, buy. If you're in buy, sell. Okay. So suppose if I just bought one, let's say. Yeah. So you bought it here. So you want to close here, right? So then exactly 1 point difference, hit close. Okay. Not hit close. Put a limit order. So after when you're done here, right? Is it possible if I can show you on laptop? You can Yeah. No problem. Thank you. No problem. So it was just because me when I could close. By the time it recognizes, the system recognizes, it's not closed. Yes. No. Hit stick with the limit order. Okay, so it's the reason why this is. Yeah, this is normal. It's just it was just a lag. Lag and speed, and by the time you close, an exchange price had changed. Okay, so someone here, I forgot their name. They told me last time you gave me, they said the same exact thing. Yeah. So you have to hit start limit order. Okay. Yeah. All right, I'm just gonna have you. No problem. Absolutely. Thank you so much. These are क्या हाल चाल? आप कैसे? बहुत दुआएं.
सही चल रहा है। हाँ। सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है ट्रेड कब लेनी है। ट्रेड लेनी है, मैं अभी राउंड 2 में बताऊंगा। 7 ट्रेड हैं तो हाँ, मैं सिर्फ अभी ट्रेंड पे कर रहा हूँ। ट्रेंड में जब ये नंबर रेड है तो सामने नंबर है, वहाँ से सेल मारें। तो वो जो वो आ रही होते हैं लाइन, हाँ। उसमें कंफ्यूजन होता है कि वो उस जगह पे है नहीं। जैसे बेशक ना हो, नीचे है ना तो उसको ऊपर चढ़ लेने दें। ट्रेंड का वो 2-3 बेसिक चीज़ें मैं भी करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। बाकी ये जो आपने बताया इस पर लिमिट, अगर हम मैं स्टॉप लॉस पे चलता हूँ। नहीं, वो स्टॉप लॉस भी लिमिट ही होता है। अच्छा, वो लिमिट ही होता है, वो लिमिट ही होता है, वो लिमिट। मैंने जो है ना, जो मेरा पैटर्न है कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है आपके, हाँ, ATM पे 150 पे और प्रॉफिट लगाया 2 हुआ पे, है। वो आपका लिमिट चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम एंट्री कहाँ से लेनी है? एंट्री, क्योंकि ज़्यादातर होता है क्या कि मैं एंट्री लेता हूँ, मार्केट उल्टा चलना शुरू होता है। ये नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि मैं नैस्डैक में कर रहा हूँ। नैस्डैक में करता रात में हूँ ना। ये वाला चार्ट देखना है, और यही देखता 30-20 बस, ठीक है। 15-10 नैस्डैक में नहीं देखना, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं रात में कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये वाला चार्ट ये वाला मैं आपको करवा दूंगा, ये ट्रेंड लाइन है, ये जा रही है। ये सब समझ आ रहा है। हाँ, लेकिन ये कि इसको कब कंफर्म 100% श्योर हो। नहीं आपने उसमें कंफर्मेशन नहीं है, वहाँ जाके लिमिट ऑर्डर लगा दें कि मैं इस वक्त ट्रेंड ट्रेड लगाऊंगा यहाँ पर 15881 पे, पहले से लगा दूँ। पहले से लगा दें। अक्सर क्या होता है कि मार्केट जब तक वो वहाँ पहुँचता है मार्केट चेंज हो जाती है। हाँ, लेकिन ये देखें, इसीलिए नैस्डैक में सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड चलते हैं। एक एरिया के इस प्राइस पे आ गए, यानी कि वो जो लैडर है, आपको मैं देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, एंड द सेकंड इज ओवरबॉट ओवरसोल्ड। ये वाले नैस्डैक करनी है ना तो ट्रेंड ट्रेड ना करें प्लीज। नैस्डैक में सिर्फ ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये टेस्ट करें। तो दूसरा ये जो चार्ट हाँ जी लेटर आ रही है, इसमें आपके कई दफ़ा दिखाया है इसमें बहुत सारी प्राइसेस। नहीं, वो है लेवल 1 लेवल 2, आपको नहीं चाहिए, आपका लेवल 1 ठीक है। एक सिर्फ वो कोई बात नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है, ये तो पूरी भरी होती है। दैट्स जस्ट लेवल डेप्थ। हाँ, नहीं जरूरत नहीं है, बिल्कुल जी सर। कामरान अली जी क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक। तो 45 डेज हुए हैं अभी। ठीक है। आपकी लाइव स्ट्रीम मैं सुनता ठीक रहता है। हूँ। तो इस बड़ा मसला मुझे जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि ये मिड बैंड का जो ट्रेंड आप कहते हैं ना, तो मैं कई बार वैसे पहले इन होता था तो वो सही नहीं होता था। तो बीच में मैं जो आप कहते हैं ट्रेन में नहीं चढ़ना, तो उसमें लिमिट ऑर्डर लगा के मैं करता हूँ, लेकिन पता नहीं कई बार ना वो पहले ही चला जाता है। मैं लिमिट ऑर्डर शायद गलत लगाता हूँ। वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ना ES करता हूँ, पहले आप ES कर रहे हैं ना? ES कर रहे हैं, कहा था ना वो शुरू में वही कर ES कर, मैं अभी मार्केट का डेटा लोड हो जाए। ट्रेंड ट्रेड का ना एक रूल है कि यार आपने पहले देखना है कि स्विंग कितनी बड़ी आई, ठीक है? अगर स्विंग ही 21 पॉइंट की आई है तो आपका ट्रेंड ट्रेड फेल होगा ना। देखिए अभी कॉमन सेंस है कि आपने एक धक्का दिया झूले को, वो इतना ऊपर चला गया है कि वो मिड लाइन पे आके नहीं रुकेगा, राइट? ट्रेंड का ये होता है कि अगर मार्केट 14 पॉइंट गई है, थोड़ी सी रिट्रेस ली, फिर 15 पॉइंट गई, रिट्रेस ली, और ट्रेंड ट्रेड का एक और रूल है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेंड ट्रेड है, ठीक है? मार्केट गई 11 पॉइंट ऊपर, ठीक है? 11 पॉइंट ऊपर गई, ये आपकी ट्रेंड लाइन है। मैं आपको उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ट्रेंड लाइन को। कई बार ये मसला हो रहा है, फिर देखता हूँ तो वो वाकई बड़ी अच्छी वो डिसाइड हुई होती है कि अच्छी गई है, जजमेंट सही हो जाती है, लेकिन वो मैं इसकी ना ट्रेंड लाइन मोटी कर दी। ट्रेंड गया ऊपर 11 पॉइंट, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर आपने एंट्री है, ठीक है? बिफोर ये हो रहा है, यहाँ पर है ना, आपको ट्रेंड लाइन की तो प्राइस पता है, तो आपने वहाँ एंट्री लगा दी कि मैंने यहाँ से बाय करना, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा प्रॉफिट होगा। यहाँ ये देखें, ये ट्रेंड लाइन में एक ये कल मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूँ, एक ट्रेंड ये सही चला, एक ट्रेंड ये सही चला, ठीक है? अब आप देखें ट्रेंड लेने से पहले कि ऑलरेडी मार्केट 2 दफा मुझे मिड बैंड दे चुकी है, तो चांसेस आर के दूसरे तीसरे चौथे में नहीं देगी, देने जाए तो 6 दफा दे जाती है। लेकिन एक नॉर्मल बिहेवियर है ना, मार्केट गई 11 पॉइंट ऊपर, केम बैक 6 पॉइंट डाउन, आपको ट्रेंड दिया, आप चढ़ गए,
दूसरी दफा मार्केट गई 14 पॉइंट ऊपर, उसने एक और आपको चांस दिया, आप ले लिया। अब हर ट्रेंड ट्रेड रेशियो में कम होता जाता है, 100%, 80%, 50%, 30%, तो वो उसका रेशियो। तो आप लेने से पहले थोड़ा सा बैक जाएं और देखें इस ट्रेंड में कितनी दफा मिड बैंड आ चुका है। आपने ब्लाइंडली नहीं देखना, क्योंकि आपको ये पीछे अगर नहीं नजर आ रहा, इसको बड़ा करके थोड़ा देख लें। ओ माय गॉड, अगर ये लेना होता आप कहोगे यार राफे ने तो कहा था यहां से ट्रेंड ट्रेड लो, लेकिन आपने देखा यार एक भी लग चुका है, दो भी लग चुका है, अब मार्केट ऑलरेडी 25 स्विंग ले चुकी है। आई एम नॉट गोना टेक ए ट्रेंड ट्रेड, आई विल टेक एन एरिया ट्रेड और आई विल टेक ए ओवरबॉट ट्रेड। सो अगर ट्रेंड नहीं चल रहा तो ओवरबॉट में जाएं, अगर ओवरबॉट के बाद डाइवर्जन में जाएं। 3 ट्रेड इकट्ठे चल रहे हैं, ट्रेंड, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड या डाइवर्जन। दैट्स इट। इसमें एक ये मसला ये होता है ना कि मैंने जैसे अब फर्ज करें ये लगा, पता नहीं मैं ऊपर लगा रहा हूँ नीचे, करीब आके वापस चली जाती, मुझे लेती नहीं है। अपर के ट्रेंड में लाइन से नीचे लेना है, लाइन से नीचे, ठीक है, और ऊपर वाले ट्रेंड में लाइन से नीचे, सेल में लाइन से ऊपर लेना है, सेल में लाइन से ऊपर लेना है कि ये ऊपर से आके टकराएगी। नहीं, हाँ टकरा नहीं, सेल का मतलब है कि जब आपकी सेल ये बाइंग है कि मैं ये ऊपर गई ना तो आपको ये नहीं नजर आ रहा था, तो मैंने बाइंग लेनी है इस लाइन से नीचे, अच्छा। ठीक है, तो कि जब वो आए और वापस जहां से मुझे पिक करेगी ना, तो अगर ऊपर होगा तो मेरे 2-3 टिक जाया हो जाएंगे, नीचे से लिया होगा तो यहीं जाते जाते आपके $100 हुआ है मेरे साथ, यही हो रहा है कि आप बहुत जल्दी एंट्री ले रहे हैं। तो आपने लाइन के एज लिटिल एक टिक नीचे लें बाइंग में, जब आपकी सेलिंग है, ये सेलिंग है ना, टिक से ऊपर लें, एक टिक एज पॉसिबल, उससे ऊपर एक टिक ऊपर, देखिए एक टिक ऊपर, एक टिक इधर, तो यहां से आपको ट्रेंड ट्रेड पसंद है। नहीं वो भी ठीक है, लेकिन प्राइस पता लग जाता है। डोम से क्या करते हैं, मैं अगर मिड बैंड पे बैठी रहूंगी तो बैठे ही रहूंगी। नहीं वो ठीक है, तो डोम से मैं थोड़ा ले लेती हूँ कि यहाँ बार चल रही है, बार के ऊपर नहीं वो ठीक है, लेकिन कई दफा तेज चलता है ना, तो मैं हमेशा प्राइस से लेता हूँ कि मेरी मिड लाइन की प्राइस क्या है, तो प्राइस से लेना है। प्राइस से कर लेता हूँ, जैसे मैं पूछ रही कि मैं ठीक कर रही हूँ, मुझे लगता है क्योंकि मिड बैंड पे बहुत टाइम लगता है, तो वो बार जो चल रही है बार नहीं, लेकिन मिड बैंड गारंटीड है ना, बार तो है, वो अगर बार के अगेंस्ट चला गया फिर क्या करेंगे, तो मिड बैंड का वेट करना है। हम लोग क्या करते रहते हैं, वेट टू वेट करते हैं ना, तो मेरी जो प्रॉब्लम है, हाँ जी, कि मिड बैंड में मैंने लगाया, अब वो नीचे आके नहीं डसा मेरा आएगा। देखिए अगर उसने 11 पॉइंट की स्विंग ली है तो यहां से एंटर करना है ना, इस पॉइंट से, तो नहीं यहाँ तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लगा हुआ है ट्रेंड ट्रेड में, तो इन बार से नहीं घबराना है। वो तो आपको लेसे आप बस स्टॉप पे खड़ी हैं, आपने एक डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, ये थिंक ऑफ इट लाइक ए बस स्टॉप। जी सॉरी सॉरी, ओके, सो ये आपने जाना है ईस्ट बाउंड, ठीक है, ब्रैम्पटन जाना है यहाँ। अब ये बस चल रही है, ठीक है, आपका बस स्टॉप ये है, आपने क्यों इधर से कहीं हो, आप अपने बस स्टॉप पे खड़ी रहें, गाड़ी आएगी आपको लेके जाएगी। अगेन आपने ट्रेंड ट्रेड में मिड लाइन से नहीं हटना, आप जो कर रही हैं वो बार ट्रेड है, टॉप ऑफ द बार, बॉटम ऑफ द बार, ठीक है, वो भी सही है ट्रेड, लेकिन देखें एक रेशियो होती है ना ट्रेड की, कैंडल ट्रेड या बार ट्रेड जल्दी आ जाता है, फौरन आ रहा है, ठीक है, जल्दी आ, ट्रेंड ट्रेड उससे लेट आता है, बाद में आ रहा है ना, उससे लेट ओवरबॉट ओवरसोल्ड आ रहा है, उससे लेट डाइवर्जन आ रहा है, उससे लेट एरिया आ रहा है। तो आपने पिक करना है कि मैंने 100 कहां से कमाने, ठीक है, 100। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 100 कम लगने लग गए, सिंपल सी बात है, मैं ऐसा ही है ना, और मैं आपकी हंसी से बता सकता हूँ कि 2 मंथ्स अगो 100 का मसला नहीं था, अब मसला है मैंने 1000 पे कैसे जाना है, वो मैं आई नो। मैं अब आपको बताऊंगा, जो ट्रिक ये नहीं है कि नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा चेस करने, ट्रिक पता क्या, ट्रिक ये है, इसको 2 करना शुरू कर दें, अच्छा जी, ठीक, जहां 100 बनेगा वहां 200 बनेगा, कोई मेहनत है, वो भी किया है ना, मसला कहाँ रहा है, बस नहीं, वैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं वो कर रही हूँ, ठीक है, हाँ 100% ठीक है, आप कर रही हैं बार ट्रेड, टॉप ऑफ द बार, बॉटम ऑफ द बार, वो भी ठीक है, बार करें, कैंडल करें, ट्रेंड करें, चेस पॉइंट्स नहीं करने,
जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए इसको 2 कर दें, 2 कर दें, 3, बस एग्जैक्टली। एरिया ये होता है कि अगर ओवरबॉट चली गई है ना तो आप अपना एरिया वो लैडर का खोल लें। आपकी लैडर चल रही है ना, मॉर्निंग में आपको लैडर दे रहा हूँ कि ओवरबॉट कितना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल दे रहा हूँ ना, तो उसको मैच कर लें साथ सुपर एरियाज पे। वो लैडर चल रही है, बाकायदा एरिया ट्रेड है, वो आपको बताती है कि ये R1 है, ये R2 है, ये S1 है, ये S2 है, ये एक्सपेक्टेड हाई है, तो वो एरिया से बाउंस करती है। ये असल में एरिया, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर इतना आसान है, कई दफ़ा आप लोग एरियाज में ना घबरा जाते हैं कि वो एरिया क्या है। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। जो पर्सन ट्रेडिंग व्यू पे यूज करता है ना, वो हमारे एरिया बहुत पावरफुल करते हैं। हेल्पफुल है आपका सॉफ्टवेयर, हमने बीच में थोड़ा छोड़ दिया, हाँ। बिजी हो गए तो अभी फिर शुरू किया। अच्छा ये ना एक जो अब नाइट सेशन है ना, उसमें पीछे जाके सारा देखना वो मुश्किल होता है। नहीं बहुत आसान है। नहीं सिर्फ 12 बजे तक देखना है, ज्यादा पीछे नहीं देखना। नहीं बहुत आसान है, 12 बजे तक देख लें, 12 o'clock। हाँ, एक नंबर लिखना है पीछे जाके कि या अच्छा जी 12 की लाइन से 9:30 की लाइन तक ये सबसे ऊपर था, ये सबसे नीचे था, बस 2 नंबर देखने। आपको बताऊं 9:30 पे मेरी स्पीच से पहले डैनियल के 15 मिनट में आपको पता लग जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, प्रेशर क्या है। वो क्या कहता है आके, अगर आप गौर से सुने, बेस इज अप, प्रेशर इज अप, बेस इज डाउन, प्रेशर इज डाउन। और आखिर में क्या कहता है, इफ आई वर यू आई वुड सेल फ्रॉम हाई। ये सिर्फ ना कीवर्ड मैंने सुनना होता है कि वो क्या कह रहा है कि वो कहां से मैंने बेचना है। जब वो कहता है ना माई स्ट्रैटेजी फॉर टुडे इज स्टे इन शॉर्ट एंड सेल फ्रॉम हाई, मैं कोई और ट्रेड नहीं करता। आपके ख्याल से मैं जो 6 घंटे बोल रहा हूं, मैं तो माइक्रो ट्रेड नहीं कर रहा ना। मैं क्या वेट कर रहा था फ्राइडे को कि 18,910 पे गई ना, मैंने सेल मारना है। मैंने जो अपने स्टेटस पे 20,000 का फोटो डाला है, 2 ट्रेड डाले नैस्डैक पे 2, एक ट्रेड डाला 18,910 पे, सेल मार दिया, 20 पॉइंट लिए। सेकंड ट्रेड डाला 867 पे और वो 825 पे आ गया था। सो हाँ जी अगला सेशन शुरू करते हैं जी, बैठे। हाँ जी एक सवाल था जी कि ये इतनी तेजी से ऊपर जा रहा होता है, हाँ, ये माउस काम नहीं करता, तो हमारे पास कोई स्पेशल माउस होता है इसके लिए? नहीं हम माउस के पास नहीं, आप इसको राइट क्लिक करके ना, ये देखें इसका आसान तरीका ये है, यहाँ राइट क्लिक करें, इसको ऑटो सेंटर बंद कर दें तो रुक जाती है लैडर, वहीं पर खड़ी हो जाती है। तो दैट्स इट्स जस्ट द राइट क्लिक इन ऑटो सेंटर। इससे क्या हुआ कि जहाँ पे हमारी प्राइस आपको स्क्रॉल अप एंड डाउन आसान हो गया ना, सो यू कैन स्क्रॉल अप एंड डाउन नाउ। या कोई बेसिक स्पेशल माउस नहीं, क्योंकि बाज़ का चेस करना मुझे इस पे क्लिक करना चाहिए। मैं असल में हाँ नहीं इधर क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करें। हाँ इसके पैसे क्लिक करेंगे तो हाँ, तो आप स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल जी सर। हाँ जी स्ट्रेटजी बता रहे हैं ना, ईएस पे प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट में न्यूबीज के लिए कि कौन सा चार्ट देखूं, क्या क्या उसके अंदर देखूं। मैं अभी ये दोबारा दूँगा, मैं पूरी कन्वर्सेशन दे जी। आपका कैसे जा रहा है जी? किस बात का? वो सैटरडे का चल आपको हम कुछ डेज डाल देते हैं। कोई मैं ऑनेस्टली मैं अब अकेला बंदा, स्ट्रीम भी देखनी है, यूए भी है, मुझे नहीं पता इन्होंने ऑफिस खोला है नहीं खोला। मैंने सिर्फ आपको मैसेज करने के बाद आपको किया कि आप किसी एक को कह रहे हैं। हाँ somebody is coming here. मुझे डाउट ये था कि there was somebody sitting right beside me हाँ in the car and I didn't know if the center was going to नहीं, वो बड़ी हैवी ड्यूटी, वो मिसकम्युनिकेशन आपकी वजह से। आपको पता है सारे प्रोसेस बदल दिए। अब वो गुरदीप फायर हो गई, अब वो गुरदीप अब क्या देखें वो चली गई नहीं। अब नकीता है उस एक दिन की वजह से खाली आप नहीं खराब हुई, काफ़ी स्टूडेंट्स आके चले गए। कोई आ रहा है, हमने कहा भाई सैटरडे को, अब एक बंदे की जॉब गई इस इंसिडेंट की वजह से। नो मोर गुरदीप बिकॉज ऑफ दिस इशू। नो प्रॉब्लम, आई विल कॉम्पनसेट यू, नो प्रॉब्लम, कोई मसला, नो प्रॉब्लम। आपको मैंने फंडेड अकाउंट करवाना है, मैंने करवाना है, आप मेरे साथ आएंगी मॉर्निंग। मैं अच्छा देखिए, आपके पास जितने मर्जी पैसे हैं ना, मैंने आपको जीएफएफ में लाइव नहीं घुसने देना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आपका वो सर्टिफिकेट आए
आप उसको विन करें। देखिए जो आप शो ऑफ करते हैं ना, हाँ जी। वो सर्टिफिकेट दिखा के अपना, हाँ हाँ, तो क्या हुआ? you know the trade। नहीं, देखिए मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी अभी एंटर हुए हैं, वो भी पास कर रहे हैं, कोई बात मैं नहीं ज्वाइन कर सकती जब मेरे सर पे कोई तलवार लेके खड़ा है नहीं। कि कौन सी तलवार है? कि आप if you are doing the trade or not, नहीं, लेकिन फिर why they are giving me a certificate? नहीं, मेरी बात है, क्वेश्चन ये कि आपने सस्ता सीखना है या महंगा सीखना है, एक तरीका। मैंने लाइव एक GFF का, I'm not going to do any trade, हाँ। I'm just going to go। लेकिन एक बात है, देखिए आप सर्टिफिकेट की वरी ना करें, ट्रेडिंग करना फंडेड पे सीख लें। फायदा ये बताऊं, जब आप GFF पे जाएंगे ना, आपकी कॉस्ट है $145, $100 निंजा की, $20 डेटा की, $150 कनेडियन, ठीक है। यही काम बेशक आप ट्रेड रियल नहीं कर रही, सिम पे कर रही हैं, $15 पे हो जाएगा। आप बेशक सर्टिफिकेट को गोली मारें कि मैंने इनका पास से नहीं करना, फेल कर दें, चीट यानी कि करें ना, जो काम 145 का हो रहा है वो 15 में हो जाता है। सिर्फ आप फॉरगेट के आप मैंने पास करना है, मैंने अवार्ड लेना है, सिर्फ सीखना है। नहीं हो, मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि अगर आपने GFF में लाइव नहीं करना, हम नहीं कर, अच्छा नो, आपने GFF का नहीं लाइव करना, ठीक है। आप GFF को ना लाइव करते हुए भी आपकी कॉस्ट $145 है, क्योंकि GFF चार्ज करता है $99 US निंजा का एंड $20 डेटा का, $120 US, 150 कनेडियन। यही काम फंडेड अकाउंट $15 में कर रहा है। फर्क क्या है? मुझे ये मेरी डिबेट नहीं समझ आती। अगर वो कहते हैं कि आप इसको करें, हाँ, you are waiting for the certificate। नहीं, यू आप फेल कर दो, आप करो ही ना, ट्रेड ही ना डालो, उसमें सिम पे चली जाएं और रियल वाले में ट्रेड ही ना करें। नो, जस्ट आप अगले मंथ की फीस $15 पे करी जाए, तो जो काम 150 में हो रहा है वो 15 में हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, आप बेशक उनके सर्टिफिकेट ना लें। Okay guys, so now we will touch base on level 2. Level 2, until 2.5 hours, 2 hours, we will go through over for those people who are either a trial members or subscribers who are having a little bit of an issue understanding the concepts or don't know what a trade is, how to take a trade entry, don't know what an exit entry point is. That's what I will explain on here. So before that, does anybody have any questions from the previous segment? Everybody's clear on what do we do, what do we charge? Okay, so again I have to address an issue which was a little bit of an unfortunate incident. The growth we expected is really beyond our expectations. Simple. I'm not going to lie about it. What happened was March 6th, I took the franchise and I was selling only the $5,000 software. Ninja 7 was there. Kudos to him for believing us on day one. He's like, okay, I'm taking it. And few others who took it. Sanbir Paji, he's in India right now. Without asking a lot of questions, it's based on instinct. The guy is saying something, but generally you have to hear me out. So we had a different vision in mind that what we had. We even had set up these here that a lot of guys came in, they didn't have the money to trade, even $339. They said, just come with us, pay us a subscription, our laptop, our desktop, So we opened up this center and a lot of processes have changed since March. So first I used to do over there, then here in the evening, a live session. I would rush from there, 2 o'clock, I come here, do a session here, and then it was burning me out. Then we came up with a process. We started doing some hirings. We hired an individual. Some complaints came. So again,
operations manager today, as of today, right now, who is doing an exceptional job, is Atta and Sam. Their job is to make sure that your every inquiry gets answered. In between, there were a few incidents where the old previous receptionist couldn't answer properly, didn't know the concept. They were saying a different price, I was saying a different price. So over the last month or so, especially the incident you ran into, I was in UAE, they were supposed to open, and Bilal was supposed to do a presentation, because next in command, the guy who knows the most amount of knowledge is Mr. Bilal. Honestly, he's done an exceptional job since he's been with us. He's mastered to learn. He's still behind, but he's catching up. So the idea was, if I'm not there, Bilal opens, Bilal runs the presentations and does the analysis, right? So that one Saturday, unfortunately, nobody was here, and quite a few of my students were stranded outside for some time. We changed that process one more time. Regardless, if I'm not here or I'm here, this office is open Saturdays 12 to 5 regardless. Even there is a presentation or there's no presentation, somebody will be here to do and give you the answer, because a lot of people only have weekends. So don't rely on me. Second process I changed, if I travel, everything travels with me. I try to do out of 5 days, 3 days at least, my presentations with you guys morning. You have Daniel doing the presentation. So we are ironing out as much, because again, we didn't expect 10,000 customers to approach us in the first month. I had to issue an apology video saying, hey guys, I can't even respond enough, because we dropped the price from 25,000 to $10 a day, right? So this was like, hey man, I want to get it now. You still see the amount of messages that come in. We have a process, we send you. So I just wanted to clear up that topic. If anybody listening since July has had any issues with our company from customer experience, now we have more staff, we have more experienced, knowledgeable people who can again guide you, and let's give it a new start. And if you, again, I'm not after your 339 today, tomorrow, the next month. I'm after your 339 until both of us are on this planet, right? Simple as that, right? So I want to establish a long-term, if we even have to issue some extra days, I'm gladly going to do it based on case-by-case basis. We'll sit down with, in your case, genuine thing, you did wait for it, so we'll extend some credit out to you, no problem. But again, issue is not the credit. Issue is that I have to stand up as a CEO of this franchise and say, hey, we made a mistake, we messed up, we should have been here, we should have done it for you. Because all of you guys are spending your valuable time to come and listen to us and understand something new, right? So it is our job to make sure we give you the best damn service that we can humanly give. And for that, I'm here, Sammy is here, Nikita is there, Atta is there, and 4 other members. So when you send us a WhatsApp message, 4 people read, somebody will get back to you. So whether it's a payment issue, chart issue, template issue, like customer service, credits, somebody will address. So I want to make sure that none of these questions, we're not going to ignore you, that hey, just because we are growing, I'm not going to leave, even until like Qasim Bhai joined March 1st. Occasionally I'll just send them a message, how is it going? Because these are some of the new guys who trusted on us at the beginning in the subscription model. So I want to make sure every single one of you will somebody will reach out to you and say, hey, is trading going okay? How was your trial? Funded it? Because don't think कि अगर आपने 339 नहीं दिए तो बस जी हम अगले बंदे ढूंढ लेंगे, वो आ जाएंगे. We want to make sure कि किस रीजन की वजह से आपने नहीं कंटिन्यू किया. We had some genuine people. Somebody's father passed away. Somebody's wife had cancer. Of course, so we'll pause your membership. So again, the idea is we're not greedy. Trust me, one thing here we don't lack is money. To us, money is just numbers. 10,000, 20,000, 50,000. Like if I showed you Daniel's just Bitcoin worth, you're going to say, why the hell are you guys even working, right? So again, we just do it out of our passion. My living, breathing, everything is trading. I teach you on how to do it, right? So again,
if you look at, we make money, we help you make money, and then it's a bit of a charitable work from a different perspective. So let's get that out of the way. Now I'll answer the question. After you guys have now installed the software, there are 7 or 8 different type of trades you can do. So the way software looks is like this. So this is a Ninja platform. So I'll go from basics, absolute basics for everybody who's new as well. So when you install this software the first time, Sam does it or anybody else does it, this is called DOM, depth of market. This is, we have few names for these things. So when I refer to a chart, every chart has a name. Every chart has a name. So we have a chart called 1510. We have a chart called 3020. We have a chart called 60 minute, 240 minute, and 1440 minute. Gigi. So like I have a question for the DOM. Like we put a limit order with the left click. Yes. But we need to put the stop with the middle one. Middle click. So it seemed like difficult. Can we do the settings with the right click or like stop or not? They don't have any option. There is one thing I have to say. We didn't make NinjaTrader, by the way. It's just the platform that we use that we be able to, you are able to just use it. So if you don't know anything about NinjaTrader in general, you can YouTube it. You can basically, you're able to just type in on YouTube on how to do a limit order, on how to, so our like on a trader weight, with the left click. yes. So, but here's the thing. Well, for your exact specific question, you can do chart trading. Like, see in here, I'll show you with the mouse. There's an option called Chart Trader, right? So, people who have a little bit of a question with like an issue of clicking the DOM, you can turn on Chart Trader. And for example, my trend line is right here. I want to do a sell order. Right click, sell limit, right? So you can do within the chart these issues, limit, sell, market, everything is available within the chart. So some people like it with DOM, some people like to trade within the chart. So both options are possible. So when you first get our software brand new, we'll set up your environment like this. We'll set you a DOM. This tells you the price of the current market. Yellow is the current price. When you place an order, brown is your price. So brown becomes your price. If you see right here is P&L, profit and loss. Then you have a button called Rev. Rev means reversal, meaning if you are in a long and you want it to reverse, you just press that, it will close one trade, start another trade. So to understand the basics, again, for you, you don't even have a trial. So this is gonna go a little flying on top of your head, right? So what you have to do, just to kind of give you a basic, in a market of futures, so you're a trader, you're trading futures, S&P 500, right? So I'm gonna write ES, which is the ES December 23 contract futures S&P. So you're predicting price to go up, right? So when you're predicting, the word is called long, L-O-N-G. So you want the price to go up, so or buy. There's two ways to call it, buy or go long. What is this ES? What does ES? ES is a symbol for S&P 500. S&P 500 is an ES symbol. Now every single symbol, it's in our booklet. Most of the most common 10 symbols we trade every day that we tell everybody: ES, Nasdaq, Russell, Dow, currencies, gold, oil, natural gas, most traded. Why again ES only? Is most structured to understand the concept. Once you learn ES, you can do. So this applies to everything. It doesn't have to be ES. We just start with an ES. ES S&P 500 has 2 levels. Everything these days has 2 levels. One is called mini, one is called micro. So that's, you have to understand. So what mini is for example, every time you predict in one direction, up or down, if it goes up
1 point, you make $50. If it goes up 1 point, you make $5. So that's what I meant by a casino. They said you have the money or you don't have the money, we're gonna make you gamble. Whether you can gamble or bet small or large, we wanna take you in. We wanna take your money. That's why 23 trillion is made. So every time you click buy, so if I go to 4518 here and I put an order called buy. Now my order got placed. That's my midline. I'll explain you later. If the price goes to 49.50 and I hit sell here, if I put a mouse here, I will make $50. Simple as that. There's no complications. There's nothing at all. Buy one side, market is closed, that's why it's giving me an error. Buy one side, sell one side. Or you can say the other way. If you see the background color is red, you can say I want to sell from here and I want to exit here. You'll make $50. Simple. 4 clicks, $200, you're done. 1.2 quantity, $100, you're done, right? So it's very easy to just predict in a direction, but this is where we say this is not gambling, because you're not gonna just randomly click. I don't want you to just close your eyes. You know what is gambling? I'll tell you what is gambling and what is a casino. This is 100% casino now. Can you just tell me which way the price is gonna go? No, nobody knows. Just if I give you this, only this, DOM, and didn't give you any analysis, this is 100% gambling, by the way. If you start clicking, 2 things will happen. It'll go in the direction, you will make money. It'll go against you, you'll lose money. This is no different than a video game or roulette or anything. So when you add these analysis along with it, the gambling part is completely finished, 100%. And we're gonna say, so now once you open, you will see a few charts. 1510 is written right here. 3020 is written right here. So this is the name of the chart. So on a live stream, on my discussion, my videos, I would refer to it. Take the trend from 1510 with the confirmation of 3020. That's how I talk. So what that is registering in your brain, that Rafay said, do the entry here, just make sure you confirm to this chart. Because again, at the bottom, you're gonna say, oh my God, I have so many charts. What do I do with this chart? What is this telling me? So I'm gonna tell you exactly in ahead. Beginners and day traders don't need other charts, because this software is written for, again, everybody. Everybody in a sense mean, I have a student, I shouldn't call him a student, an investor, with his own money. He only trades 2 trades a year. Natural gas, in September time he buys. In March time he sells. 2 trades, he makes $100,000 a year. He does not trade anything else, but he knows why he needs these charts. What is this? This is doing each candle is 1 day. So it will give you an analysis. So we wrote this software for everybody. I want you to trade intraday, minute by minute, 30 minutes, a day, a year, 6 months. So you're not gonna say, hey, can you write me something that I don't have the needs for? So at the beginning, you don't need anything. You just need 2 charts, 1510, 3020, and DOM. That's it. So this is the chart. So this is people who do position trading. They have money in their account. They can hold overnight. They go with other charts. DOM stands for what? Depth of market. DOM stands for depth of market. Here you have a control center. Kind of tells you, like, you know, your account balance, your positions, your ledger. It's keep how much orders did you place, how much money did you make. For example, I can look at my account balances right now. So for example, I have funded account. My account balance is $300,000 times 10s, and I'll explain you how all of that works. My GFF account, so if you take any executions, so you want to analyze, you send me a report, Rafay bhai, I lost $100 today.
don't send me as little as 100, but if you've lost like $2,000, then I'll analyze for you. Meaning that where did you make a mistake in a position trade? I don't analyze anybody's small trades, by the way. So I just need to know what your entry exit points were. So you can say, for example, hey, I took a long order and what the computer, why didn't understand? So everything gets written in execution. So just again, just play with it. Whenever you're in simulation mode, SIM means simulation, you don't have to worry about money going in or going out. It's paper money. So that's one thing you have to know, is make sure anything you do at the beginning, stick to sim to make sure you're in the simulation mode. There is something called ATM. That I will do it more when there's live stream. ATM stands for automation. So you can automate everything. You can automate, hey, when I place an order, automatically put my stop loss, automatically put my limit order, automatically trail, automatically everything. So it's very, very powerful software. People who do trend trade, Gigi? Sir, when you say it's automated, why don't they buy entry and the entries come automatically? Why we have to sit and analyze that? Very good question. And my disclaimer in the slide 1, you know what I said? We're a software company. In Canada, SEC or Ontario Securities and Exchange, it is illegal for a software for trade on your behalf, right? So even if I give you a software, okay, think about it this way. If we have written this complex software, we can even write an entry for you, right? Like, I know the midline, I know everything. We cannot. Meaning that there is one click the user must do himself. So that's the main difference between for us to do it for you and for you. So for example, we're saying sell from here, right? So you have to sell from there. You have to go up. This is called a bot trading. So bot trading in Ontario, it has some very fine lines in it. So that's why if you see a lot of brokers who do it, they will penalize you. They will deduct it and say, hey, we understand that it's not a human running. You are doing everything by ATM, by everything by software. So they can catch on quickly and they don't want that, right? So they want human intervention. Why? Because they know humans will make mistake. Greed, discipline, over trading, under trading, wrong trading. So bot is just computer playing the computer, right? So now, right now, Ontario doesn't allow that. So that's why we don't have an ATM for you. So what we're saying is, hey, 1510 right now is saying that my entry of sell should be 45.25. So you just take your cursor, put a sell order, and then we'll tell you what a stop loss is. The word stop loss means stopping your loss. Very simple. If you're in a loss, you put a stop loss. Did you? Yeah, I have a question, like when you enter like ATM. Yes. So is there anything we can confirm our profit? Confirm your profit in a sense. जो profit हो गया वो confirm हो जाएगा. Stop loss ऐसा कुछ. ऑटो ट्रेल आ गया ना हमारे पास. ऑटो ट्रेल आपको नहीं मिला, लेकिन मैं यूके से एक स्टूडेंट ने बना दिया एटीएम में. वो ये क्या कर रहा है, जो हमने उस दिन डिसाइड किया था ना, जो 0 पे 7 पे चल रहा है और 8 पे नहीं चल रहा, वो उसने 8 पे भी चला दिया. मैं आपको दे दूंगा उसमें. सो द बेनिफिट इज देयर इज सम ऑटोमेशन दैट यू टेक ए ट्रेंड ट्रेड एंड you're like, I don't want to take just $50. If the price goes down, chase me, chase my profit automatically. So computer can do that for you. That is allowed. So नहीं 50 तो पीछे 4 टिक्स पीछे चलेगा, याद रखना 4 टिक्स हमेशा पीछे चलना है. अगर 100 बनणगे 50 लॉक होएगा, 150 बनणगे 100 लॉक नहीं लॉक हो जाएगा. नो वो ऑटो देखो इस वेले की हो रहा है. यू सेट नॉर्मली 12 and 8, right? So 8 it takes you out, 12 it takes you out, right? So when the next ATM is, when it gets to 8, 4 will get locked, and then another 4 will get locked after. At least क्या होता है, sorry मैं time ले लिया. No problem. क्या होता है कि अगर ਅਸੀਂ लगाने ATM लगाने, right? अगर तो सारा confirm नहीं होता, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ एपेक्स ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 150 ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ नहीं लेकिन ਤੁਸੀਂ 4 ਟਿਕਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਰਹੇਗਾ. ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਕੰਫਰਮ ਹੋਵੇ. ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 100 ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਤੇ 50 ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਗੇ ਬਸ. ਐਟਲੀਸਟ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਓਕੇ. ਦੈਟਸ ਅਗਰ 150 ਬਣਾਏ 200
पर मैं नहीं ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 25 ਤੇ ਆ ਕੇ 25 ਤੇ ਲੌਕ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ Oh, ਡਿਫਰੈਂਟ I know, it's called the threshold problem, and that's the only reason I don't like Apex. Everything else is. There's a one top step, you know, top. Yeah, there is. That's called the daily drawdown. But why I told everybody about Apex is one reason. Before Apex, I was telling everybody to go to GFF and open a simulation account. GFF, by the way, when I say that term, it's a broker that we use for Ontario. And problem with GFF is this. It's not really a problem. You have to pay $99 USD for NinjaTrader, 8 and $20 USD for market data for only 4 markets. Nasdaq, Dow Jones, Russell, and not even Dow, S&P, 3 markets. Gold, you got to pay $1. Crude oil, you got to pay $1. Natural gas, you got to pay $1. By the time you're done, you're paying like $150. All of this data is $15 right now or $40 on Apex. So whether you use Apex or not, data is free. Ninja is free. You don't have to pass their exam. You don't have to. So even for brand new customer, I tell quickly go and sign up because their data is free. Like you don't have to if you want to trade gold and you still want to do simulation, why pay GFF your own real money? You can do the same thing for $40, 1/4 of a cost to do it all. So basically, After passing the I'll come back to the full how to make $100,000 full, even down to a cent. I have a full secret formula. Trust me. Achha. So here. हाँ जी देखिए ये फिक्स्ड हैं by exchanges, right? So for example, Nasdaq, it's right now in our video 1 or 2 if you were gone through it. In the PDF is written. For example, Nasdaq moves 1 point, you make $20 or $2. S&P 50 or 5. Russell 10 or 1. Gold, if gold move $1 up, you make $100. Crude oil moved $1 up, you make $1,000, by the way. Crude oil on Friday moved $4. You know, people made $4,000 in a matter of minutes. We were still shocked why crude oil went up because I don't trade crude oil. Number 4, natural gas, $1 is $10,000. So $1, if natural gas goes from 55 to 54 and you were short, you made $10,000 by $1. But you have to understand so many decimals are there. So with forex, sometimes $1 is $100,000, right? So money is there. You just have to pick the right currency and right market to do it. So basically, this is your opening screen. तो तुसी जदों download करोगे ए देखोगे हुण तुहाडा एक ऐड करना है. Basically for even Apex or trade, they're giving you futures market, okay? In order for you to do crypto, you have to get a service from Coinbase or Connect. These are the 2 data. There's something called connections. So right here, I go into configure. I will go into, there's few, so you can get your data from Coinbase, Continuum, eTrader, Signal, as long as you can get your asset data and have your username, password, then you can analyze the market. So for example, if you want to trade stocks, Connect is the best. Like I pay $75, I can analyze Apple, Google, Microsoft, everything. Gold. So futures market is different, stock is different, option is different, forex is different, crypto is different. You just want to make sure you have the right data coming in. So SIM पे data कहाँ से आ रहा है? देखिए सिम है अकाउंट, ठीक है, 2 चीजें मिक्स ना करें. सिम है अकाउंट, लाइव अकाउंट या फ्री अकाउंट या फंडेड अकाउंट, 3 टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, लाइव या फंडेड या सिम. सिम मीन्स सिमुलेशन. So SIM is just an account, but you have to feed some data. So feed some data is this way, is for example GPS software, right? So data is coming, live data is coming from Google. आपकी traffic के signal सारा कुछ. So you have like this is just the framework. उसके अंदर signal डालने हैं ना, तो खाली TV तो बना दिया है, उसमें channel डालेंगे तो आएंगे. जी जी. तो
जैसे ट्रेडिंग व्यू में डेटा ऑटोमेटिकली आता है, हाँ जी। आप इसको ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्ट ये देखना पड़ेगा कि आपके पास इसमें ऑप्शन है कि नहीं। ये आपको गूगल से देखना, यूट्यूब से इनको निंजा ट्रेडर में देख लें। लेकिन अगर आपका पेड डेटा है फिर नहीं आएगा। पेड डेटा विल गिव यू द लाइव डेटा। So as long as generally people connect interactive brokers or few other different types to connect the live data. So live data doesn't mean you're trading. It's just, for example, you can do meta idhar khola hua hai, data idhar aa raha hai. So this kind of gives you overview of your whole thing. And then I have another thing about trade copier. I'll explain that later. So that's basically it. Now once you have opened it up and you're like, great, it looks good, what am I doing? What am I looking at? What the hell is all of this? To me, this looks like an electric grid and nothing makes sense here, right? But remember, you're born just here. Bilkul. On these two charts, we are analyzing 20 items, by the way. It's all in the video. You don't have to write anything. It's all, I repeat this 9 to 5 every day. For example, for those, both you're doing trend, number 1. Number 2, I have Bollinger Bands, BBs. Number 3, I have moving averages, MACDs. Number 4, RSI, Relative Strength Index, big fours, done for you. Number 5, I have value area, this line and this line, right? Number 6, for example, number 6 is the candles, lower lows. Number 7, the volume. Then I have I think on the other chart, we have, I kind of come up with 20 different value area, night session, trend trade, overbought, oversold. So any given time in this situation, you can take 7 or 8 different type of trades. So the most basic trade, if you don't understand anything at all, every time you see a black dot, sell. That's it. That's all. You don't need to know nothing. I've done the math for you. Every time you see a white dot, buy. That's it. अब इससे आसान क्या करो? जी 50, लेकिन जिस मर्जी चार्ट से करें उस चार्ट के दरमियान में करना है, या 15-10 से करें या 30-20 से. So this is called a candle trade. So basic, most basic type of trade that आप छोड़ दें जी, ये मैं उनके लिए जिन्होंने $50 रोज के कमाने हैं या 100 कमाने हैं. एक ब्लैक डॉट देखें, बाय डाल दें, $50 दें, खत्म किया, कंप्यूटर बंद की, खत्म. उसके बाद एक वाइट डॉट देखा, बाय किया, तो एवरी ब्लैक डॉट कम्स आफ्टर ब्लैक कैंडल. तो दिस इज कॉल्ड कैंडल जो आप कर रही हैं, ठीक है. और उसमें आप, मुझे मज़ा पता कब आता है, जो पहले दिन बंदा कहते मैंने सिर्फ 100 कमाना है, राइट. और 90 डेज के बाद वो कह रहा होता है कि मैंने 1000 कैसे कमाना है, राइट. So ये that's the problem of this business. It's okay. It's a good problem to have, that you are so comfortable making 100, you want to climb the ladder, right? So 90 days पहले आपने भी लाखों का काउंटिंग ना बताया था. बिल्कुल ऐसे. तो हाँ जी. देखिए, to be honest, मैं एग्जाम्पल ये देता हूँ. आज अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का CEO बन जाऊँ ना, मैं शायद माइक्रोसॉफ्ट डबो दूँ. एक लेवल ऑफ स्किल होती है और लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होता है. अगर मैं आपके ब्रेन में उस वक्त ये डाल देता, आप हैंडल नहीं कर पाते. देखिए, मैं पूरी कोशिश ये होती है कि आपको आपके लेवल से लेके चलना है, वरना मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस से चला लवांगे, CEO बड़ा गिरना है. So there is a reason Bill Gates is the CEO, I am not, right? So if I even was given that job, I'll most likely bankrupted, right? So elementary, middle and high. Yeah, so you very, very basic. Now you guys are at a level to make $1,000 a day. कोई मसला नहीं है, आराम ना. लेकिन मैं तो वो भी 5 तो पहले समझा दूंगा, कोई गल नहीं. So candle trade, number 1. Number 2 is we call a night session high, night session low trade. So I'll write all these trade types. किधर गया जी?
कुछ चार्ट में ब्लैक कैंडल्स हैं, कुछ में नहीं है। अगर आप F5 प्रेस कर दें, अभी दिखा ये कि मैं राइट क्लिक करके ना, या F5 दबा दें, इसको F5 दबा दें, अभी ब्लैक कैंडल नज़र आ सकती हैं इन ए सेकेंड। अगर ना आई, अगर डेटा लाइव होना चाहिए, F5 पे शुड कम, नहीं अभी लाइव मार्केट नहीं है, तो वो फॉरन फिक्स हो जाता है। तो लेकिन ब्लैक कैंडल से ज़्यादा डॉट्स पे सेम चीज़ है। सर आप ये YouTube वीडियो में आपने कहा 8 to 10 इंडिकेटर्स उनको फॉलो करें, हाँ। मैंने तो ये इंडिकेटर्स हैं जिनके जैसे ये सारे इंडिकेटर्स हैं। मतलब नाम दोबारा लें, दो चार के क्या क्या देखिए ट्रेंड है, ट्रेंड है, ट्रेंड है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स हैं। या तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि आप इसको हम लिखते हैं ब्लैक कैंडल टू ब्लैक कैंडल, इट 15-10 और 30-20। अगर आपने ब्लैक कैंडल टू ब्लैक कैंडल ट्रेड लेना है तो आसानी से सबसे कुछ ना देखें, आप कहेंगे यार मैंने यहाँ से $20 एक दफ़ा निकाले, फिर 15 निकाल लिए, फिर 20 निकाल लिए, फिर 4, 8, 10 ट्रेड लिए, $100 किया, कंप्यूटर बंद किया। ये हम उसको कहते हैं जिसकी दुनिया पहली दफ़ा खुलती है कि भाई इससे आसान ट्रेड नहीं है। पहला वाइट डॉट देखा, $15 देखे, ट्रेड बंद करो, बंद कर दो। $15 का 12, यानी कि ये यहाँ से यहाँ चली गई ना, $12 बन जाते हैं। ये यहाँ से यहाँ चली गई ना, 25 बन जाते हैं। यहाँ से यहाँ चली गई 37 बन गए, और यहाँ से यहाँ चली गई 50 बन गए। ये मिनट्स में नहीं, माइक्रो सेकंड्स में होता है, माइक्रो सेकंड में काम होता है, राइट। तो ये हम उनके लिए कहते हैं जिनका डे 1 है, उनको बाइंग सेलिंग पता हो कि यार मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये क्या होता है। इसमें एक्सपेरिमेंट करें ना, सेम है यार, तुम दो जितने मर्जी क्लिक कर दो, कुछ नहीं होता, कुछ खराब नहीं होएगा। कुछ होएगा सैम ने कॉल करना, यार मेरे चार्ट बंद हो गए, प्लीज यार सैम कहकर रात 11 बजे भी कर देगा, कोई गल नहीं। तो चार्ट बंद हो गए, कोई गलत क्लिक करता, सिर्फ यह करना जो तुम बंद करो ना, डोंट सेव, so it will just restore everything the way we want it to restore. Number 1, both of you should know our charts do not work with time. Every single person in the planet on the other side, why we are the 1%, we don't use time. These two charts are not 5 minutes, they're not 10 minutes, they're not 15 minutes, they're not 30 minutes, they're not nothing. This works with one API, you can Google it, it's called smart money. If the smart money is in the system, which is called the volume in a bigger scale, blocks are there, it will move or it won't move. Simple. So if you look at my time, you're like, my God, 59, 32, 56, 55, 40, completely different. Sometime, if the smart money is not there, price just goes up on the bar, comes down. It looks at where the volume is happening, where the order flow is there. So now, and by the way, you will never ever have to change anything. Everything is configured for you. You just have to wait. All right, that's my buy. I'm going to buy, I'm going to exit, make my money. Don't have to analyze anything. Just understand how to read it. Right, for example, भाई की नाम थोड़ा? अच्छा जी. ये पढ़ सकते हैं आप? नहीं पढ़ सकते ना? पढ़ना आता है ना? मैं कुछ भी लिखूं बोर्ड पे, मसला क्या है? लैंग्वेज का, ठीक है ना? जिस दिन मैंने आपको, ये मेरा नाम लिखा हुआ है अब्दुल राफे, उर्दू में है, ठीक है? इसकी जो लैंग्वेज है मैंने लिखी है, आपने पढ़नी है। मैंने मैनुअल दे दिया है, आपने आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी है कि यार ये जब लाइन इकट्ठी हो जाए ना तो हमारा सॉफ्टवेयर ये कहता है, ये जब इधर आ जाए ना हमारा मैंने आपको लैंग्वेज टीच करनी है और आहिस्ता आहिस्ता आप टीच हो जाओगे, कोई ऐसा बसना नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, 6 लैंग्वेजेस सीख जाते हैं, राइट? सो सेम आइडिया. सो वंस यू लर्न इट, सो देयर इज ए trade called night session high, night session low. What happens is our market works in 3 sessions, 23 hours a day, morning session, evening session, night session. So morning session is 9:30 to 5 p.m. It's really 5 because futures market, 4:30 is stock market, but futures market closes at 4:59. Evening market opens 6 p.m. to 12 a.m. And then you have one more shift, 12 a.m.
to 9:30 a.m. night session. So just like, so these are different markets. When we are sleeping, Europe is trading. When Europe is sleeping, Asia is trading. So price worldwide moves in that direction because they're like, UAE वाले कब ट्रेड करें तो वो उस सेशन में कर लेते हैं तो उन्हें ट्रेड ही करना है ना. So in a 30-20 chart, 30-20, at an exactly midnight of Eastern time. By the way, all of this software is written in Toronto. We are lucky that we work with New York market. So if you look at 12 o'clock, what it will do is create a line for you. It will say at an exactly 12 o'clock, November 17, today is November 18, to 9:30 is a night session. So you just have to quickly look that by 9:30, what was my high and what was my low. This trade happens maybe once a day. Doesn't have to happen all the time. So you look at 30-20 and quickly figure out two values. Okay, night session low, night session high. ये लो बनेगा ना क्योंकि देखें 12 बज के 12 है उसने ये क्योंकि ये जो आया वो 10 के बाद आया क्योंकि 9:30 से पहले बना है ना. इसमें नाइट सेशन लो बना 45.24, नाइट सेशन हाई बना 49.40. ठीक है. If the market is heading down, generally it would try to test this number. This becomes your support. So night session low, the word is, it becomes your support. And the night session high becomes your resistance. So generally at exactly 9:30, when Daniel says pressure is down, base is down, you can open a trade and you can say if the market direction is down, you can do a sell order and be up by 2 minutes. Whole $200 done in 2 minutes. Right? So you can just look at the direction of the market and just buy or sell. Yeah, if you have to do an average to make sure where the price opens. So the way to do an average is, in this case, the night session low is 45.24. So 45.24 plus night session high is 45.40. $45.64 divided boom. So 45.32. Now you have a number of the middle. If the trend is up from 32, if the trend is up, price should go up and test 40. That's 8 points. Free the tag. If the price is below 32 and heading down, it will go towards 24. 8 point इधर है. 1.50 डॉलर था, 8.400 डॉलर दे, 2.200 दे, फटाफट 100 कड्डे, 100 इधरों कड्डे, 100 like. So this trade happens once a day, only once a day. यानी कि पूरे जैसा होता है ना, पूरे दिन में 12 सिर्फ 2 बजे बनते हैं, 2 दफ़ा बनते हैं, या रात के 12 या दिन के 12. So same idea. Night session high and low trade only comes once a day. But look at in this case, on a Friday, night session low was 24, right? But by the time market opened, it was below night session already. So this trade is no longer valid trade because the price has to open in between. So to be able to go in one direction, right? So you have a 50% chance going up or towards support or towards resistance. So if it doesn't open either or direction at 9:30, you can't take that trade. देखो, अगर price की 24, प्राइस है 40, ठीक है, दरम्यान च असी कढ़िया 32, ठीक है. अगर प्राइस खुली 14 ते रही है तो एक ट्रेड कित्थों लाओगे? है तो ट्रेड बनता ही नहीं है ना, बिकॉज 24 कित्थे ते अगर तो प्राइस इत्थे खुलदी इस साइड ते, राइट, you would have taken a trade either direction, but it opened at 14 at exactly 9:35. It was below night session low. So you can't take this trade क्योंकि तुसी कित्थे trade लाओगे. So that is the type of two trade. So this happens every little 2 minutes. White dot, black dot. White table tennis की तरफ इधर गई, बाय कर दिया, $12 निकाले, इधर गई.
से चार्ट पे देखना है? सर वो अगर आपने बड़े चार्ट से खेलना है तो बड़े पे खेलना है, ये दोनों चार्ट पे आ रही है। नहीं कोई सेफ नहीं है ट्रेडिंग में, कोई चीज़ सेफ नहीं है। तो ये निकाल दें जेन से कि मेरा हर ट्रेड ही सही जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि अच्छा इसमें स्टॉप लॉस क्या है, वाइट आया और आपने लंबा खेला तो ब्लैक पे निकलना है, और ब्लैक आया तो वाइट पे निकलना है। तो लेकिन यहां पर आपने क्विकली मछलियों का फ्लो जा रहा है, हाथ डालें $15 निकालें, हाथ डाला 20। अब ये नहीं कि वाइट के बाद अब मैंने अगले ब्लैक का वेट करना है। डोंट से कि वाइट के बाद मैं दोबारा एक और ले लूं, वाइट पे ले ब्लैक पे ले, वाइट पे ले ब्लैक पे ले, वाइट पे ले, तो एक तरफ में ये नहीं 12 ले लिया ना, रुक जाए। अब ऐसा तो कह रहे कि 8 है, 8 पॉइंट से 14 पॉइंट में नहीं ले सकते, वो में सभी कंफ्यूजन है इस चीज की। किस चीज की? आप बोले कि 32 है, पॉइंट से ऊपर 40 बने, 8 का डिफरेंस। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक नॉर्मल केस में प्राइस अगर खुलती, मैं दोबारा लिखता हूं 45.24 प्लस 45.40, 64 बना ना दोनों का, 64 का डिवाइड हो गया 32। अगर प्राइस खुलती 45.32 से नीचे अगर खुलती इस डायरेक्शन है, लेकिन ऊपर खुलती 24 के, तो चांसेस थे कि इसने 24 की तरफ जाना था, राइट, नाइट सेशन लो की तरफ। अगर 32 से ऊपर खुलती तो 40 की तरफ जाना था। तो यहां पर 8 पॉइंट्स हैं और यहां पर 8 पॉइंट्स हैं, राइट। So if the price opens whichever way, you can judge it. Is it going to go towards night session low or night session high? So just to see कि you have 8 points here, you can take 2. अगर इस साइड पे खुली तो 2 ले सकते हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ अभी शुरू में ना करें, क्योंकि ये जरा कैलकुलेशन में ना जरा आपको क्विक होना पड़ता है। एग्जैक्टली 9:30 मेरा फ्लो किधर है। This is valid for other markets as well? 100%, 100%, एक्सेप्ट नैस्डैक। नैस्डैक में सिर्फ 2 ट्रेड हैं, वो आसान मार्केट में बता देता हूँ। नैस्डैक में आपने ट्रेड लेना है 30-20 पे और ओवरबॉट ओवरसोल्ड पे। हर दफ़ा ओवरबॉट हो जाए 2 पॉइंट ले लो, हर दफ़ा ओवरसोल्ड हो जाए 2 पॉइंट ले लो। इसके अलावा क्यों मंसूर भाई, यही मरता है ना बंदा, उस स्पीड में 1 पॉइंट लेना है। और उसके अंदर भी एक टेक्निक है, टेक्निक ये है कि नैस्डैक को एक डायरेक्शन 25 पॉइंट की ले लेने दें, उससे पहले ना घुसें। मैं आपको बताता हूं कि नैस्डैक की एंट्री बहुत आसान है। अगर आपको इस मार्केट में किसी ने नैस्डैक कर ली और फ्यूचर कर लिया, किंग ऑफ द ट्रेडिंग बिजनेस। 100 मैं अभी आपको तो पहले अच्छा इस ट्रेडिंग से पहले मैं आपको नैस्डैक बता देता हूँ। नैस्डैक क्या है? इंडेक्स फंड है यूएस की 100 टेक्नोलॉजी कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, लाइक फेसबुक, ये 7-8 कंपनियां ही स्टॉक मार्केट को चला रही हैं आज की दौर में। पहले तो होता है ना, फाइजर है, वॉलमार्ट है, बाकी हैं। आजकल सिर्फ 8-10 कंपनियां यूएस स्टॉक मार्केट को चला रही हैं लेटली। अब यहाँ देखें स्विंग कितनी बड़ी आई, ठीक है, ओवरबॉट हुई, नैस्डैक ओवरबॉट हुई ना। इसका आसान रूल है, अगर मार्केट 25 पॉइंट का स्विंग लिया ना तो आपको 2 पॉइंट देगी, नहीं देगी ज़्यादा, लेकिन आप इजीली 2 पॉइंट ले सकते हैं। अगर मार्केट ने 30 पॉइंट का स्विंग लिया है तो आप एटलीस्ट 4 पॉइंट ले लें। अगर मार्केट ने 40 से 50 पॉइंट का स्विंग लिया है तो आप 4 से 8 पॉइंट ले लें। अगर ये यहाँ देखिएगा, आपको पता है नैस्डैक मूव करती है कोई 200 दफ़ा, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ओवरसॉल्ड, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, रोलर कोस्टर है ना। सबसे आसान है, क्यों? आप सिर्फ इस लाइन को देखती रहें कि ये जब 99.9 पे जाए ना, ठीक, पिंच हो जाए और ये नंबर 25 प्लस पे जाए, शॉर्ट डाल दें मार्केट के बटन से। लेकिन पार्ट 2, मेक श्योर एटीएम लगी हो वहां पर, एटीएम 4 टिक्स की या 8 टिक्स की लगी हो, वरना आपको स्टॉप लॉस नहीं है, वो आपका प्रॉफिट टिक है ये। क्योंकि इतना तेज चलती है नास्डैक कि इफ दिस RSI becomes 99 and your overbought is here, more than 25 पॉइंट की स्विंग आई है ना, तो उसने वापस आना है, तो उसमें आपके 1-2 पॉइंट फ्री हैं।
तो अगर दिन में 5 ट्रेड लो, टोटल 5, और ये 200 दफा करती है, $20 क्यों मंसूर भाई? $400 नैस्डैक में 90 मिनट में बन जाते हैं। बंदा कहाँ मरता है कि अभी जिसको 1000 करें, राइट? तो अगेन बार 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 हम एक ही पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। यानी कि उसकी किस साइड पे। सर मेरी RSI 100% है। मैंने जब बात की थी ना, मेरी एक्यूरेसी ऑफ माई, दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ 12 years एंड वी ट्वीक इट बाय द वे। ये आपको फायदा है कि आपकी सब्सक्रिप्शन में आपको पता भी नहीं लगेगा, पीछे से सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, क्योंकि उनके ख्याल से हम लोग जो बैठे हैं वो अगर उनका गेम सीख लिया है और पैसे कमा रहे हैं तो उनका नुकसान होता है। सो इन द लास्ट 12 years दिस इज द 12th वर्जन। सो वी विल लाइक ऑटोमेटिकली चेंज द सॉफ्टवेयर, क्योंकि क्लाउड से आ रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाएगी। सो इफ वी फील दैट आवर हिट रेशियो इज फॉलिंग, कि यार आ नहीं रही, तो हम आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके नंबर्स बदले होंगे, लेकिन ये नंबर आपको पता है कि 99 पे हिट होगा और 25 पॉइंट से ज्यादा की स्विंग है, आप 2 पॉइंट ले लो। नीचे आ गया 0 पे आ गया, 25 पॉइंट है, 2 पॉइंट ले लो। तो सर हर इंडिकेटर्स की सेटिंग्स आप खुद ही करते हैं? आपने कुछ नहीं करनी, हमने क्लाउड के थ्रू आपके कंप्यूटर पे, सैम ने एक दफा कंप्यूटर में लॉग इन कर देना है। आपसे सेटिंग क्या है, आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा $339 पर, आपके ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो बेसिकली दैट्स हाउ वी ऑपरेट, राइट, इन आवर सेंस। जी नहीं, अगली का नहीं, वो पर नीचे आने देना। अब ये वाली स्विंग आई, ठीक है, यहां पर ओवर सोल्ड है, तो ओवर बॉट 99, ओवर सोल्ड पे 0.5, ये ऊपर लिखा हुआ है। नहीं देखिए, एक स्विंग की ऑप्शन है ना, वो जनरली ये होता है कि आपने वहां पर एक स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कि हमें नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी स्विंग लेनी है, ये वी कैंट प्रेडिक्ट दैट, बट जनरली आपने वहां तैयार रहना है। अगर वो रुक नहीं रही, देखिए होता यह है कि जब वो अपनी 20 पॉइंट की स्विंग पे आ जाती है ना, वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, वो आपको एक आध झटका देगी कि थोड़ा सा नीचे आई, वहां से आपको फील हो जाएगा कि प्राइस या बस यहां पर ना उसने आके स्टॉप लिया, ये एक रिजेक्शन विक लगी है ना, इसको आपको पता था कि अगर यहां पर भी आप एंटर हुए होते ना, आपके $20 बन गए थे, क्योंकि आपने $20 का ट्रेड दिया, 4 टिक्स थे, 1 पॉइंट था, $20 का ट्रेड था, तो आपके यहां पर ऑलरेडी 20 से 40 बन गए थे। क्योंकि ये याद रखें, ये जो पूरा बार है ना, पूरा बार ये $250 का है, तो उस बार ने सिर्फ थोड़ा सा नीचे आना है, आपको ATM से बाहर निकाल देगा वो। नहीं, रिट्रेस पे नहीं, आपने सिर्फ अपने आप कंप्यूटर के माउस को, नैस्डैक इज लाइक ए वीडियो गेम। आपने सबवे सर्फर खेली है या टेम्पल रन खेला है? कॉइन्स इकट्ठे करने हैं, गाड़ी आ रही है लेफ्ट राइट, ये सिर्फ वीडियो गेम है, इसमें कोई ब्रेन नहीं यूज होना। मैं क्या देख रहा होता हूँ, 25 चढ़ गए, 25 चढ़ गए, अब मैं क्या वेट कर रहा हूँ, मैं वहां पर मैं कौन सा ATM उठाना है, 4 टिक्स वाला, 8 टिक्स वाला या 16 टिक्स वाला, जी लेकिन देखिए वो एरिया आता है अगर 2 टाइम्स पे चली गई, यानी कि इन बिटवीन की बात कर रहा हूं कि अगर वो दोनों तरफ स्विंग्स आ रही होती है ना, तो वो वेव्स आ रही हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग कर रही हैं, तो स्कैल्पिंग कर रही हैं 2-3 पॉइंट्स की दोनों साइड पे, $20 इधर, $20 इधर, $20 इधर करके $100 किए और खत्म कर दिया। 25 स्विंग। सो मेरा क्या रूल है पर्सनली, मैं क्या करता हूं, अगर स्विंग 25 पॉइंट किया है, आई विल टेक जस्ट 4 टिक्स मीनिंग $20, ठीक है। अगर स्विंग 35 पॉइंट किया है, आई विल टेक 8 टिक्स मीनिंग $40। अगर आपकी स्विंग 50 पॉइंट की है, आप इजीली 16 टिक्स ले सकते हैं। सो स्विंग पे देखना, ये सिर्फ स्पेसिफिक टू नैस्डैक है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर मार्केट व्हाटसोएवर। सो अगर आपकी स्विंग 25 की है, आप 4 टिक्स लो, बाहर आ जाओ, 8 टिक्स लो और 16 टिक्स लो और गेम। अब आप कहते हैं यार मैं इतना सिर्फ $20 के लिए करूं, यार ये क्या बकवास है। सिंपल है, नेचुरल है कि आपने क्या करना है, सिर्फ यहां पर
क्वांटिटियां 2 कर देनी है, रेदर देन आपने अपना पॉइंट नहीं चेस करने। मेरी ये बहस बड़े बड़े ट्रेडर से होती है। They say, oh man, you're cheating, you're scalping, you are supposed to be understanding, you're take. मैंने कहा हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? मनी कमाना है। मेरी अपनी टेक्निक है, आपकी अपनी। आपने 15 पॉइंट की स्विंग अंडरस्टैंड करनी है, मैंने नहीं करनी। मैंने 40 कर करके 100 ट्रेडों में 4,000 निकाल देना है। तो इफ यू चेंज दिस टू 2, this automatically becomes 40, 80 and 160. So that 16 times 2 is कितने $20 का है, या नहीं 4 का है। So this is $80. 80 times 2. इस ट्रेड का एसएल कहाँ पे होगा? 80 ticks. 80 ticks. Because अगर यहाँ से अगर आपके चली गई 80 ticks, then you will lose it. But that is, I have not seen an 80 tick SL. I've seen it, but not often. Yeah. 99 स्ट्रेंथ। लेकिन आपने एक कंडीशन भी तो मैच करनी है ना। 2 कंडीशन मैच कर रहे हैं इस ट्रेड से पहले। मेरी कंडीशन क्या है कि यार मैंने 25 पॉइंट की स्विंग देखनी है। मेरी दूसरी कंडीशन क्या है कि मेरी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 99 हो। उससे पहले मैंने घुसना ही नहीं है। क्यों घुसना है? तो आप मास्टर करें ना उस चीज को पढ़ने पे। आई एम लुकिंग एट 99.5 और 0.5, सेम सेम सेम। $40, $20, $20। नैस्डैक 9:30 बजे खुलती है, 9:40 तक मोस्ट लोग डन हो जाते हैं नैस्डैक के अंदर। तो मतलब ये है कि जैसे 25 पॉइंट ऊपर चले गए, हाँ, तो जब हमने देखे 25 पॉइंट, तो आप सेल करना है और वो अगेंस्ट द ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है। 35 आ गए तो फिर भी सेल मारना है। लेकिन अगर -25 है तो फिर बाय करना है। लेकिन निचली वाली साइड पे नंबर माइनस का आता है तो आपने रिवर्स कर देना है, तो ओवर सोल्ड हो जाएगी। जी जी सर। Sir, this entire training is in the video. 100%, everything. About Nasdaq. Yes, yes. I'm just doing level 2 for those people who either have the trial and because आपका कहाँ शुरू होगा, आपने ट्रायल लेना है, उसको वीडियोस पढ़नी है, वीडियोस के बाद इंस्टॉल करना है, सैम से पूछना है, फिर जाके आप इस लेवल पे आओगे। मैं जरा पूरे सेगमेंट को 2 पे तोड़ देता हूँ बिगिनर्स के लिए। Really, like I know a lot of this is just going over your head, but it's okay, no problem. It's better to. सर जो RSI 99 पे है वो समझ आ गया। जो हाई पे सर 203% बना वो उसका क्या? नहीं, वो है पिछले स्विंग का डिफरेंस। अगर वो आपको बता देती है कि मेरी स्विंग और रिट्रेस का सर जो 32.5 है वो ये नंबर है, ये मिडल में आपको मैं बता देता हूँ कि कितने स्विंग की पुश आई है। 32 हाँ, 32 पॉइंट्स की स्विंग है। ये पॉइंट्स बताता हूँ मैं। तो गोल्ड हो, S&P हो, मिडल नंबर इज स्विंग पॉइंट्स। तो ये आपको समझ आ गया नैस्डैक के लिए। अब नैस्डैक का एक पार्ट 2 है, ये एक पार्ट है, ठीक है। ये क्विकली आप गए, T20 खोली, चौका छक्का मार मुर के आपने अपने $100 निकाले और चले गए, ठीक है। एक उसके अंदर और खूबसूरती है, आप इसका भी छोड़ दें। आप कहते हैं ठीक है, मैंने ना जब आपको हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, अगेन पीपल से कि you're selling it too cheap and I think so too. If you log into your super areas, every morning you have access to this, whether you paid 10,000, 5,000 to 15,000 or 339. So there is no difference in like whoever using is 25,000 one. सिर्फ एक फर्क है, आप मेरे सामने बैठ जाते हो, दैट्स और कोई नहीं। वो अगर आपके पास 1000 है मैं आपको सामने बिठा दूंगा यार। So it means I have people what like okay, if you go over there, उनका स्ट्रैट, मैं जब मुझे होता है, मैं ग्रुप बनाया हुआ मैंने 339 के लिए, आगे स्टूडेंट बिठाया मैंने लाख वाले अकाउंट वाले। वो पता क्या कहते हैं, यार हम 20 अकाउंट क्यों नहीं लेने देते आप हमें, एपेक्स के 3 लाख वाले लेने। और मैंने कहा यार मैं ठीक उधर करता हूँ, बैठ इधर गया हूँ, राइट। सो I have a different mindset, right? Because again, what I'm debating with her, she can do it for 150. You don't have to. You can have $1 million. I don't care. It's not my money. जो कमाएंगे आपका है। मैं आपको सस्ता रास्ता बता रहा हूँ भाई। That's all. So again, idea is because so when you log in, you click here to online access training videos, right? I've logged in. So you have 6 PDFs. So we put together everything in it. You can print this and you have a video 1, video 2, video 3, 4, 5. And it says
1 hour 59 minutes. I don't expect anybody to go through it in one day. आप अभी नहीं हैं तो आपको एटलीस्ट एक वीक चाहिए इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए. So when you click on it, you're going to say click send anyway, and this video is going to start. So you can open a PDF. So let me see if this is going to, is it going to play? No. So anyway, it has audio. So basically it tells you every single thing step by step. You can rewind. You don't understand something, just go back to the video. It'll explain you how to read the news, how everything works. So we have again written it down for as easy to use possible software, right? So 5 videos you have to go through, and the next part is see right here. It's called click here to access live. So 9:30, 9:45, 9:30 पे तो शुरू हो जाता है. 9:30 to 11 is a must. Sometime I go up to 4:30, sometime 2, but 9:30 to 11 you can tune in and you can watch us. Okay, this is another piece of free thing we give you, complimentary. It's called morning areas. So if you click on this, so let's look at morning areas of Friday. So the market will tell you, right here. So it tells you morning area Friday, November 17th, 10 markets. S&P, Dow, Nasdaq, Russell, oil, gold, Canadian, and 3 currency and natural gas. Between them is $10 trillion. So if you ask me extra, we're going to say no. It gives you a full ladder. All the support and resistance numbers ready for you. Before even the market opens. Before the market opens, our AI calculates for the last everything and now this accuracy. If you can say, can you tell me the accuracy of your numbers? I have PDFs for 14 years. I can zip you the file. You can go back because I can't come up with future past numbers, right? 12 साल की PDF मैं आपको दे दूंगा, every day generate होती है. You can just go and match our accuracy of our support and resistance numbers, right? So when I said Nasdaq, अगर Nasdaq 16,000 पे आ जाए ना तो सेल कर दें, वहाँ से 5-10 पॉइंट मिल जाएंगे आपको. ये उसमें आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड की मसला नहीं है, लेकिन आप देखें कि वहाँ रुक रही है थोड़ी सी मार्केट, थोड़ी सी गई ऊपर आ रही है तो वो सपोर्ट है. तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड हाई पे चली जाए ना Nasdaq, इसका मतलब है 300 पॉइंट चली गई है. सो सेल फ्रॉम देयर, दैट्स इट. वो आपका क्वेश्चन. सो दीज एरियाज आर कॉल्ड support and resistance levels for those who are looking at as a technical point. कि इस एरिया के अंदर ये छाता है, ये उसका so it has to either stop here. These are the major sports. Yes, you made like support and resistance levels. S1, S2, S3, S4. You have a price here. Sometime हम सुबह उठते हैं ना 9:30 बजे, पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ थी यार, हमारे लिए तो काम ही बना होता है, हम आंखें बंद करके फेंक देते हैं. मैंने क्या किया, नैस्डैक अगर CPI के बाद अगले 2 दिन ऊपर रही ना, मैंने सिर्फ शॉर्ट किया. पहले दिन नैस्डैक शॉर्ट की, मैंने $1900 एक अकाउंट में से बनाया. कल मैंने नैस्डैक शॉर्ट की, मैंने ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी भी नैस्डैक ऊपर है. दिस इज अनरियलिस्टिक नंबर बाय द वे, दिस इज हाईली रॉन्ग नंबर है, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात आपको एक्सपीरियंस से आएगी कि अगर इतनी बड़ी स्विंग आई हुई है, इट इज आउटसाइड ऑफ द चार्ट्स, इट हैज टू फॉल. देखिए, हम नहीं बैठे, पूरी दुनिया में हजारों ट्रेडर बैठे हैं और हमने उनके साथ जाना है उस डायरेक्शन में, राइट. सो वंस द प्राइस हिट्स दिस और दिस और दिस, स्टे अवे फ्रॉम बाइंग. वंस प्राइस हिट्स दिस एरिया, स्टे अवे फ्रॉम सेलिंग. जो सारा निकल चुका. और हमें इतनी खुशी होती है जब अगर आप मॉर्निंग में ना इधर बैठे हो. जनरली मार्केट खुलती है इधर और बाउंस इसके अंदर करती है, रेयरली इधर से इधर करती है, लेकिन अगर इधर चली गई आपके लिए लाइफ आसान है. सर, मगर इन
लेवल्स पे फॉलो थ्रू बाइंग्स भी होती है जब आप अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमने इस पॉइंट में से यार 4-5 पॉइंट स्कैल्प करने हैं। हम तो यहाँ बैठे ये नहीं कर रहे कि यहाँ से यहाँ आए। तो यहाँ से 16,000 मैंने क्या किया, 16,895 15,895 से शॉर्ट की, वो तो 16,040 तक भी गई, तो वो उसके अंदर कर दिया। लेकिन हमारे पास इनफ 8, 9, 10 पॉइंट्स आ जाते हैं फॉर टू बी एबल to do this, right? So you have to understand that these are support and resistance levels, right? What's the best time for Nasdaq? Nasdaq यही 9:30 से 11, और शाम को Nasdaq आपने करनी है 6 के बाद। So this is all given to you every day. So कि आपके R1 बिगिनर्स S&P 100% ऐसे, क्योंकि S&P आपको टीच करेगी लेवल, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, सारी चीजें टीच करेगी। अभी कोई लाइव खोल सकता है कोई? अभी तो मार्केट बंद है, लेकिन मेरे पास उसका डेटा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, अगर हम you can check the calendar. I don't think क्योंकि market will open now Sunday at 6 p.m. tomorrow at 6 p.m. तो Nasdaq क्लियर होगी जी आपके लिए कि Nasdaq क्या हाल है जी? Some lines are not explained in the videos, so कई बार yellow line और magenta line जो straight lines हैं उसका क्या? सारी हैं, सारी होनी चाहिए। 12 वीडियोस में, 5 वीडियोस में सारी लाइनें कि वैल्यू एरिया क्या है। सर ये व्हाइट डॉट पे आपने बताया कि बाय करना है, लॉन्ग करना है। हाँ जी हाँ जी, और ब्लैक पे हमें सेल करना है। ये बेसिक ट्रेड है बिगिनर्स के लिए, ब्लैक कैंडल टू ब्लैक कैंडल, और इसमें स्कैल्प करना है। $10 $15 लिए, ट्रेड क्लोज किया, 25 पे देखा, क्लोज किया, बाहर आ गए। तो हर एक शॉर्ट पे 20-20, $25 निकालें, ठीक है। स्टॉप है ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी जल्दी टिक चढ़ जाता है कि आपको स्टॉप लॉस का मसला नहीं आएगा। तीसरा ट्रेड, ट्रेंड। You can trade this on either 15-10 or 30-20, but mostly we say trade it on 15-10. 15-10, and where do you buy it? Midline, mid band. So what that means, let me switch to ES. It has 2 rules, 2 basic rules. Make sure background color is bearish. Background color is bearish. Number 1. Make sure you buy, if you, so you have to sell from the midline. So bring your cursor in front of the midline, and whatever the price it's giving you, that's where you short it from. That's it. So trend trade, you just have to confirm कि smaller time frame में और बड़े time frame पे trend down है। अगर trend up है तो you stay in buying, if the trend is down you stay in selling. That's the trend. जी जी, midline से, midline से, yeah, that's the midline. We said, look, my mouse right here, yeah, so generally on your अगर मैं मिड लाइन इस तरह बड़ी करता हूँ, अच्छा ये देखें, ये 2 ब्लैक लाइन है, आसान विजुअल के लिए आसान करता हूँ। ये 2 ब्लैक लाइन है, 2 ब्लैक लाइन्स हियर, ठीक है। वी कॉल दैट अपर बैंड, लोअर बैंड, 2 बैंड्स हैं, इनके दरमियान में एक लाइन चल रही है, राइट, ये लाइन चल रही, दैट्स योर एंट्री पॉइंट, दैट्स इट। सो इफ यू आर टेकिंग ए ट्रेंड ट्रेड, you take it from a midline. So midline to go up, midline to go down. Simple. दोनों चार्ट्स पे ग्रीन होना चाहिए, ट्रेंड सेम होना चाहिए, ट्रेंड बैकग्राउंड दोनों में सेम होना चाहिए। जी, अगर एक नहीं फिर नहीं लेना, दोनों में सेम होना चाहिए। नंबर 2, you have to put a stop loss here. इस ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस 3 पॉइंट्स का लेना है, which is 12 ticks. मीनिंग कि खुदा ना खास्ता आपका ट्रेड खराब होता है,
आपने मिड लाइन से शॉर्ट किया था और ट्रेंड चेंज हो गया आपके खिलाफ, हमें तो नहीं पता ट्रेंड क्या होना है, हम तो उसकी बेसिस पे ले रहे हैं कि ट्रेंड नीचे का है तो मिड लाइन से लें. सो यू कैन हैव टू पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 3 पॉइंट्स कि अगर मेरी प्राइस 3 पॉइंट मेरे खिलाफ गई तो मुझे ट्रेड से बाहर कर देगी. राइट, मार्क कर सकते हैं कि जैसे कि अगर ट्रेंड लाइन से पिक करें कौन से पॉइंट से पिक ये देखें, ये साथ इसने एक प्राइस दी है. अब मैं अपना माउस है ना, माउस का कर्सर मिडिल में ले आया ना, इस दोनों के दरमियान में, तो मेरी प्राइस होगी, लेट मी रीस्टार्ट, रीलोड, एक सेकंड, आपने कहां से रीलोड किया? ये राइट क्लिक करके इट्स लोडिंग. सो यू कैन, इफ दिस एवर हैपेंस यू कैन राइट क्लिक एंड रीलोड. ये देखें, राइट क्लिक, रीलोड, so it will fix your chart. So you're right here, so it's telling me that's my price to sell. So people ask me all the time, Rafay, can you give us an entry? My software is giving you already trend line. So that's your trend line to exit and enter. जी जी, हाँ जी, कंफर्म कर लें उधर. हाँ जी, तो सेल कर दें. और सर ये लास्ट ट्रेड का भी थोड़ा देखने होता है ना? अभी नहीं, ट्रेंड के लिए नहीं, ट्रेंड के लिए कंफर्म करने के लिए 2 टाइम फ्रेम देखने चाहिए. सिर्फ बड़ा, हाँ, 30, 20 एंड 15 है, दोनों देखना है. दोनों देखें. नहीं नहीं, इसके अंदर ट्रिगर्स हैं. नाउ आई हैव टू, एक सेकंड में आपको ना ट्रेंड लाइन का एक इजी एक और देखें. आप शुरू में जब आई, आप कह रही थी कि कुछ मिड बैंड फेल हो रहे हैं, कुछ पास हो रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस से पता लग गया कि अगर स्विंग बड़ी है ना तो वो मिड बैंड फेल होगा. मीनिंग कि अगर आपकी स्विंग बहुत बड़ी आ गई है, मोर देन 20 पॉइंट्स आ गई है, तो चांसेस आर कि रीट्रेस में आते आते वो मिड लाइन तोड़ दे. राइट, सो विद एन एक्सपीरियंस यू कैन टेल which mid band is going to work and which will fail for you. So you have to know कि if your swing is so big, जिस तरह Nasdaq की आती है, मैंने आपको कहा कि स्विंग आपने देखनी है कि अगर स्विंग यहां पर स्विंग गई 14 पॉइंट की, ठीक है, मैं इससे पहले तो पीछे जाता हूं 50. Yes, exactly. So look at in this case, trend changed. So trend was going up, right? It did a 11-point swing. Now it's doing a pullback, retrace, right? And you want to do a long trade. आपने देखा दूसरे वाला भी green था. So this is your entry point. So you put a limit order right here. I'm gonna go and take a 2-point scalp right here. 2 point मैं यहाँ से उठा लूँगा. So in a trend trade, only thing watch out कि how much swing it has gone up. If the swing has gone up 30 points, stay away from a trend trade because it will break that mid band and then you will have a trend change, right? So we need to put the buy order exact on the midline. Midline. 3 points, 100%. You can do this on ATM. You can say 8 ticks profit and 12 ticks loss, and then put a limit order. It would automatically set up everything for you. So this is called the trend trade, that where you're entering in a trend on a 15-10. Sir, ये trend trade लेने के लिए हमें वो night high और night नहीं, वो इसका वो different trade है. लेकिन वो black candle वाला swing ज़्यादा ऊपर चलेगी. नहीं, मैं कह रहा हूँ ये वाली swing, एक swing ये वाली है. तो उसके तो आपकी जो वीडियोस है ना उसमें वो कहता है swing retrace extension, right? So this is called the swing retrace extension, right? And then you have another this then become a extension is bigger than retrace, so this became a swing. So वो आपको mathematically group में बताता है. Yes. So, but again, you have to keep, before I put a limit order in, I normally wait for this number to keep checking कि यहाँ से अब reversal आया है कि नहीं, 11 पॉइंट के बाद आ रहा है 12. So, you know where I generally try to put in my order in? At a first black dot.
कि पहला ब्लैक डॉट लग गया है, नाउ मैं ट्रेंड ट्रेड के लिए तैयार हो रहा हूं, क्योंकि स्विंग सिर्फ 11 पॉइंट की थी या 10 पॉइंट की थी या 8 पॉइंट की थी. सो दैट्स कॉल्ड द ट्रेंड ट्रेड. ओके, only difference between next trade I will write is called the gap trade, GAP. Gap trade and trend trade is the same, 100% same. Only difference is this: in the gap trend trade you still will enter from midline. In a gap trade these dots won't touch the zero line. Like price will touch, but the dots won't touch. So that's called the gap trade. Let me see if I can find a gap trade. Take a look at right here. It did touch the midline, right? Well, look in my BBs. It never touched the midline. Kitna bada gap hai, right? So when you do have a gap trade, it's not touching the zero line. So that's the only. You still take a gap trade with the like a midline. कि मैं जीरो से एंटर करूंगा, यहां से एंटर करना है, ये आपकी एंटर लाइन है. नाउ अगेन विद द ट्रेंड ट्रेड, विद द एक्सपीरियंस यू विल नो एवरी टाइम, लेट्स से यू एंटर इन नाउ, राइट, you come and you miss the trend trade. Every time first mid band hits, second hits, the ratio of trend trade declines. Starts at 100%, goes to 80%, goes to 50%. By the time sixth time mid band has touched, it goes to like 0%. क्योंकि होगा ये कि आपने ट्रेंड से पहले ना पीछे देख लेना है कि कितनी दफा मिड बैंड टच हो चुका है. अगर आप देखेंगे मिड बैंड पहली दफा टच हो गया है तो आपके पास चांस है. अगर पीछे ही 6 दफा मिड बैंड टच हो गया है तो आप कसम भाई कहां से ट्रेड लेंगे, क्योंकि वो पीछे ही देखे. फॉर एग्जांपल आप कहोगे मैं, आपने सिर्फ ये देखा कि राफे ने तो कहा हुआ था कि हर दफा मैं मिड लाइन से एंटर करूं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ऑलरेडी 1 और 2 दफा मिड पास हो चुका है. सो नॉट ए गुड रीजन टू टेक ए, लाइक जनरली टेक 2 or 3 बट देन डोंट टेक ए मिड लाइन ट्रेंड. लेकिन देख लिया करें स्विंग कितनी बड़ी है. लुक एट दिस स्विंग, 11 पॉइंट स्विंग, 14 पॉइंट स्विंग्स, 8 पॉइंट स्विंग्स. So 11 plus 14 plus 8 minus 7 minus 7. So एक्सपीरियंस में आपको ये पता लगेगा टाइम के साथ कि आप मैथमेटिकली क्विकली कि मैंने ये मिड बैंड लेना है कि नहीं. सो ट्रेंड ट्रेड इज एज बेसिक. तो आपके केस में आप स्टार्ट यहां से करेंगे और यहां जाएंगे. डोंट वरी अबाउट नाइट सेशन ट्रेड फॉर नाउ. सो स्टिक टू ब्लैक कैंडल एंड स्टिक टू ट्रेंड ट्रेड कि प्राइस सेंटर में आ रही है और वहां से ऊपर और वहां से नीचे. Fourth type of trade is called overbought, oversold. You can do this on both charts, 15, 10 or 30, 20. Doesn't matter. इसका एक रूल है. Price has to go to 99.9 and 0.5 to have the safe entry. Whether it's on this chart, so you in this you're only watching RSI. So you only thing to look for is RSI, Relative Strength Index, and we have nailed it down 100%. Meaning that our RSI when it hits the 100, it will bounce down up or up. So I'll show you an example on 30-20 and 15-10 both. Sell, simple. Buy, sell. So if you have a swing just like I said for Nasdaq, सिर्फ 2 लाइनें देखते जाएं, वो पिंच हो जाएं, उसको कंफर्म कहाँ से करना, अपने एरिया से. वो मैंने आपको लेटर दिखाई थी कि अगर फॉर एग्जांपल ये आ गई 99 पॉइंट और आपका एरिया भी दूर है, 3 पॉइंट दूर है, 2 पॉइंट दूर, उसको एरिया पे आने दें, वहां से फेंक दें 2-3 पॉइंट के लिए. सुपर एरियस के एरिया मैं साथ लोग आप उसको डेली लिख लिया करें, साइड पे लिख लें कि यार ये मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से मार्केट ने बाउंस करना है. तो बाउंस करना है तो यहां से रिट्रेस लेनी है, तो वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं. सो सेल, बाय, सेल, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, $200, $500, $1000,
मैं कह रहा इतने आसान ट्रेड्स पड़े हैं, आप अपना फेवरेट ट्रेड उठाएं। अब मैं आपको बताऊंगा सारों के बाद कि मैं कौन से ट्रेड करता हूं। बिगिनर्स को पता आपको सारे होने चाहिए, पता आपको सारे होने चाहिए। मैं आपको आज ही बताता हूं। शी joined 90 days ago approximately. This is her 3rd month. She's going to start teaching now. Did you know? We are starting a women's only exclusive program that now she came with zero knowledge, zero. Consistently sat here, consistently practiced, consistent. You know what? At the beginning, they were finding 339 a lot because it's because you don't know me. I could be selling a scam, right? She called me yesterday, and she's like, I wanna buy the $5,000 lifetime now, right? So these are the candidates that I would like to have more and more, because I cannot teach the whole world. Simple as that. Neither can Bilal, neither can Sam. Students like you can do it, and we can give you the business, no problem. We can say, hey, Faraji, इनसे हेल्प ले लें, इनको सारा आ गया, ये सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, आप एक नंबर एक्सचेंज कर लें. So we are growing as a part of the family, part of the team. Like my wife would like to, because this is a male dominated industry, period. 85 to 90% are males, 15%, and some women are reluctant to get into this industry because of this nature. So she has become our first official, where we're sending her female only candidates and say, wherever you're not comfortable, hey, you can learn. So she can teach it over the Zoom. So she's going to do very soon, very private one-on-one tuition as well. So again, I'll in the group, I'll send her number as well. So that's the idea too, because sometimes, it's a bit of a reluctant, a male teacher is there, there's a little bit of a, you don't want to ask the questions or anything, will you be judged or not? So the more female enrollment we can give, it's better for the whole community, right? So congratulations. That again, it's a live example of when she first came. This is a new universe. So 90 days or so. So if you have questions, you can understand triggers, lines. So again, you just have to willingly to put in your interest. If one thing is, after 14 days, if it doesn't interest you, don't do it. Don't force yourself कि नहीं ये मैंने सीखना ही सीखना, सीख जाएंगी, लेकिन कई होता है ना कि not everything is meant for everybody, right? It's not, doesn't make you like I cannot be a basketball player, period. Like I want to play like Virat Kohli, but I can't, right? So not everybody is designed for everybody. So don't get discouraged. Just say, hey, I'll give it my best, and as long as you can control your greed and discipline, we'll make sure our end stays safe. So that is called a trend trade. Overbought, oversold. Next is called diversion. This comes on both charts, 15, 10 and 30, 20. This comes, okay, now look at the frequency. Black candle is happening every minute. Night session happens once a day. Trend trade is happening maybe every 20 minutes. Overbought, oversold maybe every 2 hours. Divergent trade may happen every 5 hours. So the ratio of money goes up and down with these type of trades. Safest, less hit, maybe everybody can make you money, but if the diversion trade comes, you're guaranteed to make some money, meaning 100% of $100. What do I say? I don't expect that you will make $1,000. No, with the diversion trade, you will make a couple of points, no problem. So what I expect from everybody who has enrolled in our program, after 90 days, your eyes should be able to spot a diversion instantly. आप देख सकते हैं ना, फौरन पता लग जाता है ना कि डाइवर्जन, मैं चीख रहा होता हूँ कि डाइवर्जन बन रही है, राइट? सो एक दिन, जिस दिन आपको डाइवर्जन नजर आनी शुरू हो गई ना, आप ट्रेडिंग में, हमारे सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी लेवल होता है. यस, एग्जैक्टली. अब तो आसान कर दिया, हम लाइन भी डाल देते हैं.
पिछले वर्जन में नहीं थी लाइन, राइट? तो लाइन में जो आपने बताया ना बीबी से, तो मेरा कहने का मकसद है अब प्राइस हाई बना रहा है बट बीबी नहीं बना रहा 100% राइट, 100। मैं बीबी से ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ के साथ देखता हूँ, स्ट्रेंथ के साथ देखना आसान हो जाता है। ये देखिए यहाँ तो नहीं, टीवी पे नहीं आएगा। ये स्ट्रेंथ है ना, ये प्राइस है, ये प्राइस आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये लिखा है 4522, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ना साफ करके 4522 लिखता हूँ। ये वाली मैं इसको ट्राई करता हूँ। अच्छा, ये हर चार्ट पे आती है, लेकिन हम 1510 पे जो रेशो है ना उसकी एवरेज 8 पॉइंट्स की, 30-20 पे 14 पॉइंट की डाइवर्जन आती है एवरेज। कोई 15 की आई, कोई 20 की आई, कोई 11 की आई, कोई 9 की आई, एवरेज 14। इन दिस केस लुक, प्राइस वेंट डाउन, ठीक है, एंड you have a price here of 45.20. Your trend is down, your price went down. You can take a trend trade, no problem. So you took a trend trade and you made $50, $100, whatever. Midline से short किया, price नीचे आ गई, ठीक है? Look at this number of 45.22. So price came down to 45.22. Very easy, no problem. Look at the strength. Strength is coming down to आगे, price went back up, you took a mid trend, price went down again. When the price went down, your strength did not go down. So RSI or BBs, this is more advanced, but I keep it simple with strength. Your price went down, went up, went like this, but look at your strength line. Strength went like this. So next number was right here. This is again 42.20. Well, that's almost 23. So this is 42.22. Mathematically speaking, 22 is lower than 23. Price went down. If this is 23, why 22 is higher? Simple. So you just say to yourself that, hey, my RSI and my price is out of sync. Simple. When they're out of sync, it means trend may change. That's the key word, may. Because first thing is, it has a first level of resistance, your midline. It has to break your midline. The moment it breaks your midline, आंखें बंद करें, एक पॉइंट के लिए फौरन ट्रेड डाल दें. So when it's making two lower lows, and the trend changes it to green, sell right here, buy right here, buy kar lein, and make 1 point, 2 points, 3 point, 4 lots, make your couple of $100. But in this case, this happened in 8 minutes, in 15. But sometime it takes an hour, 2 hours, 3 hours to make a divergent trade. So you have to wait for it. So in our office, we have a saying, we get paid to wait, right? So right now, price is, this is a diversion. Let me go. Okay, now see, diversion passed. So you went up, and so right here, I knew the price could change the direction anytime. So if you can pinpoint diversion, in our software, we have it down to 100%. Then you can still start buying from here, first dot, pehla dot, because you have to make sure it will test this midband, but if it crosses that midband, you have free points, right? 1, 2, 4, 5, 10 पॉइंट लें, सॉरी क्वांटिटी बढ़ाएं आहिस्ता आहिस्ता और अपने एक ही ट्रेड में पूरा कर लें. क्योंकि जब तक हम लोग वेट करते हैं, हाँ, ट्रेंड चेंज होगा. देखिए वो तो 100% confirmation है ना, right? So you can start to this is risky point, but you have to make sure one thing. If you take it on the dot, you have to exit here, because first time it could test the midline and come down again, right? Make another lower low, another diversion, right? So I tell students, buy it here after it's green zone, क्योंकि green हो गया तो safe है. लेकिन क्योंकि ये डाइवर्जन आई सिर्फ 7 पॉइंट्स की, राइट? सो
If this happens on 30-20, I'll show you a diversion that happened. A 30-point swing. Oh my God, you were like, I'm done for a week, right? Some people say that एक diversion अच्छा trade लग जाए ना, आपका पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है. Strong confirmation. Yes, strong confirmation इधर आती. अब ये देखें. Look at this number. This is a 30-20 chart, by the way. This happened on Friday at 10 o'clock. 45.14. Next lower low 45.12. Look at my strength. My strength did not make a lower low. Our software will, the first dot will come, my software plot the line for you. कि यार डाइवर्जन लग गई है, अब मैं अनाउंसमेंट आप मेरी सुना करें, डाइवर्जन लग गई है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ. अब मैं इससे ज़्यादा तो आपके घर आके वैक्यूम ही कर सकता हूँ, लाइक और तो मैं रह गया कुछ करने के लिए, राइट. मैं यही कह देता हूँ कि भाई डाइवर्जन लग गई, अब रेडी हो जाओ. अब आपको इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है कि मैं चीख के कह रहा हूँ कि भाई डाइवर्जन लग गई है, ट्रेड ले लो, लॉस आपका है, सब कुछ आपका है. हमारा क्या गोल है? हमारा गोल है कि आप सारों को इकट्ठे ट्रेड किया जाए. ये नहीं कि मैंने उंगली पकड़ के ट्रेड करानी है, क्योंकि जब आप अकेले बैठे हो ना और कनेक्टेड नहीं हो, मिस्टेक्स आएंगी, आप ओवर ट्रेड करोगे. अब मैं चीख के कह रहा हूँ बंद कर दो, तो एक इन्फोर्समेंट फ्री की मिल रही है, राइट. तो ये भी एक फायदा लाइव स्ट्रीम का है कि अब मोस्ट स्टूडेंट्स हु वांट टू बी वेरी केयरफुल इस वाइट डॉट पे बाय करेंगे, और अगर उनको ट्रेल करना आ गया है तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये छोड़ दूंगा, यहां से ये वाला ब्लॉक सैक्रिफाइस कर दूंगा. ये मैंने ब्लैक ब्लॉक्स बनाए ना, रीजन मैं बताता हूं कि मैं, अगर आपने जीरो लॉस लेना है, जीरो लॉस, एक ट्रेड में आप कहते हैं मैंने लॉस ही नहीं लेना, यहां से यहां तक की स्विंग थी 22 पॉइंट की. If you look at from this point, and you have to wait until the trend changes to green, you know, from 41.12 I will enter at 41.23. I have sacrificed almost 10 points just to make 2 points. Some people say, oh man, you're a coward, you can take it from here, but just in case, I want to make sure my diversion is confirmed. So when it changes the trend, your diversion is confirmed. फिर पीछे RSI आती जाएगी, right? So again, my favorite are these two, overbought, oversold, and if you just have to learn to judge it, some will hit, some will miss. If you take it on 15-10, chances are you won't make as many points. Did you? Sir, upper band और lower band oversold, overbought बताता है. हाँ जी, ये नहीं, ये overbought, yeah, exactly, you're right. तो अगर बास इधर टच कर रही है तो RSI ओवरबॉट हो जाएगी, तो वो उसी का अक्स है, नॉट अल्लाह. जो रेड लाइंस और टू ब्लू लाइंस चल रही है वो स्पॉट है. नहीं, ये कह रहे हैं मैजिक बैंड, चैप्टर 5 में है PDF में, मैजिक बैंड, हाउ मैजिक बैंड की कैलकुलेशन चलती है. दैट बिकम्स लाइक थोड़ा साल बाद आपको मैजिक बैंड की वो, लेकिन आप क्योंकि अगर सर इन बिटवीन ही $1,000-1,200 पड़ा है. नहीं, येलो ये वैल्यू एरिया. सो व्हाट दिस टेल्स यू एट 3 PM कि आज पूरे दिन का वॉल्यूम कहाँ रहा. सो वी हैव अ वीडियो 5 इज वैल्यू एरिया, सो काइंड ऑफ टेल्स यू. सर ये बॉक्सेस जो येलो और रेड है और ब्लू और ये क्या है? एक्सीलेंट क्वेश्चन. अगर आपको बॉक्सेस पढ़ने आ जाए ना, और लाइफ इजी हो जाएगी. सो व्हाट हैपेंस इज, थिंक ऑफ इट बॉक्सेस एट दिस वे. ये एडिशनल वे है. फोकस ऑन 30-20 व्हेन द बॉक्सेस अपीयर, नॉट 15-10, वीक होते हैं. सो यू विल हैव 2 boxes coming in even going down market and going up. They are called orders, sell orders or buy orders, right? So think about it this way कि आप एक बस चल रही है यहाँ से ब्रैम्पटन के लिए, ठीक है. सो वुडब्रिज से ब्रैम्पटन की एक बस है. अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है. आपको जाते हुए आपका जो ड्राइवर है वो देखता है यार ऑपोजिट साइड पे लोग खड़े हुए हैं, राइट. तो वो उसका स्कैन करता जो जा रहा है, वो स्कैन ये कर रहा है कि मुझे फटाफट आपको उतार के
इधर आना है क्योंकि मैंने उन लोगों को बिठाना है। तो यहां पर वो क्या बता रहा है, मार्केट नीचे जा रही है ना, वो ये कह रहा है कि यहां पर लोगों के बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, आई हैव टू गो एंड फिल दीज ऑर्डर्स। तो वो एडवांस में आपको पता लगता है कि इफ द मार्केट स्टार्ट्स टू गो डाउन, वो ये 2 बॉक्सेस फिल करेगी, पहले ब्लू बॉक्स फिल करेगी और पहले तो आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, जहां आप ब्रैम्पटन से वुड ब्रिज से ब्रैम्पटन जा रहे हैं, लेकिन आपको वापस आने वाले लोगों का भी पता लग गया क्योंकि ये चलती है डेप्थ ऑफ मार्केट से, राइट। सो बॉक्सेस स्टार्ट टू अपीयर, यू नो कि बॉक्सेस के अंदर उसने जाना ही जाना है उस प्राइस के अंदर, और जितने ये स्ट्रॉन्गर बॉक्सेस होंगे ना कलर में विविड और बड़े होंगे, उतनी ज्यादा प्राइस उसके अंदर जाएगी। जो कलर है, हाँ जी, ऑपोजिट है दूसरी। नहीं, बेरिश में बाय लगेंगे, बाय वाले ऑर्डर लगेंगे और दूसरी वाली सेल पे। वहां से टेक्निकली मार्केट को बाउंस बैक नहीं करना। नहीं, तो देखिए यहां से करेगी ना, तो हमें पता है कि 45, 16, 18 से बाउंस कर जानी चाहिए, तो ऑलरेडी उतने उसने ऑर्डर उठा लिए हैं, अब ये वापस आएगी, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल एलॉगरिथम प्रोग्रामिंग, राइट। फिल हो गए, पहले फिल होगा और देन इट विल गो। आप देख सकते हो एक अर्ली गैस है। अर्ली गैस पता क्या है, जब यहां पर पहला ब्लैक डॉट बना था ना, आप कह सकते हो कि कितनी प्राइस ने नीचे जाना है, वो ये बॉक्सेस एस्टिमेट कर देते हैं आपके लिए। नॉट 100%, नथिंग इज 100, बट हियर यू हैव ए कंप्यूटर टेल्स यू दैट आई हैव ए चांस टू गो एज लो एज बॉटम ऑफ दिस बॉक्स, कि मैंने इतना नीचे गिरना है, राइट। तो उसमें सर अगर देखा जाए, हाँ। S&P एक किस्म का ऑपोजिट ऑर्डर है, हाँ। वो भी इंक्लूडेड है इसमें? नहीं, देखें अभी तो ये लोग सेलिंग पे जा रहे हैं, मार्केट गिर रही है, क्यों किस तरह गिरने जा रही है कि मैं लोगों को यहां से बाय ऑर्डर पे करूंगी। तो आपने जब सेलिंग में रहना है हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, तो आपने पता है कि मैंने यहां से निकल जाना है, मैंने इतना ज्यादा नहीं बैठना कि मैं बैठा ही रहूं। तो जस्ट व्हेन द बॉक्सेस एंड यू काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ द ट्रेड। नहीं, वो दूसरी साइड पे आता है, ग्रीन वाली साइड पे आएगा, क्योंकि वो दूसरी साइड के लोगों की जस्टिफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ले रहा है। यस, सेलर बैठे, रेड एंड येलो आएगा कि मैं चढ़ रही हूं, लेकिन मैंने दूसरी साइड पे भी देखा है कि वहां पर लगे हुए हैं। जो येलो है वो है फिल कर रहा है? नहीं, फिल नहीं कर रहा वो, ये सिर्फ देखिए ये बॉक्सेस है ना, अगर ये इसको विजुअलाइज करें, प्राइस नीचे गिर रही है, लेकिन कंप्यूटर को, एक्सचेंज को पता है कि आई हैव, लाइक आवर सॉफ्टवेयर टेल्स इट, आई हैव अ लॉट ऑफ बायर्स सिटिंग, सो इन व्हिच प्राइस बाय। देखें ये जो आपका डॉम है ना, हमें सिर्फ ये नजर आता है, शायद एक आध नंबर, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है ना हमारा, पूरा सब कुछ देख सकता है। सो एडवांस इट नोस एट इस प्राइस पे कितने बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, तो दैट्स हाउ इट जस्ट गिव्स यू दोस कलर्स। 30-20 सर जो SL है वो टेक्निकली बाय ऑर्डर नहीं, टेक्निकली लेकिन नहीं, लेकिन सेल ऑर्डर यहां तो सेल नहीं, या टेक प्रॉफिट है आपके बाय ऑर्डर्स, अगर आप प्राइस गिर रहे हैं। आप वेट कर सकते, नहीं लॉन्ग, आप शॉर्ट में रहना है, लेकिन कितना शॉर्ट में रहना है, कितनी देर शॉर्ट में रहना है। अगर आप यहां पर एक ऑर्डर में घुसे हैं, ठीक है, आपने सेल मारा है, आपको पता है यार कि आई कैन वेट अंटिल द एंड ऑफ दिस बॉक्स प्राइस को, सो आई काइंड ऑफ हैव कि आई कैन टेक 2, 3, 4 पॉइंट्स, बॉक्सेस आ गए हैं, इट मींस प्राइस हैज टू गो एंड फिल देम, सो कीप लाइक आपका बढ़ाए ना प्रॉफिट अपना। हाँ, रिवर्स लेना है तो आपने यहां पर निकल जाना है, नहीं अभी नहीं होना, वो तो फिर ट्रेंड ट्रेड लेना है या फिर ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेना है। दीज बॉक्सेस जस्ट काइंड ऑफ टेल यू योर एग्जिट प्राइस, दैट एट दिस पॉइंट आप देखते हो प्लस 100 हुआ, 150 हुआ, आप कहते हो आप गैस करना है ना यार ये कितनी ऊपर जाएगी, ठीक है। ये वो गैस की एस्टिमेशन है कि अगर ऊपर गई तो मुझे नजर आ रहा है कि यहां तक जाएगी। आपको एडवांस थोड़ा सा अर्ली बता रही है कि आई कैन सी दैट अगर आपने यहां से शॉर्ट किया है, राइट, इस ब्लैक कैंडल से, और आपने ट्रेंड ट्रेड से यहां से शॉर्ट किया है, यू नो आई हैव टू एग्जिट आउट ऑफ हियर मैन, बिकॉज मैं यहां से निकल जाऊं। हाँ, आप तो पहले अगेन बॉक्सेस लोग वो यूज करते हैं
who are kind of holding the trade a little bit longer. थोड़ा आइडिया हो जाए आइडिया हो जाता है कि कितनी जा सकती ये है. जो हम कहते हैं स्टॉप हंटिंग, वाकई स्टॉप हंटिंग होती है? नहीं, स्टॉप नहीं, हम कहते हैं स्कैल्पिंग का वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है कि हम जाके एक एक दो दो पॉइंट स्कैल्प कर रहे हैं. अगर सर वाकई मार्केट्स स्टॉप हंट्स कर, हाँ, बिकॉज देखें, जिन्होंने वीडियो गेम बनाई है ये, दे आर आफ्टर टू गेट द मनी आफ्टर, राइट. सो उन्होंने, होता ये कभी कभी आप रात के वक्त बैठेंगे ना, आपको फील होगा कि यार ये क्या पॉसिबिलिटी है कि एवरी टाइम आई प्लेस एन ऑर्डर प्राइस गोस अगेंस्ट मी. ऐसा ही होता है ना, आपको लगता है यार कोई डिलिबरेटली बैठा है, मैंने बाय मारा है, वो मेरी प्राइस नीचे आ गई. वो आपका कसूर नहीं है, और ना ही किसी को कोई बंदा बैठा है उसके बाद आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा एजेंडा है. स्मार्ट मनी, if you look at it, it works like a scale. So for example, it's a bet against you and the computer. On the table, you put $50, smart money is going to put 150. तो वो scale हो जाता है. So you put $100, they'll put $300. You put $5,000, they put $10,000. You put $1 million, they'll put 500 million. हमने उसको रिवर्स कर दिया. हमने कहा हम जब ये लोग डालें ना 500, हमें फिर बताओ. हमने पहले नहीं डालना, तो हमने गेम ही टेबल ही बदल दिए, तो इस वजह से हमारा हिट रेशियो बहुत हाई है. सर लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो सर जैसे कि अब अभी आ रहा है, लॉट्स ऑफ इंडिकेटर आए हैं, हाँ, तो वो मार्केट मेकर्स भी वो सारा देखते हैं कि 100%. देखिए, इस सॉफ्टवेयर को ट्यून हम हर साल करते हैं, क्योंकि वो वीकनेस ढूंढते हैं, वो मार्केट का अलॉगरिदम कंप्यूटर से चेंज करते हैं, वो अपनी कंप्यूटर के एआई को बेटर करते हैं. देन वी गेट फ्यू हिंट्स जो आपके लिए मसला नहीं है, तो फिर हम बिहाइंड द सीन चेंज करके, मैंने कहा ना 12 सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो वेन एवर दे ट्यून इट, वी ट्यून इट, बिकॉज हियर इज द बेस्ट पार्ट, दे सेल दैट कोड टू अस टू. देखिए, वो वायरस भी बनाते हैं और एंटीवायरस भी वही बनाते हैं, राइट. दज्जाल की निशानी है. Anyway, getting a little bit into more a little, like, it's a joke for those who belong to a certain community, right? So कहने के मकसद है, the game is rigged, we just want to play it better in their way, right? So that's all. That's all the software is. जी मुझे. हाँ जी, आपने एक बार बताया था कि हम लोग पीछे जाके जब मार्केट बंद है प्रैक्टिस कर सकते हैं. हाँ जी. हिस्ट्री तक पहुंच जाते हैं, हिस्ट्री के आगे क्या करते हैं? देखिए, I will start right now. So connection, पहले मैं डिस्कनेक्ट करूँगा सारे. पहले मैं ना, इससे पहले क्योंकि टाइम हो रहा है थोड़ा कम, मैं आपको $1 लाख महीने का सीक्रेट फार्मूला दे देता हूँ. इसीलिए वी होल्ड. आई होप एवरीबडी स्टिल ऑन. आप क्या करते हैं, मैं क्या बताऊंगा. बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको. मैं एवरीडे स्टेटस में, मेरे घर वाले कहते हैं भाई नजर लग जाए, मैं कहूँगा इट्स ओके. पहले मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि फंडेड अकाउंट क्या होता है, ठीक है. So just like I explained, there are a lot of companies out there, they'll pay you to trade, right? As long as you can take their exam, so-called the exam, paid exam, and this is a very highly profitable company, because if 100 traders write the exam, 99 fail, again because of the greed or other problem. So this company is called Apex Funding. I have nothing to do with it. I don't like, I just promote it because they give you the best possible outcome. They have given out in almost 2 years $58 million. So what you do is you go and sign up with this. This plan, it doesn't cost $150. There's a code out there, JSKDCPTR. This is a code. So this will give you up to 90% off the regular price. So right now, this price is $15 US. Okay? For 25,000? For 25,000. So you can use it for two ways. One way is
आप एग्जाम ना लिखें, सिंपल सी बात। आप हर बार देख रहा हूँ, आई नो आप लाइव करना चाह रही हैं, सॉरी टू पुट यू ऑन अ स्पॉट, आप डेटा के लिए ले लें सिर्फ, ठीक है। सो यू कैन गेट फ्री निंजा, यू कैन गेट फ्री डेटा. So what that goal is, so you should be doing that in month 1 after you sign up and subscription. So what they give you $25,000 of fake money, paper money. It's an exam for $15. Normally it's anywhere from $15 to $150. Just saying the price, all bit in between. Yeah, you have 30 days. Okay. So today is November the 18th to December the 18th. You have 30 days, and what they want to see is any 7 days. I don't care you do it for 20, you do it for 5, any 7 days. So 7-day period. Show them you can make $1,500. Consecutive 7 days or like Any 7 days. Any 7 days. Today is One billing cycle. one billing cycle. Minimum 7 days. You can. I have students who make in one day $1,500. You don't pass. You have. You can do in 1,500. Doesn't matter how you make 1,500 as long as you do it in 7 days or more. I call it between 7 and 29. Let's hear it this way. 7 days minimum, 29 days maximum. You can go 29 days, but they'll charge you $30 again. What's the point? There's no point. So idea is to finish the course in 29 days or less. Once you make, but here's a catch though. Catch is you cannot lose $1,500. So you put a trade, नहीं खराब हो गया, दूसरा ट्रेड डाला खराब हो गया, तीसरा डाला खराब हो गया, नैस्डैक डाले खराब हो गया, आपने अपना अकाउंट उड़ा दिया, सारा का सारा अकाउंट उड़ा दिया, आपके सिर्फ $15 गए, done. You failed the exam, unfortunately you're getting a result, you have disqualified, so-called. So that's the only drawback. So they give you $1,500 to test that if this person can lose, how much they lose, they are allowed to lose $1,500. But there is a very, very difficult point. The point is called threshold. This is the key thing that everybody misses out on. So what a threshold is, you take your first trade. आपने मिड बैंड का ट्रेड लिया, अच्छा ट्रेड उसी तरह लेने हैं हमारे सॉफ्टवेयर से, मिड बैंड, ओवरबॉट, डाइवर्जन, ट्रेड के लिए वो है, आपने एक ट्रेड लिया, प्राइस नीचे आई, आपने प्लस $200 देखा, बहुत खुशी होती है. मोस्ट पीपल विल नॉट क्लोज ए ट्रेड, थोड़ा सा और ले लें, $25 और ले लें, $50 और ले लें, $100 और ले लें, नहीं हुआ जी, वो 200 से बाउंस बैक करके वापस ऊपर चला गया, अब आपका P&L प्लस $100 नजर आ रहा है. अभी आप पॉजिटिव में हैं, नेगेटिव में तो नहीं है, लेकिन you know they say you were greedy, we're gonna penalize you for that. So what they say is when you close that trade, उन्होंने कहा भाई आपका थ्रेशहोल्ड अब $1,400 रह गया. You're gonna send me a message, say, hey, I made $100. What does this mean? Why did I lose my threshold? They saw that you saw $200 and you didn't cash it. So they are going to be very strict on greed. आपका एक टारगेट है, टारगेट 100 का है तो 100 पे क्लोज करें, 25 का है 25 पे क्लोज करें, 12 का है 12 पे क्लोज करें, अन्य वाना उसको छोड़ दें. इसके पास जी चल रहा है हाँ नहीं, लेकिन आपने लेट्स से कि लिमिट से नहीं आ रहा, ठीक है, आपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे आना है, आपने अपने ट्रेड की कोशिश करनी है मैक्सिमम प्रॉफिट पे. सो लेट्स से यू हैव ए लिमिट ऑफ 2 पॉइंट्स, राइट, लेकिन पहले तो लिमिट लोग लगाते नहीं है, ट्रेड डाल के दोनों साइड पे ट्रेड को बगैर लाइफ जैकेट के स्विम किया होता है, ना स्टॉप लॉस का पता ना लिमिट का. सो ओपनली इफ यू, सो दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू वॉच आउट फॉर is keeping your eye on your threshold. So daily go in and check कि मेरा threshold ठीक है, मेरा threshold ठीक है, मेरा, so that's the one thing though. So you have to make sure. After passing the evaluation in the real count, they still have the threshold? Yes, I will come back to it. So number 2,
लेट्स से दैट यू मेड $500, ठीक है, आपने 1500 बनाना था, आपने 500 कमा लिया, ठीक है, बट you still have a loss limit of $1,500. But if you lost some money, right, you have to remake it, that lost portion. So if you have lost it, you now have to do the double effort to make it. So that's called the threshold. So you just have to watch this one thing, is to make sure that you guys keep your threshold under radar. So that is number one. So 2 scenarios. 100 दफ़ा करें, वो तो यही चाहते हैं, हर मिनट बाद फेल हो जाए बंदा, फिर $40 दे। हमारे वहाँ मुकेश भाई हैं, हर 15 मिनट बाद एक नया अकाउंट ले लेते हैं, तो आप ये नाम बहुत सुनेंगे, कहते भाई अरे ओवर ट्रेड हो गया। तो हाँ जी, फिर नहीं होगा थ्रेशोल्ड का मसला, 0। हाँ जी, हाँ नहीं, फिर 50 का लॉस हुआ ना, क्योंकि वो एटीएम पे आपका वो हिट हो गया तो 50 का थ्रेशोल्ड गया, क्योंकि उन्होंने तो 100 का प्रॉफिट देखा था, तो ये आपका यस, तो 50 थ्रेशोल्ड खराब होगा। मैं दोबारा आता हूँ उस पर, मैं के रीजन इसको क्यों प्रमोट करता हूँ। एटीएम यह होता है कि आप कंप्यूटर को कहें कि मेरे लिए काम करो, कि इस प्राइस पे निकाल दो, इस प्राइस पे ऑटो कर दो, वो लेवल 2 लेवल 3 हो जाते हैं, ठीक। सो यू पास योर एग्जाम एंड यू जी सर आप ये बता रहे थे कि ये थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड पे एक बिलिंग साइकिल में हमें क्वालिफाई करना है एग्जाम को, राइट? मेरी रिकमेंडेशन है, जरूरत तो नहीं है। अच्छा, 2 में भी कर आप, लेकिन क्यों जरूरत है 40-80 देने की? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो थ्रेशोल्ड है वो वही रहता है, अनलेस कि आप एग्जाम फेल करें। ठीक है, इन केस जैसे अभी आप किसी का बता रहे थे कि उन्होंने बार-बार वो दोबारा नया ले लेते हैं, तो वो क्या रीसेट करते हैं ना, $40 दे, या तो बिलिंग साइकिल तक वेट, हाँ, या तो देखिए फॉर एग्जांपल 2 चीजें हो सकती हैं। आपने आज मैं जाके $15 दिए, मैं 15 नहीं करता, इसकी 42 एक्चुअल प्राइस है ना, जो 15 तो सिर्फ स्टार्टिंग है, $42 है ना, आपने दिसंबर 17 तक इसको पास करना है, ठीक है। अगर आप फेल कर गए तो दिसंबर 17 को एक और $42 चेंज होंगे और आपका अकाउंट रीसेट हो जाएगा। मीनिंग इफ यू फेल द एग्जाम, इफ यू डोंट फेल द एग्जाम, बिलिंग साइकिल विल कंटिन्यू, इट वॉन्ट रीसेट बाय द प्राइस, हाँ प्राइस वही रहेगी। Exactly. So this keeps going. So most people I say don't go into a multi-billing cycle. 30 दिनों में या फेल करो या पास करो, या दरमियान में ना रहो, अनलेस कि आप डेटा के लिए यूज नहीं, पहली दफ़ा है सिर्फ 15, रिकरिंग में फिर $40 है। अच्छा। सिर्फ ओपनिंग स्टार्टिंग प्राइस 90% ऑफ है, रिकरिंग बिलिंग स्टिल $42 है। आप 50 ले लेंगे, फौरन काम करें ना, फौरन पास करें। अब मैं आपको इसका सीक्रेट बता देता हूँ। आप 10 अकाउंट लें, 5 को लॉन्ग कर दें, 5 को शॉर्ट कर दें, खामोशी से पास कर जाएंगे। मैं आई एम नॉट सपोज टू अनाउंस दिस, एपेक्स विल गेट, जी नहीं, इट्स एग्जैक्टली। तो 40 वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, $40 है। अगर कोई अभी फेल कर गया, हाँ, आज आप पहले दिन फेल कर गए, तो you will go and reset the account for $40. Now you have 29 days left for billing cycle. If you reset your account in 15th day, you only have 15 days before the next bill comes. Like, so some people say मेरे को 5 दिन रह गए हैं renew होने में. It doesn't make sense to reset, right? Why would you? Because you don't have enough time to complete the exam anyway, right? If they reset, yes, and their balance was, let's suppose, 24,900. Yes. They're not going to get 25. Yeah, so it's let's keep it simple. I have heard like there was some different fee, like $100. Not anymore. It's only $40 for reset. I say one thing: keep it simple. Pass your exam in 30 days. उसके बाद अगर आप फेल कर गए हो और आपके वो 10 दिन रह गए हैं तो रीसेट कर लो, उसके बाद कैंसिल कर दो, नया अकाउंट बाय कर लो, 100 अकाउंट ले लो, 1000 ले लो, दे डोंट केयर। हाँ, what that means is if you have a high volatility news day,
they are against it in a value in the performance round 2 में, but round 1 some guys say कि मैंने 10 अकाउंट दिए हैं 15 टाइम्स 10 $150 के, एक बच्चे को सैक्रिफाइस कर दिया, दूसरा खुद ही निकल जाएगा। नैस्डैक पकड़ें, नैस्डैक 100 पॉइंट मूव होती है, एक पे आंखें बंद करके लॉन्ग कर दिया, दूसरे अकाउंट पे शॉर्ट कर दिया, एक काम होगा ना, एक मर जाएगा, एक फेल हो जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, यही होगा ना। सिंपल सी बात है, बड़ा आसान फार्मूला है, इट्स कॉल्ड हेजिंग। हेजिंग इज नॉट अलाउड। सेम टाइम कर सकते हैं कोई फौरन कर दें, फौरन जाके एक पे लॉन्ग कर दें, एक पे शॉर्ट कर दें, सिर्फ अकाउंट बदलें तो फौरन पास कर जाएंगे ना। ये एपेक्स नहीं करता, एवैल्यूएशन पे करता है, फंडेड पे नहीं करता। ओके, सो forget how to pass, that's a different story. आपने पास कर लिया एग्जाम, आपने पहले पे किया, you were the perfect student, you paid $15 and you passed the exam, no threshold, and I have a lot of students who do that first try, सब कुछ clear हुआ, you will get a certificate saying your name, congratulations, they will send you an email link to pay. आपका एक हो गया, ठीक है। $130 they will charge you one time. This is not a monthly fee, आपका कोई और नहीं है, एक दफा पे करना है आपने $130 after getting a certificate. 10 years, forever. 10 years. 10 years के बाद 1 सेंट का है। मैं अगली प्राइस से उठा, ये 130 एक अकाउंट है ना, एक अकाउंट का। अब मैं 10 के बाद में आता हूँ, हाँ, क्योंकि हर एक बच्चे को अलग रेज करना है, पैदा करना है, बूढ़ा करना है, तो सेम प्राइस, बट द स्टार्टिंग प्राइस इज डिफरेंट। No, sorry, every account has a different fee for entry and exit, so this is 15 and 130। सिर्फ FDAX है, जर्मन मार्केट आप ट्रेड कर सकते हैं या नहीं, दैट्स इट। ट्रेडोवेट में जर्मन मार्केट ट्रेड होती है, कर सकते हैं, तो रात के वक्त आप जर्मन मार्केट कर। सो यू गॉट योर सर्टिफिकेट एंड यू वर हैप्पी। राउंड 2 begins, round, I call it the round 2, same rule, $1,500 plus, $1,500 minus, same rule. Only issue is now you have to trade for 10 days rather than 7. So the 3 days more, 3 days become more. And rule number 2, most important rule, cannot trade news. CPI, PPI, inflation, employment, FOMC. Number 2 mein. If they find out that you made $5,000, what happened Friday? If you were a long and the price jumped up, आपने $5,000, क्योंकि एक ही टाइम पे 50 पॉइंट मार्केट बढ़ गई, एंड ऑफ द डे दे विल माइनस इट, कोई ख़त्म नहीं करेंगे वो आपके, वो कह रहे हैं आपने वैसे ही घुमाया और छक्का लग गया, आपके पास स्किल नहीं थी, राइट। तो ग्लेन मैक्सवेल नहीं बनना इधर, इस सारे में आपने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। One. Round 2 is the same thing. Before you can withdraw, before you can ask for money, real account. So you have to make sure you trade for 10 days. हाँ जी, हाँ जी, एक हर अकाउंट की 130 है, तो उसके times 5 But this is one time for 10 years, right? 10 years. Then you need not to pay any subscription. No. You still have to pay my subscription. For sure. Officer, round first में 30 days में 7 day आप हाँ, कर सकते हैं, और round 2 में 30 days में 30 days नहीं है, 10 साल हैं। 10 आप हर साल एक ट्रेड डालेंगे तो फिर 10 साल बाद रिन्यूअल भी उसकी 10 साल। मैं ये कह रहा हूँ, वो ये चाहते हैं कि 10 दिनों से पहले कोई 1500 ना बना ले, क्योंकि उनको भी ह्यूमन साइकोलॉजी पता है ना, ये बंदा आएगा, ये बंदा बैठेगा, ये गैम्बल करेगा, ये ग्रीड करेगा, शहीद हो जाएगा। सिंपल सी, उनको इतना, उनको वो बेवकूफ़ नहीं बैठे कि आपको फ्री के पैसे दे रहे हैं,
उनको ह्यूमन साइकोलॉजी पता है कि पहला तो 7 दिनों में किसी ना किसी तरह कर दिया, हेजिंग कर दी, ये कर दी, राउंड 2 में जी जी ये जब इनके साथ राउंड 2 में आके जब रियल मनी में आ जाएंगे, हाँ जी, और हमने फर्ज करें तो हमने एक महीने में $100 पर डे के हिसाब से 2000 कमा लिए, तो पूरा सारा आपका है। तो वो इसमें इनका कमीशन कोई नहीं होगा? कुछ पहले $25,000 पे 0 कमीशन है। अच्छा, उसको हमने फी दे दी। हाँ, उसके 25,000 जो है पर ईयर के लिए है, फॉरएवर के लिए। पहले 25,000 पे कोई आपका कमीशन नहीं है, उसके बाद 90-10 है। 90 और 10। हाँ एग्जैक्टली। मैं 2 चीज़ों पे स्ट्रेस करूंगा, 3 चीज़ों पे। कमीशन को भूल जाएं, ठीक है, नहीं, नंबर 2 कमीशन फीस को भूल जाएं, एंड नंबर 3 डोंट वरी अबाउट कि मैंने काम किया, उन्होंने भी तो कोई रिस्क लगाया ना, मैं सिर्फ उस तरह देख रहा हूँ कि ये हाँ यस। अच्छा सॉरी, तीसरा पॉइंट ये था टैक्सेस को भी भूल जाएं। हाँ नहीं क्वेश्चन आ जाता है यार, मैंने इतना कमा लिया तो मैं इतना टैक्स पे करूँगा। नहीं अब मैं बता रहा हूँ, टैक्स है कैनेडियंस के लिए, ये टैक्सेबल इनकम है, आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा एंड ऑफ द ईयर। कुछ लोग इसलिए नहीं आते कि टैक्स पे करें, ओ भाई कुछ कमाओगे तो टैक्स पे करोगे, हैं $100 कमाए 30 उनका है, CRA ले जाएगा आपसे। यूएस को अगर यूएस सॉरी, अगर यूएस 100 बन रहा है तो उसे 100 कैनेडियन ट्रीट, लेकिन अगर पार हो जाता है, अगर यूएस अगर आप $100 बना रहे हो तो उसे कैनेडियन लेके चलो तो जो डिफरेंस होता है टैक्स, हाँ 30% में वो असल में टैक्स को एक्सचेंज में कटवा रहे हैं कि जो मुझे ऊपर की कमाई होगी, मेरा 100 देखूंगा तो 100 कैनेडियन आ जाएगा। ये आपका अकाउंटेंट बताएगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आपके ये सारे। तो टैक्स की शुरू में ये 3 चीज़ों की स्ट्रेस ना लें। हाँ जी ओ नो प्रॉब्लम। पर ट्रांजैक्शन कितनी होगी? फर्ज करें मैं $50 से करना चाह रहा हूं, $2 छोटा ग्लास $2 का, बड़ा $4 का। अच्छा, बस माइक्रो $2 का कमीशन। $200 मैंने दिए और उसमें मेरी 6 ट्रांजैक्शन थी जी, तो वो उसमें $2 से $4 पर ट्रांजैक्शन। मैं आपको अभी निकाल के दिखा देता हूँ ट्रेड ऑफ वेट की। नहीं स्प्लिट तो नहीं, कमीशन तो पूरा उनका है, हर ट्रेड पे कमीशन लगता है। आप आर ट्रेडर की ऐप खेलेंगे ना तो वो परफॉर्मेंस के अंदर आपको बता देगा। यहाँ अभी तो मेरा कोई ट्रेड ही, सो राइट हियर इट शोज यू कमीशन फीस। अगर ये तो रिथमिक का है, हाँ ट्रेड ऑफ वेट की वेबसाइट से पता लग जाए। तो राइट हियर इन दिस कॉलम टेल्स यू, इफ यू लुक एट माय स्टेटस, मैंने यहाँ लिखा हुआ था कि 32,000 कमाया और मेरा कमीशन कितना था $200-300, तो GFF से कम ही है, बहुत कम है। सो at the beginning, don't worry about 3 things, just for everybody who's listening. Don't worry about tax, don't worry about commission, and don't worry about समझने के लिए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जैसे ये हमने लिया अकाउंट जो भी है, ठीक है, तो $1,500 का थ्रेश है ओन है, और अगर हमने क्लियर कर लिया उसके बाद फिर ये तो 7 दिन में करना है, 7 दिन एटलीस्ट मिनिमम होने चाहिए। हाँ जी, ये evaluation को, तो आगे फिर 10 दिन the performance account is minimum 10 days. Cannot trade, cannot request a payout before 10 days. That's the word. Meaning आपने, for example, मैं example देता हूँ, आपने सर्टिफिकेट आने के बाद ना, आज आपको सर्टिफिकेट आया नवंबर 18 को, ठीक है। अब आपके पास पहले तो 2 दिन 19 निकाल दें, वीकेंड निकल गया, ठीक है, 18 वीकेंड निकल गया। अब 20, 21, 22, 23, 24 ये एक वीक आया, ट्रेडिंग डेज में निकाल रहा हूँ। 25 और 26 फिर डन, ख़त्म हो गए। अब मैं पूरा कर ही देता हूँ, 27, 28, 29, 30, ठीक है। आपने 5 दिन यहाँ ट्रेड किया, ठीक है, आप बहुत अच्छी ट्रेडर थी, आपने यहाँ 700 निकाला, ठीक है। आपने कहा मैंने कल ऑलरेडी कर दिया, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, 21 को मैंने ट्रेड नहीं किया। आपने यहाँ फिर 700 निकाल लिया, ठीक है। अब आपने 1400 कर लिया, फिर एक छुट्टी ले ली, फ्राइडे को 400 निकाल लिया, 7, 7 दूनी 14 और 4, $1,800 आपने कमा लिए, ठीक है। अब आप ये सिर्फ देखें ट्रेडिंग डेज कितने हैं, 1, 2, 3, अभी भी 7 दिन बाकी है, ठीक है। अब आप इधर कुछ करें, इधर करें, इधर करें, बेशक इन दिन माइक्रो कर लें, $5 ले लें, एक टिक ले लें, मैं उसका भी फार्मूला बता देता हूँ। ये कर दिया आपने, 10 दिनों में
उनको $1820 कर दिए, ठीक है। उनकी वेबसाइट पे जाएं, विदड्रॉ करें, वो आपको सारे दे देंगे, डन। ये सारे 1820 आपके हैं, उनका कुछ नहीं है। राउंड 2 नहीं है, बस आप ही के पैसे हैं अभी। कोई राउंड 2 में सिर्फ जो कंडीशन है 10 दिन ट्रेड। वाइस पे आ रहा है, वाइस.com। उसमें भी हम 1500 लॉस नहीं कर सकते। हाँ, वही आपकी राउंड 1 जैसी है कि लॉस नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। नहीं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रैप इन्होंने यहाँ पर भी स्टेप किया हुआ है हमारे लिए। मेरी रिकमेंडेशन है कि $1500 उसके अंदर छोड़ दें, ठीक है। विड्रॉ $1500 ना करें प्लीज। रीजन उसकी ये है, ये सारे $1820 आपके हैं, ठीक है, जितने आपने कमाए। लेकिन अगर आपने 1820 में से, मेरी रिकमेंडेशन है कि 1500 हमेशा उधर छोड़ी रखें, हमेशा उनके अकाउंट में पड़ा रहे, ताकि आपके पास बफर रहे, क्योंकि ये सारा आपका बफर है। लेट्स इसकी जो रिकमेंडेशन है ना कि वहां $3000 करें जी, ठीक है। पहले $3000 बना लें, 1500 ले लें, फिर उसको बड़ा कर दें, फिर 1500 ले लें, फिर 1500 कर लें, तो हर 3000। अच्छा, अपना टारगेट ही सेट कर लेना कि मैंने 3 के बाद विड्रॉ करना है, दैट्स इट, नथिंग। इसके बाद खत्म हो जाता है, 1500 के बाद जीरो खत्म हो जाता है। फिर जो अच्छी बात है, उन्होंने देख लिया कि इस स्टूडेंट ने, इस ट्रेडर ने एवेल्युएशन भी पास कर लिया, सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब वो कहाँ से पैसे कमाते हैं, वो सीक्रेट ये है, वो आपके ट्रेड कॉपी करते हैं। उनका सॉफ्टवेयर आपके ट्रेड की फोटोकॉपी करता है और वो मिलियंस ऑफ डॉलर पे ट्रेड मारते हैं कि ये बंदा इतना प्रिसाइज है, इसकी हिट रेशो 80% जा रही है, आई एम गोइंग टू कॉपी इट। सो दे कैन, उनको भी तो एक फायदा हो रहा है ना। सो दे कैन से समहाउ दिस पर्सन इज एनालाइजिंग। उनको तो बैठे बैठे एक फ्री का ह्यूमन मिल गया कि राइट, उनको अगर आपको 1800 दे रहे हैं, शायद उसमें से वो 18000 कमा रहे हैं, राइट। सो it's a win-win situation for both. So they will copy your trade, and they say that if we find that you're a good trader, we will copy your trade. So आप ये नहीं कह सकते कि, लेकिन आपका क्या फायदा है, आपने कितने पैसे लगाए, 130 और 40, $170 आपने इन्वेस्ट किए और $17 आपने, 17 दिन आपने इन्वेस्ट किए, and you can start making free money actually. Now I'll come to पहले जो अकाउंट लिया था वो तो फॉरएवर 80% भी चल रहा है हर मंथ। हाँ, नहीं, लेकिन उसको पास, हाँ, उसके बाद 80%, उसके बाद 80 नहीं, वो 80 चलेगा, 80। लेकिन आपको पास कर लेना चाहिए अभी तक, आप पास के आगे जाएं। उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन में फायदा क्या, उसको कैंसिल करें, अगर नहीं करना तो नया 15 का ले लो, वो Sir, now I'm coming to the $100,000 point at the exact precise, which I have done. When I signed up, somebody gave me a challenge. Can you show us how to do it, right? मुझे किसी ने टिकटॉक पे लिख दिया, भाई छोटे अकाउंट करते हो, बड़े करके दिखाओ। वो मैं बड़ा भी कर रहा हूँ भाई, लाइक मेरा स्टेटस देख लो। Let's suppose, mathematically speaking, mathematics में आपको exactly एरर रेशियो से भी बताऊंगा, एग्जैक्टली। लेट्स से यू बाय वन अकाउंट, मैं बेसिक से शुरू करूंगा, एकदम लाख पे ले आऊंगा, याद रखिएगा। $15 का आपने एक अकाउंट लिया, आपने 2 दिन बाद फेल कर दिया, ओह माय गॉड, आई लॉस्ट $15, ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं। आपने ट्रेड मारा, अगर आपके GFF होते, AMP होता, इंटरेक्टिव ब्रोकर होता, $1500 में 4 गालियां और 6 महीने ये दुकान बंद रहती है। मैं आपको बताऊं, इतना $1500 का इफेक्ट होता है, क्योंकि रियल मनी है यूएस के। $15 तो समझेगा इस वक्त पॉपुलर से एक पिज़्ज़ा नहीं आता, लाइक स्लाइस भी नहीं आ रहा, 15 की मिनिमम वेज है। सो $15 लूज कर रहा और 1500 में लूज करने में बड़ा फर्क है। सो व्हेन यू लूज $1500, योर मोटिवेशन इज डाउन। एक गाली मेरी, दानियाल की, सॉफ्टवेयर की, इंडस्ट्री की, एंड एवरीथिंग इज डन। So you lost $15, you're like, no, I've learned it, and I'm going to go back in and I'm going to try over and over and over again. Even if you fail 10 times, you still lost $150. So that's a benefit of it. So
Let's suppose, now here's the math. You should, first of all, have a target of 20 PA accounts. That should be your target in 90 days. After you know the software, after you know you've been trading, you know how Divergent works, how everything works, आपको सॉफ्टवेयर समझ आ गया है, अब आपका एक पैसे कमाने का गोल है और ख्वाब है, और मैं आपको पूरा करवाता हूँ. आप अपने ज़हन में रखें कि मैंने ना 20 अकाउंट पे लेके जाना है, ठीक है, एक करके एक को उसको आगे ले जाएं. आप एक अकाउंट खरीदते हो 15 का या 40 का, अभी तो 15 का लगा हुआ है, उसमें 130 पे करते हो, $145 आपकी फीस है, एक पास हो गया. आप दूसरा पास करते हो 145, आप तीसरा फेल कर देते हो 145, यहाँ सिर्फ 15 गए. करते 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 बहुत एक फेल, उसको पार्क करते जाए, आहिस्ता आहिस्ता पार्क करते जाए. इवेंचुअली 60 दिन में या 30 दिन में ना आप पास कर लेंगे सारे. राइट, सो let's say if you spend, you buy 50 accounts. How do I resume this? Meaning just go on TikTok? Yeah. It got disconnected? Yeah. Live? Yeah. And just go live. Abhi disconnect हुई? Okay. We were looking at it. Okay. So I'm going to give you a full target of, so आप सारों का टारगेट होना चाहिए कि मैंने 20 अकाउंट पास करने हैं एपेक्स के, ठीक है. बेशक एक एक करके करें, कॉपियर से करें, कॉपियर भी मैं इसके बाद बता देता हूं. आहिस्ता आहिस्ता 20 अकाउंट छोटे वाले पास कर लें, $15 वाले, ठीक है. और लेट्स से आपने $15 पे किए, प्लस 130 पे किए, 145 में एक अकाउंट कर दिया, 2 कर दिए, कॉपियर से किए, सिंगल किए, नैस्डैक से किए, क्रूड से किए. Who cares? How you did it, I don't want to know. I don't care. Hedging से किए, doesn't matter, पास कर दिए. और उसमें फेल भी किए, एक लिया निकल गया, दूसरा पास हो गया, चौथा फेल हो गया, 8वां पास हो गया, 10वां फेल हो गया. आपने 50 अकाउंट बाय किए. अब ये मैथ देखिएगा कितना पावरफुल है. एक अकाउंट की बाइंग कॉस्ट थी, can I get an actual calculator so it'll make my laugh because it's gonna get pretty, क्योंकि 1 लाख का नंबर बड़ा है. और भाईजान किस कोई यार कैलकुलेटर दे दो मुझे. पासवर्ड क्या है? 2576 और जी कौन? ओह जज़ाकल्लाह. All right. So yesterday on my status, I wrote, if a serious trader, a serious person wants to make $100,000 a month, all they need is $5,000. And I broke down the math that if you have $5,000 USD, and again, I'm not going to get into greed and emotion and human behavior. That is up to you. आपने 50 अकाउंट लिए थे और क्या था पासवर्ड जी? नहीं मैं अगला ज़रा करना है. ये तो 750 पता है. 2576 $750 USD ये इन्वेस्ट हुए आपके पास करने में, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है. आपने हर अकाउंट की 20 अकाउंट पास करने थे ना, क्योंकि 30 फेल भी तो कर दिए, फौत हो गए, कोई इधर फौत हुआ, कोई 1200 के बाद फौत हो गया, कोई. तो आई गिव रियल लाइफ एग्जांपल. माय वाइफ laughs at me. हमारे घर में कोई बर्तन टूट जाए ना, मैंने कहा 1 पॉइंट कास्ट हो गया भाई. लाइक वेकेशन पे जाना 50 पॉइंट की वेकेशन है. इट्स ए कर्स, दैट्स अ प्रॉब्लम. सो यू विल पे 20 times 130. 30 अकाउंट के आपने $2600 ये इन्वेस्ट किए. आपने प्यार से इसको बड़ा करते करते, इट्स लाइक ए क्रॉप. आप लोग तो उस इंडस्ट्री से आते हो जो जिम्मेदार है. किसान कितनी मेहनत करता है, राइट. अगर उतनी डिसिप्लिन इसमें डाले ना, एक सॉफ्टवेयर आपको 1 टाइम लेना पड़ना है $150 का, और एक सॉफ्टवेयर है $50 का. इसको मैं कहता हूँ ड्यूल लॉगिन, और इसको मैं कहता हूँ ट्रेड कॉपियर.
3550, ये आपने 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में 20 अकाउंट पार कर लिए, ठीक है। लेट्स से 3 months, 300 यूएस के टाइम से आपने $900 मुझे भी देना है, क्योंकि मैंने भी तो कुछ खाना है। 4450 आपकी एक इन्वेस्टमेंट आई, regardless of time, money, I'm not counting hours. Let's look at this number and say, you know, you invested $5,000 overall to invest into parking 20 PA accounts, right? This is where the fun begins. This software, it's called Trade Copier. I'm going to open it right here. Okay. This window right here will cost you $150 one time. Okay. This is called the Trade Copier. So this is a feature of NinjaTrader? This is a feature of Apex. Right. You can copy GFF, you can copy TradeOwait, it's a Apex and NinjaTrader working together. So I just have to pick my instrument, I have to pick my leader account, and then I pick my follower accounts. You can say follow 5, follow 10, follow 20. It can go both ways. You can pass together, fail together. Like it's a group effort. एक में मेहनत करें, बाकी खुद ही निकल जाएंगे, या एक गलत ट्रेड डाला सारे फौत हो जाएंगे, right? So it can go, scale can go both ways. So let's say I have 20x PA accounts of $25,000, right? जैसे ये आ जाए ना, आपने Nasdaq नहीं करनी, आपने ES नहीं करनी, गोल्ड नहीं करनी, आपने सिर्फ माइक्रो करना है। ये बांध लें कि इस छोटे अकाउंट पे माइक्रो अलाउड है। अगर आप समझ लें कि आपको सिर्फ माइक्रो ही अलाउड है, आपको रेगुलर अलाउड ही नहीं है, ठीक है। MES, MNQ, MGC, M क्रूड ऑयल, RT, M2K और कौन सी मार्केट है, बस यही मार्केट्स हैं, राइट। सो माइक्रोस, बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज यू आर अलाउड $1,500 cushion, right? 1,500 बहुत होता है माइक्रो में, बहुत ज़्यादा होता है, minus $1,500. You pick a trend trade, right? Or divergent trade. All you have to do is make only $50 in one account. If you just make, now I'm going to start, this is where the competition starts happening. You made $50 times 20 accounts, you made $1,000. कल मैंने क्या किया है, 20 अकाउंट है, 20,000 कमाया, मैं बड़े में कर रहा हूँ। You start making $10. अच्छा, ये मुझे एब्सोल्यूट ऑनेस्टी से कहेगा, हम माइक्रो में 50 नहीं कमा सकते? कर सकते हैं ना, 50 तो आप भी कर लेंगी, 1000 का मुश्किल है, 50 कर लेंगे ना। माइक्रो में $5, $10, शाम को नैस्डैक का $2। मैं इतनी इसको कह रहा हूँ कि फजूल कर दिया, मार्केट रोल दी है कि बंदा कहेंगे यार ट्रेडिंग ना करो, कोई और कर लो। लेकिन पावर ऑफ मैथमेटिक्स कि अगर आप डिसिप्लिन रहें, 1 पे 50 किए 1000 बन जाएंगे, ये 100 कर लिए ना, ये $2,000 बन जाएंगे। a day I'm not saying a week or a month, a day। आपकी इन्वेस्टमेंट आई थी 5,000, जब आपने कल मुझे सॉफ्टवेयर के लिए फ़ोन किया ना, मेरा आइडिया ये था, अभी मेरा सॉफ्टवेयर ना लें, मुझे आपके अभी आप अपने PA पास करें, इन्वेस्टमेंट PA में करें, PA पास करके सॉफ्टवेयर कल भी मुझसे मिल जाएगा, मार्केट भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, मैं आपको पैसों की गरज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट PA की तरफ करें। 20 PA करके उधर ले आए। अब आप देखें कि 2000 और आपने 21 दिन ट्रेड किया है, दैट्स $40,000 इन 1 month। 1 month। कोई हमने, अब कहाँ पर लोग मर जाएंगे? ओवर ट्रेडिंग, ग्रीड, इमोशंस, या 100 का, अच्छा किसी दिन मेरे 20 हो गए, मैं माइक्रो कर रहा हूँ, और माइक्रो में मैं परफॉर्मेंस में करता हूँ सिर्फ क्योंकि फ़ायदा ही है। आपने ओवरबॉट ट्रेड लिया, अब मैं आपको ट्रेड की एग्जांपल बताता हूँ। आपने ओवरसोल्ड ट्रेड लिया, 99 पे लिया,
सॉरी 99 पे ओवर बॉट, 99.5 और 0.5 पे ओवर सोल्ड लिया. मार्केट गोज अगेंस्ट यू. अब 99 पे ड्रैग हो जाती है ना कई दफा. इफ इट ड्रैग्स यू 20 पॉइंट्स, you know you're only in loss $100, not whole like $1,000, minus $100 होगा, right? So ये जो $1,500 है ना, इसकी पावर बहुत सा है इस ट्रेड के अंदर. अगर आपका ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है, 3 टिक्स है ना, $3.15 जाएंगे. अभी भी आपके पास थ्रेशोल्ड है. अगर आप ओवरबॉट ओवर सोल्ड में एवरेज कर लेंगी तो छोटा अकाउंट माइक्रो. अगर किसी ने, मैं क्या कर रहा हूं, लाइव एग्जांपल देता हूं. आई हैव 20 अकाउंट्स ऑन 25,000 एंड आई हैव 20 अकाउंट्स ऑन 300,000. 300,000 में मेरा थ्रेशोल्ड बन जाता है $7,500. So 7,500 is a lot of. So what I did was, yesterday I did a few days ago I did a short trade of NQ. 7,500 in how many days? No. नेगेटिव थ्रेशोल्ड. यार 7500 बड़ा थ्रेशोल्ड होता है. मार्केट एक डायरेक्शन में भी जाए ना तो मैं मरूंगा नहीं. मैक्सिमम 1100-1200 के बाद एवरेज कर लूंगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट एंड विद डिसिप्लिन एंड यू हैव 20 परफॉर्मेंस अकाउंट्स, अगर आप $10 कमाएंगे तो $200 डेली. और यार हम आए किस लिए थे इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में? $100 रोज कमाने के लिए. क्योंकि 100 भी कोई ऑफर कर दे तो बड़ी बात है, राइट? और मैं आपको ये कह रहा हूं कि $1,00,000 कमाने के लिए ना पर मंथ आपको सिर्फ माइक्रो में ही ये सिर्फ $250 चाहिए. सो टेक दिस नंबर, 250 times 20 is $5,000. $5,000 a day. और खुदा की कसम $250 बनाना इस सॉफ्टवेयर से ना मजाक है. एब्सोल्युटली 250 के बाद उठ जाना. और मैं माइक्रो में बात कर रहा हूं. अगर आप 21 दिन ट्रेड करें कंसिस्टेंटली, $1,05,000 बनता है. मैं आपको पे आउट्स दिखाता हूं लोगों के एपेक्स की वेबसाइट पे. हाँ ले सकते हैं, लेकिन जब आपने ट्रेड डालने हैं तो इकट्ठे डालने हैं. मीनिंग कि फॉर एग्जांपल आपको मैं जो सॉफ्टवेयर बताया था, तो आपने जब माइक्रो में एक ट्रेड लिया, 20 एवेल्युएशन भी इकट्ठे पास कर सकते हैं आप. वही है. आप उससे पहले भी ले सकते हैं. मतलब नहीं यार देखें, आप इसको 10-10 करके ले लो. देखो पहले 5 ले लो, वो 5 को आगे पहुंचा दो, फिर जाके 5 ले लो, उनको आगे पहुंचा दो. क्योंकि वो 20 उड़ गए ना तो अब इकट्ठे ही चले जाएंगे, राइट? सो पास करते जाएं. दैट्स इट. सो एक ही जो हमारा सुपर एरिया है उसी के साथ अटैच हो जाएंगे 5 या 10 अकाउंट. 100 अकाउंट अटैच हो जाते हैं, कोई मसला नहीं. नहीं तरीका कुछ भी नहीं. आपने जाके सिर्फ बाय करना है, आपके ऑटोमेटिकली अपीयर होने जाएंगे. आप अपने ईमेल में जाएं, एक अकाउंट और बाय कर लें तो आपके निंजा में एक अकाउंट और शो अप हो जाएगा. मेरे 20 भी तो शो अप हो रहे हैं जहां एक नहीं एक ईमेल, एक क्रेडिट कार्ड पे 20 परफॉर्मेंस अलाउड है और अनलिमिटेड एवेल्युएशन अलाउड है. सो नो प्रॉब्लम, आप बाय करें, एक करके बाय करना होता है. सो लेट्स सी. This is one of our first students, because I introduced this program in Apex on September 26th, right here on the announcement. These guys were so angry at me. They're like, बता तो देना था कि Apex बोलने लगे हो. उनको पता ही नहीं था कि कालें आनी शुरू हो गई कि क्या है Apex. So everybody, wasn't. And I have to give a credit to one of our students named Baljit. He's the first guy who says, you know what, try it. And then I said, hey, this is a really mathematically, it makes sense. It's better than GFF. It's free data. Look at this guy. November 1st, this year. This is 100% genuine. अच्छा नहीं मैंने असल में वो दिखाना है कि इनका नंबर ऑफ. So this is Tahir, by the way. This is how you get. I just posted his first payout of. So 1,500 he got first time. ये आपकी सर्टिफिकेट है. हो जाएगा इंशाल्लाह. आप सिर्फ सिस्टम फॉलो करें और बिलाल से कहें कि सिखा के उठे.
अब बिलाल भाई की क्लास होने वाली है। बहुत अच्छा। So that's Bilal bhai, by the way. So he does coaching, one-on-one tuition. So again, while I am a presentation person, technical I do all the time during every day. But I am like just like आप ladies में आ जाएंगे, मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा स्टूडेंट आ जाए ना, आप भी टीच कर दें, कोई बात नहीं, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, आप ही का पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, मुझे सिर्फ अपने 339 से परवाह है, राइट? So look at this person, Amit from Illinois, 20 accounts, $8,000 payout per account, $160,000 this guy walked away with. What other business can give you? नहीं ना, बेशक उसने 1 माह में किए हैं, 2 में किए हैं, ये किसी डॉक्टर की पे से कम नहीं है। 1 साल, बेशक उसने 1 साल भी लगाया हो, डिग्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत सीख लें। So this is So there was a guy that was showed, he made $750,000 his payout. तो जब आप पे आउट एपेक्स से लेते हैं तो उन्होंने भी अपने स्टूडेंट का एक कारकर्दगी दिखानी होती है ना कि यू कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ मनी. सो पे आउट्स आर स्टार्टिंग टू कम इन. सो अगेन यू कैन रिक्वेस्ट $500, $1,000. मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे जब हो जाओ एक उसका जायका लो, पैसे लो, उसकी कुछ खर्चो, बिकॉज मनी इज मनी इन नंबर्स until you spend it. That's the problem with money. Like until it sits there, it doesn't do anything. When you take and buy tangible things or vacation or spend it, then you enjoy it, right? So, क्योंकि मैंने ट्रेडर को यही सुना, यार हमेशा भेजे ही नहीं, ब्रोकर तो कभी ले ही नहीं, right? So this is a definite way to do it. Now to excite the dopamine effect of those who wanna look at a 300,000, सिर्फ आप रोज के $1,000 कमाएं बड़े अकाउंट में. रोज के 20,000 हो गए, ठीक है? एक नहीं इंशाल्लाह नहीं, डेफिनेटली फॉर श्योर. देखिए मैं एक बात ये करता हूँ, मेरा ना एक बड़ा रूल इस तरह का है, ट्रेड अच्छा डालें फिर दुआ करें कि इसमें बरकत पड़े. सिंपल. गंदे ट्रेड पे ना दुआ करें कि अल्लाह करे मार्केट. हमारे साथ हम शुरू में ना ये देखें अपने स्टूडेंट्स को एक स्टेटस्कोप भी देते थे, क्योंकि बकायदा शुरू जस्ट बिकॉज होता ही है, एक लॉन्ग पे बैठा है, एक शॉर्ट पे, एक दुआ कर रहा है कि नीचे आ जाए, एक दुआ कर रहा है. अब वो ऊपर भी कंफ्यूज है यार कि मैं क्या करूं, राइट? इस ऑफिस में नो जस्ट क्योंकि धड़कनें बढ़ रही हैं वो तस्वीर भी दे देते थे, राइट? सो आइडिया वाज ट्रेड अच्छा डालें और फिर करें कि यार जहां से भी आपकी हायर पावर है कि इसमें बरकत हो जाए, अच्छा ट्रेड हो. मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन कर ली है. Hopefully you'll go in the right direction. Don't put a stupid trade and expect it to pray, because ऊपर वाला भी stupid नहीं है, right? उनको पता है कि भाई trade stupid है, because एक आध दफा आप निकल आओगे उस bad situation में, लेकिन consistently नहीं डालें. So again 100,000 का भी तो आसान फार्मूला माइक्रो से दे दिया. अब बड़ा अकाउंट है, रोज का 1,000 है, 1,000 सिर्फ कह रहा हूँ, उसमें आप 5 भी कमा सकते हो. 20,000 रोज का तो साल महीने का कितना बना? 20 रुपये 20, $4 लाख, क्योंकि 20 दिन ट्रेडिंग है. मुझे सिर्फ ये बता दें कि 4 लाख किसी और बिजनेस से कमाना कितना मुश्किल है और आसान है, राइट? और आप लोग किसके लिए आए थे? हमें यार $100 कमाना सिखा दो प्लीज यार, 100 बता. तो मैं आपको 100 का भी रास्ता दूंगा. हमारे पास एक स्टूडेंट यहाँ आता था, अभी तो वो छोड़ गए हैं. उनकी टारगेट क्या था कि मैंने सिगरेट इस इंडस्ट्री से पीनी है. $20 के बाद वो कहते मेरी डिब्बी पूरी हो गई, बिकॉज यू नो सिगरेट्स आर एक्सपेंसिव, राइट? सो आई हैव पीपल हु कैन मेक $20 a day, or with this formula you can make 200,000 a month, right? So it's not a just follow, please just follow trend trade, follow stop loss, follow diversion, follow. So उसके लिए मेरी टीम है, मैं बैठा हूँ, बिलाल है, सैम है, अता है, निकी है. सुबह 9:30 से 2 बजे तक मेरा थिएटर शुरू हो जाता है. मैं आता हूँ, अपनी क्लास लगाता हूँ, उसमें आप मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछेंगे. बार बार अगर आप मुझसे सेम क्वेश्चन पूछेंगे मैं बार बार एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि किसी का फ़ायदा हो जाता है. सो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. अगेन क्योंकि जो मेरी किस्मत का ना वो मैं कमा लूँगा, वो मुझे और जो आपकी है वो मैं छीन नहीं सकता, राइट? सो I have no envy. If you make 750,000 and I see your number,
मुझे बड़ी खुशी होगी कि यार हमारे स्टूडेंट मसलन ये ताहिर साहब हैं, like I continuously post his status just by because he was the first guy. He's out of Colombia right now. He stays in Colombia, like Ontario, Canada. And yesterday he sent me after his payout request and I posted on my status कि उसके उनको वाइज में भी आ गए हैं पैसे, right? So it's not a scam. So everybody can do it. Only एक चीज पे काम करें. आप अगर ट्रेडिंग से पहले ना डिसिप्लिन की क्लास ले लें, राइट, कि तहम्मुल तो सो दैट्स इट, राइट, कि नहीं यार ग्रीड नहीं करना है जी. Oh, sorry, history of I don't know why we kind of got carried away. Yeah. So you will go into connection and disconnect everything. Disconnect everything. Yeah. So we're gonna wrap it up, guys, in about 5 minutes. So wise.com. Wise.com पे बस sign up कर लें. So you go under playback connection. Go into playback connection. Right here, pick an instrument. Let's say I want to pick ES. ठीक है? I pick a day of yesterday. Hit download. It will start to download the historical data in the past. नहीं, पुराने कोई एपेक्स लगा हुआ है, कुछ भी नहीं कनेक्टेड होना चाहिए. अगर देखें आप कनेक्शन में जाएंगे ना, अगर आपका एपेक्स ऑन है, अगर आप वो उसको बंद कर दें, सबको डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि इसने लाइव डेटा आपका प्ले करना है हिस्टोरिकली. सो गो अंडर सो व्हाट आई वाज सेइंग इज गो अंडर कनेक्शन, डिस्कनेक्ट एवरीथिंग एल्स एंड देन क्लिक ऑन प्लेबैक. आपने फिर बोली अपना डेटा उठाया, टाइम उठाया, this window will come. Now it's starting the market from yesterday at 12 o'clock. You can play. ये window आनी चाहिए. वापस आके फिर इसको डिस्कनेक्ट. अच्छा, इसको डिस्कनेक्ट करना है तो यहाँ पर फाइल डिस्कनेक्ट, ये डिस्कनेक्ट हो जाए, वापस अपने पर और कनेक्ट दूसरे कर लें. Now any other questions? जी. नहीं, आप खड़े ना हुआ करें, कोई पाकिस्तान थोड़ी है क्या? पाकिस्तान टीचर. हाँ जी, गाड़ी कैसे चलानी, किधर जानी है, कहाँ मुड़ना है, कैसे करना है, वो तो आपने बता दिया. ठीक है. स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है वो मेरे लिए पूरा. सर सुबह डोम जो है हम कैसे पकड़ें? देखिए सबसे आसान है, हाँ, मंडे को पहले मेरे साथ कनेक्ट करें, ठीक है, या बिलाल भाई के साथ, और ये जो 3 चार्ट्स खोले हैं ना, पहले आप ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करें. हाँ, मैं सिर्फ इस डोम की बात कर रहा हूं. यहाँ पर इस डोम पे आपने जो इसकी टेक्निक. हाँ. अच्छा, इसका आसान तरीका नहीं, यूट्यूब पे जाएं, सिर्फ निंजा हाउ टू यूज निंजा 8 लिखते हैं. वो निंजा वालों की पूरी सीरीज है, वेरी इजी, क्योंकि वो टेक्निकल चीजें हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगना है, एटीएम कैसे, नो प्रॉब्लम. मैं अगर हरून भाई सुन रहे हैं तो प्लीज एटीएम मुझे भेज दें. हर बंदा ढूंढ रहा है, आपकी एटीएम चल रही है. उन्होंने भेज तो दी कि देखें कि जी चल रहा है. मुझे वीडियो मैंने आई भी थी, वो प्ले नहीं हुई. मैंने ख्याल आपको भेजी थी मैंने, वो ओपन नहीं हुई शायद. चलिए मैं करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम. सॉरी. अच्छा, डू लॉग इन इज व्हाट आई रोट फॉर $50. जनरली होता यह है कि आप एपेक्स में कनेक्ट करें ना तो रिदमिक डिस्कनेक्ट हो जाता है. अगर आप रिदमिक डिस्कनेक्ट करें तो एपेक्स डिस्कनेक्ट हो जाता है. वो $30 लेते हैं 1 माह का, वो आपको 2 अलाउ कर देते हैं. तो आप साथ आर ट्रेडर भी खोल लें और साथ एपेक्स भी खोल लें, ये निंजा भी खोल लें. सो दैट्स कॉल्ड द डुअल लॉग इन. जी. Yes. Okay, so I can show it. Like, let's say there's a price. I'm going to quickly do it here. Let's say my apex. Right now, order won't get executed because you have to. Market is not open, right? So if you want to do a buy order, connect, and also your position window is very important because that tells you what is happening in your current trade right now. So would it be possible I can do this on Monday on live market with you? That'll be easier. Like I'll do it on a live market, no problems. Any live questions I will answer there. Okay. To access you for questions in the next session.
WhatsApp 647-228-0694. You will send me a message. I'm 25 seconds ahead of you, but your charts are live. You can send me a message of technical, and I will, because that WhatsApp is open by me, Bilal, Ata, and Sam, and Nikita. They can quickly see who is it addressed for. So you can say, please, Rafay, can you explain me how to do a trend trade? Or can you explain me how to do a divergent trade? No problem. But what will happen is from 9:30 to 9:45, Daniel is speaking from Monday to Thursday. So you have to kind of understand what he's saying. So for example, this is an example of, all right guys, good morning. Today the pressure is up, base is down. Today the base is up, pressure is down. Today we're going to look at, if I were you, you would do a short, stay in long. सिर्फ ये चाहिए होता है. ये किक हो गई, मेरे ब्रेन में रजिस्टर हो गया कि भाईजान ऊपर से ऑर्डर आया है कि शॉर्ट में रहें. Because that experience is 51 years of combined. You know where he worked? Chicago Mercantile Exchange. He actually sat inside the pit. You know, so, you know, you guys are kind of lucky that we have access to such stream and at such a low cost. To be honest, before, this accessibility was there for premium customers. But then I said, let's move it to a subscription model, and it's a little bit, Gigi. जब ये $1500 का करना है क्लियर, हाँ जी. उस दरमियान हम लोग न्यूज़ पे जा सकते हैं. हाँ, वैल्यूएशन में न्यूज़ में करें. आपने देखा कि इस स्विंग है, डाल दें. ये ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ही खराब होगा ना. आपको नहीं पता कि पीपीआई डेटा या सीसीआई डेटा, सीपीआई डेटा क्या था. आपने एक लॉन्ग कर दिया, एक शॉर्ट कर दिया. नहीं, लाइव नहीं, वैल्यूएशन में $15 वाले अकाउंट पे. नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे हमने लिया अकाउंट, हाँ, 25,000 से 600,500 करना हमने. हाँ, तो उसमें अगर न्यूज़ पे जा सकते हैं पहले वाली स्टेज पे, दूसरे में नहीं. आफ्टर सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि वो डिटेक्ट कभी नहीं, क्योंकि वो डिटेक्ट करते हैं. वो कहते हैं हम गैम्बलर नहीं ढूंढ रहे, हम ट्रेडर ढूंढ रहे हैं. क्योंकि ये गैम्बल है ना. गैम्बल है कि 829 पे आपने पता ही नहीं है कि क्या होना है, तो गैम्बल हो गया ना. तो हेंस द वर्ड कैसीनो, हेंस द वर्ड बेरिंग. इसी से आपको रोकना है, आपको ट्रेडर बनाना है, गैम्बलर नहीं बनाना. पहले जिस तरह मर्जी करें. हाँ जी, ये हेजिंग का वर्ड है ना. 8:29 पे आपको पता है 8:30 पे न्यूज आनी है, ठीक है, FOMC की न्यूज आनी है. आपने एक अकाउंट उठाया और उसको लॉन्ग कर दिया, एक अकाउंट को शॉर्ट कर दिया. 8:30 पे 2 रिजल्ट आएंगे ना, एक फेल हो गया, एक पास हो गया. एक पे प्लस 600 बन गए, एक पे माइनस 600 हो गए. तो आपने जिसका 600 ले लिया था उसको क्लोज कर दिया, तो हेज कर दिया ना आपने एक दूसरे के अगेंस्ट. हाँ, नहीं, फिर आप अगले न्यूज पे उसी को हेज और करेंगे ना. अभी कई दफा झटके में ही 1500 बन जाते हैं. अगर आप नैस्डैक करें ना तो 100 पॉइंट गई है तो $2000 निकल गया है, तो आपका एक ही दिन में अकाउंट पास हो गया है. और क्या चाहिए. सर ये येलो डॉट्स जो है, हाँ जी, ये करते ही नीचे, ये जी हाँ, अर्ली वार्निंग्स है. नहीं, ये है कॉशन साइन कि यहाँ से ट्रेंड कहीं पर भी जा सकता है. नहीं, ये सारा यूट्यूब पे गया है. ये पूरा 5 hours of today went on our YouTube channel. You can go and review anything, any questions, no problem. But again, I'm not here one time only. I'm here continue 6 days a week. So जैसे वो 30-20 पे स्विंग जा रही है. हाँ जी. ट्रेंड चेंज हुआ, वो पहले ब्लू टिक्स है और येलो है. सर इसका नहीं, that's called strength in momentum. ये वीडियो में आपको बता देंगे स्ट्रेंथ के येलो के है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. $5 कमा लें, $1 कमाने जरूरी हैं, कमाने जरूरी हैं. लॉस भी कर सकते हैं, 10 से 5 लॉस ही कर. हाँ, चलाने. आपने पहली दफा 2000 कमा लिए, अगले दिन 5 लूज किए, फिर 5 लूज किए, फिर 5 लूज किए. उनको ट्रेडिंग डेज से मतलब है. करेक्ट. Thank you guys for tuning in. Anybody? I'm going to wrap this up now. So, हाँ, हाँ, इस साइड, राइट साइड
हाँ वो नहीं आ रहा उसका आप नहीं आ रहा। देखें न्यू, ये देखें न्यू 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 सुपर डॉम पर नया सुपर डॉम आपका ऐसा आ रहा होगा, नहीं आपका ऐसा आ रहा होगा ना, नहीं यहाँ पर बिड और मार्केट नहीं आ रहे ना, एक साइड आ रहा है, एक साइड नहीं कलर का फर्क है, सिर्फ वो है लेकिन नजर नहीं आ रहे। हम नो प्रॉब्लम, मैं फिक्स करवा देता हूँ। If you guys want to exchange numbers or anything, I don't have any problems. You can take her number and then so the. क्या हाल चाल है? राफे कोई मसला नहीं, कोई सारे हर रोज इधर ही है। हाँ नो प्रॉब्लम। हाँ जी मैंने मिस किया बहुत ज़्यादा। सब कुछ रिकॉर्डेड चला गया, एवरीथिंग इज। हाँ यूट्यूब पे आपको लिंक भेज देते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसी बात है तो मैं मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीम करता हूँ 9:30 to 1, उसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे फिर मैं इधर हूँ, सब देंगे, सॉफ्टवेयर सब कुछ आपको देंगे। Thank you so much नो प्रॉब्लम for the presentation. एनी टाइम थैंक यू। तो हाँ यार पहले तो 14 दिन फ्री है, पहले वो देखें, पहले फ्री है, बिल्कुल फ्री है, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे छोटे क्वेश्चन आपको वो बिलाल आंसर कर, कोई बात नहीं, थैंक यू।